are going to start today's seminar. I invite Pulak Sahaji, and I ask Nitish Morji to escort him to the dais. I invite Vivek Chalanji, and I ask Mr. Hariram Agarwalji to escort him to the dais. I invite Shubham Ketanji on the dais, please. Now we are starting the ICI motto song, and I request everyone to stand up and have the motto song. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Now I request Nitish Morji to have his welcome address. Thank you, friends. Sorry for the delay today. Friends, this is the Manthan 4 series. This is the 4th series we have come out with the Manthans. We started with the Manthans because the changes, there are huge changes in we professionals are facing that every weeks, even every day, they are coming out with some kind of latest notifications, circulars. So we professionals have to update it with all the changes, because what our asset is knowledge, and if we are not updated, then the past knowledge is nothing but a scrap. So we have to update it ourselves. So we are coming out with the Manthans, all the programs, the videos of all the programs that has been uploaded in the YouTube channel of Huge Exchange. Yesterday we had one program with Giri Saujaji. Before that, our past 5, 6, 7, 8 programs all have been uploaded. This program also will be uploaded in our YouTube channel, friends. If you want to contribute the articles, we are coming out with our monthly journals. You can contribute. You can contact any of our executive committee members. If you want to become the life member of the association, also that are also welcome. In case of any suggestion, you can always contact any of us with this. Thank you everyone. Good afternoon, friends. I, on behalf of Central Kolkata CSCP Study Circle EIRC as well as Huge Exchange CSCP Study Circle EIRC, welcome you all to today afternoon in this 5CP program on GST. Best of the speakers of the town has been arranged for you for upscaling we all in the matter of GST. As rightly said by Nitishji, we are getting frequently so many changes, and even it is very difficult, if not impossible, difficult for all of us to recapitulate or link the other things and get the expert advice on each and every topic thereof. And in the Manthan, we are trying our best to bring this sort of subject-wise
and best of the speakers, so that, because we know that half an hour or 1 hour is not, or 2-hour CP programs are not enough for any particular subject, and single speaker program is not that we cannot justify with the subject and topics itself. So in the process, we are in the series of these 5 CP programs, and hope you all are getting benefit from that. And as rightly said, we are always ready to upgrade or your suggestions. Thank you, friends. Thank you. Welcome all. We have started a new initiative. We have the life members of ACAE, we have the life members of Views Exchange, and we have under the leadership of President Nitish Morji, we have started the new initiative by providing mementos to each and every life member of Views Exchange, and we have also started this Google form. They have filled up the Google form, and after filling up the Google form, we have contacted each and every person who have filled up the form and whether they are available today or not. And after taking their consent, we have asked them to come today. So we are starting this process of providing memento to each and every life member. The names will be provided, and the members are requested to come forward, and the memento will be provided to them. Yeah, Mr. B.L. Patni ji pehle. Yeah, please come. Next name? Aye, sir. Mr. Akshay Kumar Agarwal. Mr. Akshay Kumar Agarwal, please. Akshay Kumar ji. Akshay Agrawal, Viveki and Pulaki. He is a newly enrolled member of the Views Exchange. Mr. Dilip Kumar Maruti ji. Dilip Kumar Maruti sir. Very old member, supporting whenever we require any support request. Support उनका उसे सागल. So kindly hand over the sir. C.A. Timir Kumar sir. Any other person who has come here, if we forget to take her name, please. कोई member views के जो छूट गए ऐसा कोई है अभी? सिंघानिया जी आइए. विनोद सिंघानिया जी. Aye, sir. Aye. Very old member of the life member of the exchange. And supporting whenever we require any support. Thank you, sir. Any other thing left? हरिराम जी का. हाँ, हरिराम जी. आइए हरिराम जी का दीजिए नाम. हरिराम जी स्टेज पे ही बुलाना थोड़ी है इनको. He is also a Views member and CKCA chairman. ये तो रोटेशन है, चलता रहेगा. कभी कोई प्रेसिडेंट, कभी कोई चेयरमैन. और हो गया. I think we are over with this chapter. Now we are proceeding with the GST matter. Okay. Now I request Manish Barelia ji. Manish ji. Yeah, Manish ji. Yeah, please come and introduce the first chairman of the first session, Mr. Pulak Saha. Thank you. Good afternoon, everybody. Mr. Pulak, a chartered accountant and a cost accountant by qualification, is a senior partner in PricewaterhouseCoopers, having more than 26 years' experience in various indirect taxes, including GST and VAT. His specialization includes litigation, structuring of inbound and outbound transactions, and structuring of large EPC contracts.
He has handled more than 500 indirect taxes cases in various appellate authorities, including CSTAT for large national and multinational clients and also for very large public sector undertakings. He has a very rich experience in handling indirect tax litigation and advisory services across various sectors such as oil and gas, ports, shipping and logistics, etc. Thank you. Now I invite Shri Babulal Patni ji for providing flower bouquet to Pulak Saha ji. Now I am handing over the session to Pulak Saha ji as a chair, since he is a chairman of the first session. Good afternoon to all my professional colleagues. To all my professional colleagues, my fellow members of our institute. At the outset, first I would like to congratulate for the hard work being put up by the organizer for bringing out this kind of programs for enhancement of the knowledge. Today, you know that when we qualified 32 years ago, that time we have seen a chartered accountant used to practice mostly having one income tax act, one income tax rule and one ready reckoner. There was no other book available in any chartered accountant's office. Those days there was no computer, no Google, nothing, right? So we have seen all those days how the profession has evolved. When we wanted to become a chartered accountant or decided to become a chartered accountant or rather became a chartered accountant, I never thought that I'll be coming to a tax law, but destiny brought me to the tax legal profession for the last 32 years. But I always wanted to be a corporate executive. And those days, those used to study, I believe that those who are of my age or elder than me still agree with me. Those days, people used to come to become a chartered accountant just to carry out the audit. That was the pride of a chartered accountant. Now, if you ask out of 100 chartered accountants that are you still interested to carry out audit, I'm sure 90% will say that no, I don't want to carry out the audit because it is not remunerative and at the same time it's very risky too. Because of the various incidents which we have observed in the various newspapers, print media, digital media, etc. And auditors are the soft target. So people over a period of time through this evolution process, we have shifted. I remember, that I originally from direct tax. I started my journey in a corporate taxation department in one of the largest corporate houses in those days. So, but I never thought that I'll be coming to indirect tax. But sometime within my insight, I was told that I should start something new. So I started, that time it was 2003, I'm telling my story. It was 2003 when the VAT was supposed to come. That time I thought that in those days, hardly any chartered accountant you would have found in the VAT department, those days sales tax department. It was the domain of the chartered accountant and in the lawyers. Like in the income tax was the domain of the chartered accountant earlier before the tax audit came. Then gradually chartered accountant shifted into the income tax. So chartered accountants mean audit and income tax, no third subject. Very few were specialized in bank financing, etc., etc. That was the story. And very small number were interested into the IT sector. So this was the story of those days, and gradually when in 2003 came, then I thought that this is the right time that I should start journey into my indirect tax regime. In 2003, that time VAT did not come and it finally came in 1st April 2005. So before that I started my central excise and service tax practice, and gradually I was trying to understand how it works out
And this, one of the organizers gave me the first platform in 2006 for giving a lecture on the VAT audit, and Hariram was the instrumental for this. He requested me to. Before that, I never spoken to any public forum. So in 2006, September, first time I gave my lecture on the VAT audit. And thereafter, I never looked back. I remember in 2006, and today is 2023, almost 17 years. So this is a journey, you know that, and this is why I am telling this story. You know that the change is the constant, right? Now change is the constant. It is not that what we read today or today morning will be valid and correct today evening or in the morning when we wake up. So we have to be very, very watchful. We have to be adaptive, an aptitude to learn. That is very, very learn, unlearn, it's a continuous process. You have seen that GST came on 1st of July 2017. I stopped reading the GST law now, trust me. If you ask me a specific section, I can't say. If you ask me a specific rule, I can't say. I don't read it. I only read it when the matter comes in front of me. I read the current law because it is changing every day. I remember service tax law, every section rule notification. I remember central excise, every section rule notification. But I don't try to remember GST. Because the more I try to remember, I am getting confused. So my team is working, they help me, provide me the support. Whenever it comes to, I will read, I can read and I can understand law. So when the current law, when the matter comes, today if I read, I really do not know whether that my reading would be relevant tomorrow after 3 months when the matter comes in. How far it is relevant. So I don't want to waste my time because I have other work to do. So this is the way I work. And you know that this is what is the uniqueness. One thing one should know that you must have a natural flair of a tax law. If you have a natural flair and understanding of a law and ability to interpret the law in a very logical manner, not in a very perversive manner, right? If that your interpretation shall not be a perverse interpretation, it must be a logical interpretation. I can assure you, so far the position I have taken in my last 17, 18 years career, I have never lost any tribunal. I have never lost any, whatever the position I have taken. Yes, we had to fight. We had to fight, some cases we had to go to the High Court, but finally the position what we have taken, it may take 10 years, it may take 5 years, it may take 8 years, I don't know. Because now one thing what you need to do, that first you understand the law and open up before your client that don't expect that I will be giving you benefit at the lower level. I have no hesitation since my practice career to say in front of my largest client, that I won't be able to give you any benefit at the lower level, be prepared for getting an adverse order. If I get a good order, I will give my best. That much I can assure you from my side, there would not be a single dearth of my effort. But I cannot, because that is why for the last 10 years, I don't go in front of any assessing officer, any commissioner, anybody except tribunal. Because arguing before an adjudicating authority and appellate authority and arguing before a lamppost is same. So this is my experience last 10 years. I only appear before the tribunal, and I do give the advice to the various large multinational and organizations. The problem is that sometimes what happens, we chartered accountants, over-enthusiastic, without understanding the mindset of the revenue, we commit to the client and the client gets agitated. आपने बताया था, लेकिन आप तो मेरा 2 crore का demand confirm हो गया. So these are the things one need to understand, the tricks of the practice and success and your trust. The trust building. The trust building is very important, so that client will never come and say that
आपने बोला था बट मेरा तो ऑर्डर कंफर्म हो गया. So be ready with this situation and be fair and remain honest. If you, even after giving this kind of negative vibes to your client, if some clients say that उन्होंने तो बोला है भाई आप उनके पास चला जाइए मेरे से नहीं होगा. So many clients I have refused. मेरे से जो नहीं होगा, I cannot tell you something rosy picture which I can't give you. I will give my level best. If you luck, okay. If I get a good officer, if he is reasonable, yes, we have got reasonable officer. I must admit, there are reasonable officers in state government, in central government. There are reasonable, there are mostly unreasonable. Mostly unreasonable. But there are reasonable officers, I must say. I don't want to share a couple of my story, success story. The thing is that what we as a professional, this Manthan series, what they are trying to do, and today in this seminar, we have the wonderful speakers like Vivek, Shubham, Angshuma, etc. They would be giving you a lot of insight, like Shubham, Vivek would be giving you to the classification issue. Once Vivek finishes, I will add some of the things which is my experience into handling classification issues, how to handle the classification issues. Because most of the cases people don't know how to handle the classification issues. I will share a couple of my, after the Vivek's session, if I get time, I'll share a couple of my live experience before the tribunal, that how you handle the classification issue. Similarly, recently I'm handling one case. I have already given my opinion. One of the cases, it's a classification issue came before me. I said that it's not a supply at all. If it is not a supply, why should I go for a classification? But they came for us, and the DGGI notice was for a classification issue. I said that it is not a supply at all. How come the classification? Why should I go for a classification? So we have given the opinion, and we see that how it goes. We'll find it out once we have already filed the reply. It's an all India issue, DGGI investigating on the all India, all the similar sector, and they have started issuing notices to this year. So these are the thing is that in-depth understanding of the business, and indirect tax is a business oriented. If you do not understand the business, how the firm organization does the business, operations, etc., it's a tax on operation. Every operation there is a tax. If you do not understand, like day before yesterday, when I was meeting one of the largest startup company in Dhaka, in Bangladesh, and they would be, if they click, they would be the next Alibaba of Eastern India, Eastern Asia. They have a plan for New York Stock Exchange and Singapore Stock Exchange listing, etc. It's a huge PE fund investment. So they were trying to change one business model for business effectivity. You know that when the business people give a model, that business people, they only see the bottom line. They don't say the compliance, to clerical job, the chartered accountants will look after. That we are the chartered accountants and the clerks in front of the business guys, right? They think that they are the main thing. So when they were showing me the model, I just check up to the CFO, what is your present model? He said that this is our present model. I said, no, okay, you draw it in the board. He drawn in the board. I said that there is a risk. Have you ever assessed this risk? You are sitting on a bomb. Even the new model, what you are showing, that is not effective. Then he stopped the discussion. He said that, no, then I have to involve the entire team of my operation. So meeting got cancelled and postponed, and we are again meeting on Monday. So this is what is, you have to understand the business. You know law. You have read multiple time law. But if you do not understand the business, you won't be able to feed the law into the business. Once you would be able to understand law business, law you are aware of, fit it into it, come to a conclusion, give the conclusion. So this is what is my advice, and way forward in the process, anything comes,
I will definitely pitch in, and any question after the session, I'm happy to answer. Thank you very much. Thank you for patient hearing. Now I invite Manish ji. Manish ji is not here, I think. So I invite Hriday Maitruka ji to come on the stage and introduce Shubham Khaitan ji. Thank you. Shubham Khaitan ji is BCom Honors from St. Xavier's College, FCA, ACS, CFA, USA, DISA, ICI and LLB. He is currently a partner of the Tax and Regulatory Division of S. Khaitan and Associates, a reputed middle-sized CA firm in Kolkata since 30 years. He is co-chairman of the Indirect Taxes Committee and Executive Committee member of Association of Corporate Advisors and Executives for last 3 years. Member of the GST and Indirect Taxes Committee of the Institute of Chartered Accountants of India for both 1920 and 1819. Member of the State Council Economic Affairs and Taxation Committee and various other committees of Confederation of Indian Industry for the last 4 years. He has authored the book on A Practical Guide to GST on Textile Industry published by Bloomsbury Publications. He has also drafted the handbook on blocked credit published by Indirect Taxes Committee of the ICAI in February 2023. Thank you. I invite Rakesh ji to come on the stage and present flower bouquet to Shubham Khaitan ji. Now I hand over the session to Pulak Shah ji, please. Good afternoon to everyone. Thank you so much for having me here, and thank you so much to both Views Exchange and Central Kolkata, who has taken this wonderful initiative of organizing this Manthan. I think after quite a while I'm seeing such a large gathering in Calcutta when it comes to GST. So it has been a while since COVID that I am seeing people coming in, so glad to see that, and I'm sure the learning experience would be equally good here as well. So if you see the recent trend in GST, there have been quite a number of changes. We keep on hearing about some instructions which has come in. So recently we were about to, yesterday we saw automated scrutiny module which was informed through a mechanism of instruction which has come in now. That now we might be hearing ASMT 10 being more rampant. For financial year 1920, it would be, I think, starting for the first time. For 1718 and 1819, we've already seen a number of ASMT 10 notices for number of differences, for every small difference that we could think of, which could be possible, which reconciliation had to be done. So we've seen a number of notices, and it has been tougher than what we had thought in terms of explaining to the department. And number of cases, we've already seen show cause notices coming in. So this automated scrutiny module is expected to kick in sooner rather than later. So we are expecting the notices to come in online. The reply would be online. The ASMT 12, which is supposed to be received, that would also be online. So ASMT 12 is supposed to be a form wherein if we are able to satisfy the officer, his explanation is, our explanation is satisfactory in accordance to what his understanding is, then only he issues this. A lot of cases what we do is we go to the officer, we explain to him, and thereafter he says that okay fine, I'll see this, no problem. Thereafter we expect that okay the matter is now already complete, but suddenly we see a show cause notice which has come in, or we see that nothing has happened but the officer has changed, and after a while we are seeing a show cause notice coming in. So if you are able to satisfy the officer, please ensure that you are taking the ASMT 12 as well, which is for dropping of the proceedings, which is very important, which a lot of people ignore at the moment. And also, now it has been said very clearly that 30 days is the scheduled time for reply to the scrutiny notice. So 30 days is the scheduled time. After that, the government would be, or rather the officer would be waiting for 15 more days. Let's say there is no reply received, which is up to 45 days. A scrutiny, show cause notice is going to be on the way. So it is not like we might be receiving 3-4 reminders for replying to the ASMT 10 notices. So we might be having a show cause notice coming in automatically, though they may lack proper basis, though they may lack proper understanding of
what is the actual position, but still those can come in any time. Also, it has been provided that even if you are able to provide a response to them, and let's say those response goes within 30 days, thereafter if that officer is not satisfied, within 30 days he can straight away issue you a notice. It does not mean that he is going to call you, he is going to explain you as to why according to him this particular reply that he has received is not in accordance with law. Those things are not going to come in. So please be very careful that this is an automatic process. Please don't think that it is going to be a two-way traffic where the officer is going to call you and thereafter you need to explain. So the reply has to be very clear, crisp as to how we can explain to the officer needs to be very clear with us, right? Next, I think one of the most important areas which has impacted everyone in terms of GST law has been the special verification drive, which we are hearing a lot. That's from 16th of May. This is a special verification drive. The department can come in any time, verify our books of accounts. They can maybe get into our documents, invoices, and thereafter find out discrepancies. So let's be very clear about it. This verification drive, I'm sure Khalid ji would also be coming in here. So at that time, he would also be explaining about this in a lot of detail, because this is a very big misconception among a lot of people. But this is basically only for eradicating fake registrants. So a lot of people have taken fake registrations in GST by giving the PAN number, Aadhaar card of economically weaker sections. So those people have now been registered under GST law in someone else's name, and they are creating fake invoicing. So idea is basically to eliminate those kind of people. So a lot of officers, even if they are not aware of the process, at least we need to be clear as to what are our rights and obligations, right? So at least we need to be sure as to what is it the officer can do and what is it that he cannot do. And what is it that we should be doing to make sure that we are able to satisfy him. So first of all, there is no demand that anyone can pressure you to pay on spot. So even if there is any demand which is clearly available from your books or something, there is no one who can pressure or pressurize you rather to pay the demand on spot, right? So anyone who does that, if you are required to do so, worst case scenario, I mean, you can always, first of all, say that this is not required. Second of all, you can pay under protest if that is required, if you have no option. But also, if there are any statements which you are required to give, first of all, without a summons, you should not be giving a statement. And if you are giving a statement, immediately retract it. Let's say you have to give a statement, and in that case, any statement which you are giving which you think you should not have given, please do retract that statement immediately. The scope of this is only for verification of the premises. So idea, this provision is already there in law. Right from the beginning, this is already there. This is only a drive for the use of those provisions. So it is not like the officer that never came for physical verification of premises. They used to come earlier as well. Now that is more frequent, that's all. And it does not mean every person is going to receive it. It's just that people who are in the risk management list of the department, those people are supposed to maybe receive a visit from the department. So please be careful that no documents, nothing can be seized from you without a proper authorization in INS 01. So there cannot be an inspection, search and seizure carried out. This is only for physical verification that the place is actually existing, the documents are there with you. So at least have the relevant documents for registrations, like whatever your rent agreement, your ownership document, all of those ready with you. And it's a good time to maybe have a cleanup sort of a thing in terms of your registration, because if there is any registration which is containing additional place of business or principal place of business which is non-existing or which has to be removed, remove that. If there is any place of business which is required to be added, please do add those things right now itself, because if those are verified and those are found to be incorrect, there may be some sort of penal consequences on those. And a couple of things which we had said in the beginning of GST, but maybe a lot of people have not done, which is having your GSTIN on the nameplate right outside, and also your certificate of registration available with you in the principal or additional place of business. So that is something which is very important. And also the documents and records are required to be maintained there. So idea is that place is existing. We don't have to give the reconciliations or workings as to why 1 and 3B has a difference. All those things are not required. So we need to be very clear that the idea is to basically remove those fake registrants from the system
and not to get into a scrutiny or a search and seizure mode here, right? So I think this is what I wanted to share right now. So I don't want to encroach upon the speakers who are, sir, can we take up questions? Or I think, ma'am, we can take up the questions after some time because we have the speakers available right now. So I'm just right now going to sum up here. So if there are any questions at the end, we'll definitely take it. Thank you so much. And thank you so much for giving me a very patient hearing. Thank you. Now I invite Hriday Matruka ji to come on the stage and introduce Mr. Vivek Jalan. Mr. Vivek Jalan is a rank holder chartered accountant and a qualified LLM and LLB. He is the chairman of the Fiscal Affairs and Taxation Committee of the Bengal Chamber of Commerce and Industry. He is the convener, Indirect Tax Core Committee of the Confederation of Indian Industries, Economic Affairs and Taxation Committee, and a member of the CII National Taxation Committee. He is a regular columnist and a guest speaker in the ET, Times of India, Dalal Street, Money Control, Live Mint, and many other renowned dailies and business magazines. He has worked as a finance manager in ITC and chief compliance officer with Interest of Technologies Limited. He has more than 18 years of experience in field of finance, taxation, and logistics. He is a regular speaker at various professional forums and has given more than 300 lectures on various topics under GST, customs, FTP, income tax, etc. We welcome Mr. Jalan. Now I ask Ms. Surabhi Potra to come on stage and have a flower bouquet to Vivek Jalan ji. Now I invite Vivek Jalan ji for his deliberation. Good afternoon, CA Nitesh Moore ji, CA Hari Ram ji, CA Binay Singhania ji, Mr. Pulak Shah, Shubham, Anshuma, all the learned members of our coveted profession, ladies and gentlemen. Thank you very much, first of all, to Views Exchange and SSK for giving me this opportunity to present my views on the classification related issues. And I would go directly to the topic because introductory we have got on what is going on in GST. But there was already a question. So GST has many questions which can be asked to the speaker. So let us start with reverse charge. So now speaker will ask question. Okay, before you can ask questions. So let us start classification by, you see, understanding of a simple business. All of these paintings, this roof, this hall, tiles, everything, this service which we are rendering, right, honorary service, everything requires classification into either goods or service or neither goods nor service. ये भी proof करना पड़ता है कि ये this is neither goods nor service, right? So this was the intent of GST law, which we are realizing now, that the entire GDP of the country, GDP is what? C plus G plus X plus I minus M, right? तो उतना नहीं जाते, but let us concentrate on C first, right? So the intent was कि हमारे देश में जितना consumption हो रहा है, goods or services, everything should be brought into the tax net. Now thereafter we will exempt something, we will tax it at nil rate, etc. So let us start with an example. As I said,
say for example, and this was a very widely deliberated case across, and this will give you an understanding on to how to handle classification cases. Maybe always the High Court or the tribunal, of course not the commissioner appeal stage, but tribunal and High Court may not always be the right way to deal with classification cases. In some cases, of course, it is. So we all know now it is the era of solar modules has already started, right? So what happens in a solar module, right? When you give a contract as a company or as a taxpayer to a contractor, what do you tell him? You tell him, भाई ये बंगाल चेंबर का बिल्डिंग है, आपनी ऊपर एकटा solar module लागे दिन. What is your intention? To have solar power, right? तो आपनी बोलें एकटा solar module ऊपरे लागे दिन, right? And what is the components of the solar module? There is a module, right? Machine. Then there is a battery. Then there are cables, and there is cement and sand, right? Which the works contractor will affix the module, etc. तो जी क्या है? चार चीज, बैटरी, then module, the machine, the cables, switches, and works contract, civil work, right? So anybody, what can be the classification of this entire bundled? सबसे पहले तो goods है कि service है? हाँ जी, प्लीज आप अपना हाथ उठाइए. हाँ जी, या यू आर सेइंग इट्स अ सर्विस. व्हाई सर? व्हाई सर्विस? Composite work, right? To composite, what is the service now? It is a works contract. Good. Anybody else? Anybody differs with sir? सब कहते हैं सर्विस है, बट हम नहीं मानते सर्विस है. हाँ जी, यस. हैंड माइक एक टू दे देनो का नहीं. हाँ, it is sort of a works contract associated with supply of equipments and all that. okay, works contract. Okay, anybody else? हाँ जी, yes, here, yeah, third row, yes. सर इधर बात हुआ कि पहले सोलर पैनल को लगाना है हमें. हाँ जी. तो मेन चीज़ हो गया सोलर पैनल इधर. तो वो कंपोनेंट तो बेसिक कंपोनेंट है, उसको फिर इंस्टॉल करने के लिए वो अपना सर्विस प्रोवाइड किया. Yes, so our ma'am says that the solar panel is the main requirement, right? So now we have three answers, okay, from three people. Now this is classification, friends. First of all, the first two answers which we got, that was the view of the department. Why view of the department? Battery 28%, solar panel 5% that time, now it is 12. Cables 18%, service 18%, works contract. तो जी works contract है ये. But now, so this is the business, and as Mr. Shaha has said, you have to understand the business. Ma'am says, no, I will get into the business. She has gone naturally to the managing director and she said, sir, you tell me your business. वो कहता है जी मैं तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे पास बेंगल चेम्बर आया, बेंगल चेम्बर আমাকে বলেছে একটা উপরে লাগিয়ে দিন মডিউল, আমি লাগিয়ে দিয়েছি আর আমি কি this is my business. Ma'am said, okay, what did Bengal Chamber tell you? He said, they told me to install a module. So ma'am has said, that is your principal supply. It is a composite supply under section 8 of the CGST Act, read with
Now, this is what you also need to understand while solving a classification dispute. Friends, classification, which is the heart of not only GST, but even income tax cases, many a times, that originates from customs tariff. So, you must go to customs tariff sometimes, and most important, read rule 1 to 6 of the customs tariff, find out there is a rule 2b in customs tariff interpretation, which says that whenever there is a mixture or a combination, you have to see what is the predominant element. That was taken under section 8 of the CGST Act, which says whenever there is a composite supply, you have to look what is the principal supply. But department kept on litigating. We said, now works contract. Works contract under section 2 subsection 119 of the CGST Act. It is again, we have all done somewhat VAT, service tax, central excise, to some extent customs. So, works contract, service tax, it is a supply of service, but there is a differentiation in GST. Works contract is only related to a civil work or other works of a immovable property. Now, question is whether it is movable or immovable. Module is movable or immovable. Now, you go to Supreme Court judgment, Sirpur Paper Mills, where it says two important words on movable, immovable, where a product can be dismantled without being destroyed. Two words, dismantled without being destroyed, it is movable, otherwise it is immovable. Again, madam goes to managing director, sir, module, have you dismantled? I said, यहाँ जी किया था एक बार, उठा के उड़ान लगा दिया, तो dismantleable without being destroyed, right? Therefore, it is a movable property. Department का केस खत्म वहीं पे. The very root of the classification case gets over. Of course, as Mr. Shah has said, maybe at the first stage level. In fact, I remember in our Bengal chamber, we had had CBIC member once, and we had raised this question, or I think revenue secretary we had once, we had raised this question, sir, why do you have commissioner appeal stage in the service tax regime? Let the first stage be tribunal itself, because first stage tribunal, that is where you get the relief. But GST, what to do? 5 years and we don't have tribunal. Abhi tribunal act mein aaya, finance act, that also you saw it was a controversy, right? It came into the finance act after the finance bill. Now the question is, wo jo tribunal ka building banega, that expenditure will be borne by center or state, right? So as of now, tribunal rules are made, we are all waiting, right? कि when tribunal will come, but the dispute is something else, कि खर्चा कौन उठाएगा, center की state, right? So that is how GST law goes. But coming back to our classification dispute, maybe at the first stage you will not be able to convince that it is a movable property. But next, outside court cases, how classification disputes can be taken up. You go and convince the authorities, of course not the adjudicating officer, possibly take it up here with your commissioners, take it up with the central tax chief commissioner, nothing will happen, because you have to take it to the north block most of the times, right? And there possibly, try to get a policy amendment before approaching the court. Possibly there would be reason in the mess which can be seen by the north block along with the states or the GST council. And this is what has happened in one of the cases which I am presenting in front of you right now. You see how everything comes from business, friends. Business
is regulated by policy. So sometimes it is a better, you see, option to go to the policy makers. If you find there is a problem in the intent, right? What was the policy makers issue? What was the intention behind the rate policy, and what sometimes field officers comprehend, possibly as per law. This in front of you is a clear example. Again, I will give you 3, you see, notifications, just brief, and then I will ask you a question. The first notification, this is the customs tariff, okay? It was a customs case, very recent customs case, April 2023 customs case. Module. So sir, by notification dated 31st of December 2018, they have again made a policy amendment, I think the only time in GST, wherein in case of a works contract for solar power generating system, 30% would be considered to be as service and 70% would be considered to be as module, right? So you have to vivisect the contract, artificial vivisection of the contract. तो अभी आ जाते हैं जी, smart watches. So what is a smart watch? All of us wear smart watches nowadays. So smart watch has a dial, smart watch has a battery, smart watch has flaps, up ऊपर का dial, नीचे का dial. Now Government of India, through a policy decision in 2022, we all know, Make in India, right? And why Apple is bringing out its factory in India, maybe not in West Bengal, right? So the policy decision was that let us make in India, and for this make in India, this notification has come, 11/2022 Central Tax Customs Tariff, 12/2022 Customs Tariff. What was the notification? Smart watches, right? Smart watches rate of tax is under 9102. It is by and large 20%, right? So smart watch, if you go and purchase, it is, you will have to pay 20% tax, customs rate, right? Customs, basic customs. It is the same in GST. Now IGST is also there under 3(7) of the Customs Act. So customs rate is 20%. But Government of India brought in this 11/2022, 12/2022, wherein I am just telling you the synopsis of this notification. They said, however, smartwatch, oh sorry, it will be a little small here. It may not be visible, I am just telling you, this PPT would be shared with you. So by this notification, they made the parts of the smartwatches, belt, up dial, low dial, battery, etc., etc. They made the parts of the smartwatches as subsidized, 5%, 10%. Why subsidized? Why should a part of a smartwatch be subsidized and the smartwatch itself be higher rate? Any understanding? Very simple. Government wants you to purchase raw material and make in India, again export possibly, right? Again, that is a separate, I will not go into that. So that was the policy decision. However, now friends, I will show you, this is readable because this is the main important part. This is rule 2A of the rules of customs interpretation. What does it rule say? Any reference to a heading, in a heading to an article shall be taken to include a reference to that article, incomplete or unfinished, provided that as presented, the incomplete or unfinished articles have the essential characteristic of the complete or finished article.
अभी मैं इसको this is a law, okay. So let us convert it into business. I am rereading this. Parts of a smartwatch which are incomplete or unfinished smartwatch which have the essential characteristic of a smartwatch shall be treated as the smartwatch. So now tell me, if you import belt, up dial, low dial, battery, key, smartwatch in the same consignment, what should be the customs rate? Smartwatch rate or this 10, 20, 20, 10% rate? Product rate. Smartwatch rate. Why, sir? Because product incomplete or unfinished which has the essential characteristic of the main product. So, ji smartwatch rate, field is correct, field formations are correct, but policy maker sitting in north block, ও কিন্তু বলছে বাবা এটা তো আমার ইন্টেনশন ছিল না, কিন্তু করবোটা কি? रूल 2A उसको तो हम निगेट ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं वो फॉलो ही मत करो. सो फ्रेंड्स 33/2023 this is a notification which has come. 33/2023 customs tariff, this is the notification which has come on 27th of April. DGGI investigated this case in second week of April or first week of April. 27, last week of April, here you have a policy notification, and what it amended, you see the first para, I'll read it out. Provided that the rate of duty specified in that 11/2022 shall apply even if such goods are presented together in a manner so as to attract the provisions of 2A of the General Rules of Interpretation of the first schedule of the Customs Tariff Act, subject to conditions under table 5, column 5. हो गया काम? हो गया ना? So they have said, rule 2A of the interpretation I am not touching, but 11/2022 shall be applicable even notwithstanding this rule 2A of the interpretation of customs rule under first schedule of the customs. So they have carved out rule 2A for the purpose of this. Sir, time hai na? Chale ji. 5-10 minutes, because you know GST can go on and on and on whole day. Aji? क्या आ गया जी? Ind AS, yeah. So Ind AS is another confusion. So friends, this is, you see, one of the instances where the government has clarified. अभी लेकिन इसमें भी problem है, GST and customs, it is not so simple. अभी ये तो कर दिया, खुश कर दिया, very good, but whether it is prospective or retrospective, एक साल जो इंपोर्ट किया वो क्या हुआ? सो अभी फिर पॉलिसी जाओ, रेट्रोस्पेक्टिव कराओ. इट वुड बी बिकॉज माइंड दैट नाउ अगेन दिस इज वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द GST लॉ. इट इज नॉट अ लॉ, एज मिस्टर शाह सेड, इट इज बिजनेस, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बिजनेस. तो बिजनेसमैन आपको वैसे ही नोटिफिकेशन आया जी प्रोस्पेक्टिव, अभी एक साल इतना इंपोर्ट हो गया, ऑलरेडी तो सारा इंपोर्ट हो गया, स्मार्ट वॉच जब बनेगा तब बनेगा, राइट? सो व्हाट अबाउट दैट लाइबिलिटी? तो यू हैव टू टेल हिम, मैडम डोंट पुट प्रोविजन, पुट एन एक्सप्लेनेशन. सो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ explanation, and explanation would be considered to have been always there.
Provision is always prospective until and unless clarified, right? So friends, this is the way you see a classification dispute can be interpreted, can be, you see, solved. This is goods. Goods makes life a little simpler, right? Let us take one more example of services. I had few 3-4 examples, but due to the constraint of time, let us understand one more example of services. अच्छा जी, अभी गैम्बलिंग का चल रहा है बड़ा, तो let us understand gambling, right? तो what is the difference between gambling and gaming? What is the difference between gambling and gaming? Anybody? What is a game? What is a gamble? कौन? Please, hands up. OJ, experienced person. So, right, this is what, see, he knows business, right, with his experience. So, gaming is an act of where skill is required, but gambling is game of chance. तो अब जी चांस है कि रमी इज व्हाट? आइए, गेम ऑफ स्किल बोले दिलेन सर. This is what Karnataka High Court quashed this 21,000 crore demand of DGGI or Delhi High Court, sorry, in the case of Gamescraft. The Honorable Delhi High Court held Rummy, whether online, has a preponderance, predominance of chance of skill over chance, though it is not gambling. And if it is not lottery, betting or gambling, it will be out of GST. Only actionable claim to the extent of lottery, betting, gambling. Now, इसमें घपला कर दिया policy maker somewhere. So now you cannot take to policy. Why? What about horse racing? Game of skill or game of chance? Skill of the horse, not of the person. तो बोला जी एटा तो किंतु game of chance, but question is 3 classes as per schedule 3: lottery, betting, gambling. Horse racing तो बोल छे ना. Therefore, Rule 31 capital A, which provides a tax on the entire amount of the bet, that is ultra virus section, the rule schedule 3, entry number 6 of CGST Act. The rule travels beyond the law act, and therefore it might be considered to be ultra virus. This is still, going on, the dispute is going on, but classification, the biggest problem is, करें क्या? Businessman will ask you, करे क्या? की कोरबो. Because the moment he leaves the better in the race course with less GST, abar kintu pawa jabe na. He has to pay from his own pocket. Therefore, classification dispute is a big risk, ladies and gentlemen, and should be solved and nipped in the bud. Thank you very much for a patient hearing. Thank you. Thank you, Vivek ji. Now I invite Paresh Potra ji, to come on stage and introduce Anshuma Rastogi ji. Thanks to both the study circle for inviting me to introduce learned speaker Anshuma Rastogi. Anshuma Rastogi is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India and has almost 20 years of experience in the field of direct and indirect taxation. She holds a BCom Honours degree, FCA and DISA ICAI certification, and achieved All India 12th rank in CA final. Anshuma has
worked in Hindustan Lever and currently serves as a member of GST Study Group Kolkata of ICI and impaneled GST faculty in ICI. Ansuma is a regular contributor of articles of GST service tax in various professional magazines and has presented at various seminars, workshops and conferences of different study circles. She is associated with various professional bodies such as Direct Tax Professionals Association, Association of Corporate Advisors and Executives, Views Exchange, etc. Ansuma has also co-authored a book on VAT titled Value Added Tax in West Bengal, a ready reckoner. She has organized and participated in various seminars and conferences on GST and service tax organized by prestigious organizations. Thank you. Now I invite R.C. Jamarji to present flower bouquet to Ansuma ji. Now I invite Ansuma Rastogi ji to have his address, her address. Good afternoon, friends. First of all, thank you so much. Thank you so much, Views Exchange, Central Kolkata Study Circle, for organizing such a wonderful GST Manthan program. And as I understand, it is a series of programs. As Shubham mentioned, it has been a very long time since COVID to have such a big audience physically present at one place. And it's wonderful to be speaking to people rather than to the computer screen finally. And thank you, esteemed members of our profession on the dais. It's an honor to be standing here in front of Pulakda. I've known him since I've qualified as a chartered accountant, and it's a complete honor. Thank you, the audience, for the patient hearing. Let's make it an interactive session. We will, of course, have a question-answer session after the discussions. Vivek ji, it was a wonderful deliberation. Thank you so much. And classification is such a sea that, you know, it's an ocean. And so a few drops also is very, very useful for all of us. And Vivek just touched upon the latest issues and disputes which have been going on in classification, very interesting disputes. The next few minutes are going to be a little technical. We are going to touch upon, I'm trying my best to touch upon all the latest GST updates which have come in the last 1 or 2 months. There have been quite a few updates from the GST point of view. May not necessarily be in the form of notifications and circulars, but a lot of it has come in the form of advisories from the GSTN, certain changes on the GSTN dashboard, certain more information available on the e-invoicing portal. We are going to be touching upon all of them in the next few minutes. And I hope that it helps us in keeping abreast with the latest changes which is happening in GST. The first thing which we feel should have come a long time before but has been deferred again is the reporting of invoices on the IRP portal. We all understand that now e-invoicing is applicable to almost every business which is registered under GST. Once the process of generation of e-invoice is nothing but reporting your invoice on the IRP portal, whereby you generate a QR code. Once the QR code is generated, a normal invoice becomes an e-invoice, as simple as that. Now, so far, there is no time limit to generate this QR code. Every invoice which is issued by a business which is required to comply with the provisions of an e-invoice requires that the invoice, the debit note or the credit note which that registered taxable person is issuing should be reported on the IRP portal, and a QR code should be generated. Once a QR code is generated, that invoice is called an e-invoice. As simple as that. However, there is no time limit for reporting this invoice on the IRP portal. Though presently a lot of businesses are doing it on a
concurrent basis. They're using softwares wherein as soon as you generate an e-invoice, the QR code is generated simultaneously. However, technically and legally speaking, there is no time limit for the generation of the QR code in the law. Now, the GSTN Network Advisory issued an advisory on the 12th and 13th of April 23 saying that all businesses who have an aggregate annual turnover exceeding 100 crore rupees would be given only 7 days to generate this QR code from the date of the invoice, debit note or credit note. And this particular system would be effective from 1st May 2023. Therefore, any backlog you have, if you have not generated e-invoices, for any invoices or for all your invoices, you can please go ahead and regularize it. You will not get time after 1st May 2023. With effect from 1st May 2023, any fresh invoices, debit note, credit notes issued by a business having an aggregate annual turnover of 100 crores, you will be allowed to generate the QR code only within a period of 7 days, not 7 working days, 7 days. That was the mandate issued by the GSTN Network Advisory. However, 6th May, while 7th May was the day for generating, the final day for generating the QR codes for all invoices issued post 1st May, 6th May, this advisory was deferred. It has been deferred for 3 months presently. However, they have not notified a date from which it will be effective. But it goes to say that sooner or later, the e-invoices will have to be generated within a specific time limit and backlogs will no longer be considered. Gradually, it will apply to all businesses. Now we come to certain amnesty schemes or certain relaxations which have been given for filing of few returns or filing of few revocations of cancellation of registration, etc. This has come after the trade, the industry, the professionals, the trade bodies have represented to the government time and again regarding certain defaults by groups of taxpayers, and they are unable to rectify those defaults because there is a time limit in the law beyond which they are not allowed to rectify the same. The first one being, if a GST registration is cancelled. Now, GST registrations can be cancelled under section 29 of the CGST Act by the relevant jurisdictional officer. He can cancel your GST registrations under a number of cases. 2 of the cases being where a composite taxable person fails to file their annual return for 3 months beyond the due date, or in a case where other regular taxpayers have not complied with filing of returns for 6 consecutive months or for 2 consecutive tax periods in case of quarterly filers. So, where a taxpayer has not complied with the regulation of filing their returns, section 29 gives power to the jurisdictional officer to cancel the registration of that particular taxpayer. Now there is an option within the law itself which allows revocation of the cancellation if the returns are then filed by the concerned taxpayer within a time limit of 30 days from the date of cancellation of the registration. So if the registration is cancelled, let's say on 30th September, and if within 30th October the returns have been regularized, then the officer has to revoke the cancellation of the registration. However, if this particular thing is not complied within 30 days, then that taxpayer has no option. So, to help those taxpayers whose registrations have been cancelled, but they have not been able to comply with the regulations within the 30 days and have their cancellations revoked, for them this amnesty has been provided, whereby it has been, the government has granted time till 30th June to these taxpayers
to regularize their returns, to file their returns, and they will get another opportunity to apply for revocation of the cancellation. So where GST registrations have been cancelled on or before 31st December 2022, if any registrations have been cancelled post that, this amnesty scheme would not be applicable to those particular taxpayers. Any registration cancelled on or before 31st December 2022 due to the returns not being filed on time, not because of any other case, but because if the returns have not been filed on time. The Section 29 allows the jurisdictional officer to cancel your registration for a number of other reasons, two of them being your returns not being filed on time. So only for those cases the relaxation is available, where if the returns are now filed in time before 30th June 23, the revocation of cancellation can be applied for. This kind of scheme had come earlier also in case of first where the cancellation date fell between 1st March 20 and 31st August 21, which was the COVID period. There was relaxation till 30th September 21, and earlier between 15th April to 29th June, it was 30th June was the date when it was allowed to be. Similar amnesty was extended earlier. Presently, we have time till the 30th June of this year to actually apply for revocation by complying with the law. There is another update which has come in recently, wherein the CGST rule 8 sub-rule 4A has been revised, and there has been a system of biometric Aadhaar authentication which has been provided in the rule. Those who have ever applied for a GST registration would be aware that there is an Aadhaar authentication which is in place. And Aadhaar authentication is mandatory, wherein the Aadhaar number of the applicant or the key management personnel of the applicant is linked with their mobile number, and whereby an OTP is fed into the portal and the Aadhaar number is authenticated. This authentication is online. However, it has been suggested, the rule is now amended to suggest that if there are people who have been identified on the basis of data analysis and risk parameters, they must undergo biometric based Aadhaar authentication, wherein that person will have to physically visit a facilitation center and would have to biometrically undergo an Aadhaar authentication along with the verification of the original copy of the documents at the facilitation center. So this is in keeping in mind, again, as it was discussed on the podium earlier, that there are a lot of fake registrations going on under GST, whereby economically weaker people are shown as directors of companies, are shown as partners in companies, and on the basis of their Aadhaar, registrations under GST are being obtained. So this particular provision has been introduced to restrict the magnitude of fake registrations which is happening under GST presently. Another amnesty scheme which has been introduced is for composition dealers and filing of GSTR 4. GSTR 4 for the financial year 17-18 and 18-19 was till March 20 for financial year 19-20 was a quarterly return. It needed to be filed for every quarter by the 18th of the following month. Now, after that, for the financial year 2021 and 21-22, it was an annual return which was required to be filed by the composition dealers by 30th of April following the end of the financial year. Again, the late fees was quite steep, considering that this provision was for composition dealers. It was rupees 50 per day, extending to maximum of rupees 2,000. To grant an opportunity to composition dealers to now comply with the GSTR 4 if they had not complied with earlier, an amnesty has been introduced whereby a reduced late fee of rupees 500 is available. You may file a GSTR 4 pending for from the beginning till date at a reduced late fee of rupees 500
if the same is filed between 1st April 23 to 30th June 23. So if the GSTR 4 is filed before 30th June 23, this amnesty scheme can be availed till financial year 21-22. Please note that the amnesty is not available for financial year 22-23. It is available only till financial year 21-22. I have put in on the slide the earlier due dates for reference. For 2021, though the due date in the law is 30th April, but by notification it was extended till 31st July 21. Similarly, for 21-22, it was extended till 28th July 22. However, if it has still not been complied with, the amnesty scheme, at a very low fees, the returns can now be filed and things can be regularized. The most awaited and the most beneficial amnesty scheme, if I may say so, is for the annual returns. There are still a lot of taxpayers who have not filed their annual returns, which is the GSTR 9(9)C, for many financial years. Presently, the GSTR 9(9)C should have been filed for financial year 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22. We are looking at 5 years. And the late fees presently applicable before the amnesty scheme was 200 rupees per day of default up till 0.5% of the turnover. I'm talking about both CGST and SGST. If we divide it, it's 100 rupees plus 0.25% of the turnover. It comes in lakhs. For people who have not complied and were required to comply, the late fees for them is turning out to be in lakhs, and that was a big deterrent for businesses to comply with their annual returns, who have missed out, who have not filed, etc. This amnesty scheme, which was much looked forward to, gives relief to the small taxpayers. Turnover less than 5 crores, it is only 25 rupees per day under a single act, which is 50 rupees per day under both the acts, and total maximum amount of penalty will go up to 0.4% of the turnover, 0.2% under CGST and same under SGST. For taxpayers having turnover which is greater than 5 crores but limited to 20 crore rupees, it is only 50 rupees plus 50 rupees, which is 100 rupees per day, and maximum of 0.04% of the turnover again. So big relief for taxpayers who have not complied with their annual returns. Now this late fees is actually applicable for 22-23 onwards. So any delay from now onwards is this. The amnesty scheme is for the old returns, the annual returns which have not been filed in the past. It is a flat 20,000 rupees penalty, which is a late fees which needs to be given, and if it is filed before 30th June, so for all those registered taxpayers, whether it may be your clients or your office, your friends, etc., please note that by 30th June, if any of the older annual returns which have not been filed are complied with now, it is just a penalty of 20,000 rupees flat for all taxpayers irrespective of their turnover. For financial year 22-23, of course, the reduced rates of late fees have been shown in the slides which we discussed before. Again, it is to be noted that it is applicable only for small taxpayers. Any registered taxpayer having a turnover of more than 20 crore rupees, what will be the late fees applicable for them for delay of filing of annual return? 200 rupees. Restricted to 0.5% of the turnover. Similar amnesty extended for the final return under GSTR 10, which may be filed before 30th June with a maximum penalty of only rupees 1,000. Final returns are required to be filed by taxpayers whose registrations have been cancelled. Therefore, for 5 years, regularization only 20,000 rupees per year needs to be paid. Going forward for 22-23 and onwards, the late fees has been reduced a lot
for the smaller taxpayers. Now we discuss briefly Section 62. Section 62 of the GST law gives an authority to the officer, to the assessing officer, to issue an order requiring a taxpayer to file a valid return. This is for non-filers, the taxpayers who have not complied with filing of their GST returns have can be issued an order under Section 62 and can be asked to file their returns. Non-filers would be subject to best judgment assessment under Section 44, and an assessment order can be issued under Section 62, which would mean that on the basis of the information available with the assessing officer, the GST liability of the taxpayer will be ascertained. Now, the taxpayer has also been given an option that if you file the valid return within a period of 30 days from the service of the assessment order. An assessment order is issued under Section 62, wherein the learned officer says that this is the amount of tax liability I have ascertained on the basis of my best judgment since you have not filed your returns. In which case, the taxpayer has been given an option that from 30 days of the date of that assessment order, you may file a return and the assessment order will stand withdrawn once you file the returns properly for whatever periods you have not filed the returns. The time limit for that is again 30 days from the date of the assessment order. The amnesty scheme grants time till 30th June for all orders issued before 28th February 23. All orders issued before 28th February 23, in case you have not complied with the requirement of filing the return for whatever reasons, now is the time till 30th June you may comply with the same and the assessment order will stand withdrawn. Of course, the late fees and the interest would be applicable. There is an amendment proposed to Section 62 by Finance Act 23, which has not yet been notified, wherein this 30 days period is proposed to be increased to 60 days any which ways going forward. So, a brief summary of the amnesty scheme, the slides will be given to you. I think this will be useful to one and all till 30th June. We have a lot of options to regularize filing of a lot of people who haven't. So, this update is extremely important. Before I end today's deliberation, I would like to briefly touch upon Section 73 and the extension provided to the department in this case. Till now, we were discussing the amnesty scheme wherein the benefits were awarded to the taxpayers and non-compliances, whatever non-compliances were there, they could now regularize the same by paying a very small amount of late fees, etc. Section 73. Section 73 empowers the officers to issue a show cause notice and orders under the same section for assessment of tax liability. Any kind of scrutiny, any kind of GST audit by the department, any kind of investigation, finally Section 73 and Section 74 are the two sections under which show cause notices and orders are issued by the officers. Now, there is a time limit under Section 73. Section 73 applies in cases where there is no willful misrepresentation or fraud. To summarize it in a short manner, under Section 73, the time limit to issue an order under Section 73 is 3 years from the due date of filing the annual return for a particular financial year. So when we talk about the period 2017-18 from July to March 18, then the last date to file the annual return was 5th February 2020 in some states and 7th February in other states. The due date
for issuing the order under section 73 would be 3 years from that day, which would be February 2023. The show cause notice, which is to be issued under section 73, is required to be issued 3 months before, at least 3 months before the due date of issue of order. So the due date for issue of the show cause notice for 17-18 should have been 4th to 6th November 2022. Right? However, this date has now been extended wide notification, and the new dates for issue of show cause would be 30th September 2023, and the new date for issuing the final order would be 31st December 2023. However, this is only under section 73. Section 74 allows an extended period to the officer, which is 5 years from the due date of the annual return. Therefore, all orders, all show cause notices which need to be issued under section 73, the time barring for the same would be 30th September 23 for the show cause notice and the 31st December 23 for the final order. Though in practical cases, as we were just discussing, there are hardly any show cause notices which are issued under section 73, they are all issued under section 74. Similar extension has been provided for financial year 18-19 and 19-20, wherein in 18-19, if we were to go by the legal provisions, the due date for issue of SCN would be 30th September 23, extended by 3 months now, and similarly for 19-20, it has been extended for further 3 months. The department has been given time, extra time to issue the show cause notices. With this, there was few other very small points which I wanted to touch on. I will just take one of this and end my session for today, wherein e-invoicing is now applicable for all businesses whose turnover is greater than 5 crore rupees. Till now, it is 10 crore rupees. With effect from 1st August 2023, all businesses having turnover of 5 crores or above will have to comply with e-invoicing, which encompasses almost everyone registered under GST. With that, I would like to thank you for today's session. I hope everyone benefited from the session. Any queries, we'll be happy to take it over the question answer session. Thank you so much. Now the session is open for open session, and question and answer will be asked. We have heard CA Pulak Sahaji, we have heard Vivek Charanji, Shubham Kedanji, and Ansuma Rastogi. So if you have any question, you can ask one by one. I am also a chartered accountant and cost accountant of 1994, right? And last 3 years in the capacity, I have worked in a capacity as the CEO of a company. So, excuse me, just hello, excuse me, can you please remain silent? Yes. Last 3 years, I was working as a CEO of a company. Now, what had happened, I have seen a practical. Naturally, as CEO of a company, you are out of any accounts, costing, GST, and all that, because overall, I'm supposed to look after. So the problem which has happened is like this. I mean, we are in a metal company, which is a secondary metal, which is basically dealing with the secondary metal, right? Base metal I am talking about. To specifically, it's a lead business. Okay. Now, thing is that as a corporate, when we are going to buy material from the market, we have to go through various others, unauthorized people. I mean, there is no other options other than you have to take the material from them because you don't get the material in time. Now the problem which I had faced and for which I had to face around 9 hours or 10 hours of interrogation from GST officers
is, now I have bought from a company, say from a company in Delhi, and took the GST credit based on that invoices. Now he in turn has bought the material from some other person who has defaulted in payment of GST, or who has been removed from the GST registration, that kind of thing. Because now the problem comes to us is that when we are getting the material, the entire department jumped on us, said that you have bought the material in a very wrong manner, knowingly, and you have to pay for the taxes. Now this thing, the case is still on, and I think Mr. Vivek Jalan is also aware of the cases, a little bit, whatever I have understood. I mean, what do you suggest? I mean, is it as a corporate company, do you have to go through each and every vendor where from we are buying material? Is it a L1, L2, L3 level also you need to go? Because the person from whom we are buying is also buying in turn from other persons. So this rotational thing, I mean, to what extent you can go for audit? See, this. I hope I am clear to. Yeah, I know this case very well. See, this is the problem being faced by the iron and steel companies, right? Those who are having foundries, they're buying the scrap, right? And this is not new into the GST regime. This is under the central excise regime when there was a first stage dealer registration through model. This transaction was being happened. What happened in the scrap industry, what happened, they collect the scrap from the small manufacturing units, and most of the cases these scraps are being sold in cash. So they collect the scrap and somehow keep it, which is unaccounted. But whenever a company like you are buying the scrap, then you need the bill and you make the payment by check. Now what happened that I am doing business with you for last 10 years. I am a registered vendor with you. You have given me the purchase order for procurement of the scrap. Then what I do, I am not a scrap dealer, or I'm a scrap dealer, sorry. I'm a scrap dealer, but I do not have a procurement in the right style. Because that is what is the market deficiency, the way market operates, which department is fully aware of. Right? But what happened, sometimes some of the steel industry's case, when this kind of investigation, we were handling this case, so we have seen that particular dealer registration got cancelled, subsequent date. Some of the cases what happened, then the investigation was going down, the third party, that means the dealer who shown that I have procured the material from Mr. X, where they have gone to the Mr. X showing that it is an iron and steel factory, but it is a 100 square feet room, 3 people are working there, right? This is what is the story. And obviously when they have issued the e-way bill and all the vehicle number, etc., that was also forged e-way bill number, I'm sorry, forged e-way, not that forged vehicle number. Like the vehicle number they have put, when the investigation was carried out at the RTO label, it was it is a scooter or it is an auto, something like that. So in this case, you know that how long the question we have put before the authority, that I do not understand, because the law does not require me to investigate the source of the material from where from my vendor has procured the material. Because in this case, if we go by the law, the basic requirement that the material has received by you, if you have a detailed GRN, you have a proper GRN and weighment at your factory level, right?
In that case, that means material has been received, and against that material, you have issued the material to the foundry where it has been consumed, and which in turn actually generated the output. Now, and you have made the payment by check, and the other party also deposited the amount. Whatever may be the reason at the time of investigation that registration got cancelled, that I am not aware of, because now we have the privilege of checking the live registration number of the vendor. When I am transacting with a vendor, we can check that the vendor registration is correct. So when you have given a vendor registration, that time the onus is on the department to check and verify whether he is having a factory or not. So you are also giving the registration sitting in the room, and don't expect me to go to the market and see that whether he has a factory or he is operating from a 100 square feet room. So you know that under the Central Excise erstwhile regime, that in the Allahabad High Court, I forgot the name of the case, in Allahabad High Court this matter was travelled to the High Court, and the Allahabad High Court ordered that as long as the SSE is in possession of the original tax invoice, tax was paid, which is not in dispute in the present case, credit cannot be, because the SSE cannot be acting as an investigator. I am not supposed to investigate to my vendor where from you are procuring. Law does not mandate me to do this thing. Law told me to justify and to identify. Yes, I have identified my vendor because he has the GST registration, he has an address, he is a dealer, he is not a manufacturer. I know that he is a dealer, he is procuring goods, and where from he is, how he is doing. Now they are trying to do that you are buying, suppose when you are buying a stolen material, you are also part of the crime. In that case, there has to be some legal sanction into the law. That is why in the Allahabad High Court said that the SSE should not be burdened with the further inspection where from the material is being procured by the vendor. But in the GST has not yet been tested. So let's see how it works out. But the department is very rigid in this regard. At least in West Bengal, they are very rigid. If you cannot produce that where from the material traveled, they want the travel document, I mean the transport document. So I have seen that they are, but the matter is now still hanging. Let's see that how it is. But I don't think that as long as you can produce the evidence, goods received, GRN has been created, recorded into the stock book, then it has been issued to your foundry for production purpose, and you have paid by check, and you have a consistent business practice with that, it is not just one of a case. You are doing business with him for so long years. I don't think that the department has any case. Correct, you have stated. In fact, the other areas which you have stated is being followed totally. The goods have been received, have been taken into the stock, GRN been made, and the supplier was paid by check and all that. Those formalities are already there, because as a corporate company, I mean, we just cannot, play around with this kind of thing. But the main thing is, which lies, there is I'm sure, there is a rule probably in the GST that if your supplier, your vendor, doesn't pay GST properly, then probably the liability ultimately falls upon you. You understand? So those kind of situations are there. Those kind of situations are there. In that case, if that is the situation, your vendor has not, you have paid to the vendor. You have paid to the vendor, but the vendor has not deposited the tax. Right. There would always be a challenge because 2A2B issue is coming into the Right. But you know that this is also sometimes in my mind it's an illogical practice, because I cannot be made responsible for compliance of my vendor. Let's the court will take the decision, right? Because it has been implemented by way of a rule. There is no extant provisions in the act. The rule cannot supersede the act.
So let's wait for the High Court or Supreme Court to decide on this matter. But Till it is, then, I we mean, have to bear with till it. the time, it's quite a bit of, harassment. I mean, it's quite a bit of harassment. Someone has to go through. When the matter comes, if the matter is still confirmed into your in the appellate authority, you have to file a writ and wait for the High Court to intervene. There is no other alternative. In that circumstances, do you suggest some kind of doing audit at the L1, L2 level? Some kind of vendor audit, Business. vendor audit. If you carry out this kind of, if the business you are talking about, to the best of my knowledge, I can tell you, you will not get the product. You will not get the product. Nobody will sell you. You have to close down your factory. This is the practice of the business. You can't do it. Now the choice is yours, whether you want to shut down your business or not, or you want to procure the material. If you have to procure the material, this is the practice. You can't help. Sure. Thank you. Good afternoon, everyone. My question is to Ms. Anshuma. Ma'am, ma'am, we were talking about the e-invoicing aspect, that there is no time limit per se to issue e-invoice. It was like reduced to 7 days. Now it has again, I think, been like extended to 15 days, if I'm correct. But I have a small issue that if we read section 31, when we read it along with rule 48 sub rule 4, and again with the sub rule 48, rule 48 sub rule 5, we see that we have to issue the tax invoice after reporting the same on the IRP portal. And if we do not do the same, so that invalidates the tax invoice. Yes. And I believe it comes with consequences. I completely agree with you on this. Technically speaking or legally speaking, the e-invoice is the tax invoice. And the tax invoice has to be issued on or before the supply of goods or services. So for services, of course, you have 30 days time on or before the supply of goods. And however, as we have seen before, the GSTN moves in a different manner, and the law and the rules are often very different from what. So again, very practically speaking, the GSTN does not allows you to generate the QR code even after 2 years of having generated a tax invoice. But as most of everyone is practicing, the e-invoice should be generated simultaneously with the tax invoice which is generated on your software, to make sure that the legal portion of the law is complied with. This was which is why I harped on the fact that this is a GSTN advisory, and this is not notified by any notification, not even a circular, etc. It's just a GSTN advisory where they have advised that even on the GST portal now, or the e-invoice portal, the QR code cannot be generated before after 7 days. Otherwise, it exposes you to the like 16 to A. Definitely. And definitely 129 also there can be some issues. Absolutely, absolutely. Thank you, ma'am. Hi. As Anushri was discussing about the MST scheme, so one of my clients just realized that he has not filed returns since 2019. Because of GSTR 3B and the GSTR 1? Yes, GSTR 3B and the 1. We don't have an amnesty scheme for that yet. But since June 21, the late fee is 500 rupees per return. But before June 21, it is coming 10,000 rupees per return. So for 19 months, it's coming 1,90,000 just for 3B. So what do we suggest? Like, can we expect a scheme for this, or is there anything? We'll wait for Khalid sir to come in. We'll wait for Khalid sir to come in for that. Let's hope there is an amnesty scheme. It's badly needed for a lot of our taxpayers. Ma'am, with this amnesty scheme, I have one more query that we have seen previously as well. That when there is an amnesty scheme, you go ahead and file your previous returns, but it still exposes you to the harsher punishment of not allowing you the ITC. So that is still there, right? 16.4, you are barred by 16.4 from taking ITC. In cases where you are ready and willing even if we do get an amnesty scheme for GSTR 3B and GSTR 1, it might exempt you from the late fees. Yes. We are still not sure what will be the position if with respect to the ITC which can be availed by the person who needs to whom you are passing on the GST. Because even to my knowledge, there is no court judgment right now. Everything is pending. Absolutely, absolutely. Not yet listed, right? Agreed. Thank you.
Good Last afternoon, question. everyone. This is regarding ASMT 10 issued to one of my client, where discrepancy noticed is by the department is in respect of ITC reversal on credit notes for goods return. The department has raised demand for this amount on the assumption that assessee has not reversed this ITC, as because the ITC was not netted off in 3B. It was not, the figure was not put in reversal column that time. This is relating to 17, 18, 18, 19. So, like, is this demand justified by department just because it was netted off in GSTR 3B? My question is this. Because in current GSTR 3B, like which we are filing, the system generated figure is itself netted off in this respect. So what to do now, current GSTR 3B? And there was no mandate as such during that time period that it has to be reported under reversals. In fact, at that time everyone was following their own system. Idea is basically that we should have reversed the credit if it was genuinely required to be reversed. If we have received a credit note, we should have reversed the credit, but it does not mean we have to report it separately. In our 4B2 in GSTR 3B, we could have netted off in 4A5. You can show the ITC register to the department and show that this is how I've taken the credit and I've reported it in GSTR 3B. I think that would be sufficient for you. But if the department does not agree, then you'll have to go through further measures of how to justify to them in terms of your invoices and everything. Actually the thing which was not acceptable to me was the officer was saying that in current GSTR 3B also you gross it up and show it in reversal column. So I was completely surprised. See, there is one from January 2023. Okay, there is advisory, I think, from the GST network itself, which says previously as per circular 170, it required to be shown separately, right? But from January 2023, as per the advisory, it requires to be netted off. That was something which was not happening in the GST network. So if you see that advisory, you can take it to the officer and you can show it that actually the intention was to net it off only. Right, so that is in your favor, and it is 17, 18, 18, 19. So that time there was no circular 170 also, which as it is not applicable. So take this advisory January 2023. Thank you. I have a query. The supplier has went under liquidation, the IBC code, and has not filed the 3B returns, and obviously taxes were not paid through regular 3B. And now a notice has been issued to the recipient demanding the reversal of the input tax credit. So how to give a proper reply to the officer, because the officer is simply not agreeing to it, that we have to follow the circular regarding the IBC code. How to convince him, or do we have to take up the matter further up? This is a problem area. This is definitely a problem area. We were discussing this a couple of months ago with other professionals also, that IBC में ये problem है. The supplier has been exempted from paying the GST dues. They obviously have a code in the IBC wherein the government dues has to be paid last. But what about the customers or the recipient of the credit? Will they be allowed to take the input tax credit or not allowed to take the input tax credit? If they are allowed to take the input tax credit, on what basis will they take the input tax credit? Because the supplier has obviously not paid the tax to the government. In my humble opinion, the recipient is not eligible for the input tax credit within the four corners of the GST law, because the supplier has not paid the tax to the government. So section 16 itself bars the recipient for claiming that input tax credit. Obviously the creditor has not received neither the input tax credit nor the other payments from the, maybe they have paid to the vendor, but this input tax credit is primarily
the GST department per se will not allow this input tax credit presently. There are a lot of cases going on at the higher forums, and maybe more clarity on this issue couple of years down the line. Thank you. Thank you. Now I invite Hemraj Ka Prasad ji. Mr. Sitaram Agarwal ji. Ms. Shorvi Pora to present memento to Pulak Shah ji. Mr. Sanjay Agarwal. Mr. Hidayat Metruka to present memento to Shubham Ketan ji. Now I request Mr. Rakesh to present memento to Vivek Jalan ji. Mr. Mitruka to present memento to Ms. Ansumar Rastavi ji. Zari Sharma ji is here. No. By this we had a very good session, and the first session is completed with which started with Pulak Shah ji's inside things, how we started with the VAT, and thereafter how we started with the GST. Thereafter Shubham Ketan ji was it means actually clarified on classification and other things. Thereafter Vivek Jalanji gave inside view and the more practical view, and each and every questions were also answered while having his deliberation also. And thereafter Ms. Ansuma has also given a very nice deliberation. So with these I conclude the first session of today's session. So we'll have some 2-3 minutes break. Thereafter we'll start with the second session. Good evening everyone. Mr. Arun Kumar Agarwal is a qualified chartered accountant and possesses 2 decades of experience in various areas of indirect taxation. He regularly represents the industry and trade bodies before the government on numerous issues in indirect taxation. Presently, he is the director of ARS Management Consultancy Services Private Limited, which is a leading management consultancy house in the field of indirect taxation. He is a regular corporate trainer and a visiting faculty in indirect taxation, accounting, auditing for revenue officials as well as for various universities and institutes. Mr. Arun has contributed in many eminent books, and he is the author of Commentary on West Bengal VAT and Practical Guide to WB VAT Audit. We welcome Mr. Arun. Now I request Prem Rajka ji to offer flower bouquet to Arun sir. Now I request Arun Agarwal ji to kindly address us. Today, he is the chairman of today's session. Nitesh, President, Views Exchange, Nitesh, Shivani, Rohit, Tarun, and Surbhi, and all my friends present here. A very good afternoon to all of you. Friends, the session which we are going to have ahead, we have 2 sessions in that. One is on how to handle notices in GST, and the other one is input tax credit, issues in input tax credit. So issues in input tax credit means actually issues in GST, because GST का basic framework ही है input tax credit. GST पूरा conceptually वो that stands on that one single leg, that is input tax credit. And notices, of course, because we all
our professionals here present here, maximum हम लोग सब या तो industry में है या हम लोग practice कर रहे हैं, maybe as an auditor, maybe not directly as an indirect tax consultant or GST consultant, but as an auditor also, as an internal auditor also, as a consultant also, in every sphere of life. GST is an inevitable part, and regularly, that means very frequently, regularly does not mean daily, kabhi bhi at any point of time you may have to face a notice from GST department. So knowing how to handle that GST department is one of the most important aspect of GST law. So I think we need to be aware of that. What are the rights of an assessee? What are the obligations of an assessee? That is, what are the duties? What are the rights? What are the powers of GST officers? And what are the limitations they have? So subject to these duties, rights, powers and limitations, DRPL. These are the 4 terms very important in GST. We all must know, each and everyone should know. So I think Tarun is going to enlighten us on that, give us some tips on that, very effective tips on that. Regularly Tarun is doing that. He has already authored a book also on that, I believe. So he has very widely covered this topic, these aspects. And Shivani is again going to tell us about issues in input tax credit. Shivani has been handling indirect tax matters, as I know, if I am not wrong, since central excise time and service tax time, then VAT time and now GST. So probably you cannot get a better speaker than Shivani, who can give us a very good insight on input tax credit issues, how input tax credit issues emerge, where from they started, and what is the evolution and what is the current status today, what are the issues still to be addressed, आगे में क्या है GST का, GST, what is the future of GST, वो discussion पूरा उस वहाँ से शायद निकल के आएगा. तो probably we have very good speakers on that, but before they take up, I would request our keynote speaker Rohit to deliver his keynote address. Actually keynote address schedule में है, and even I was asking Rohit also कि Rohit keynote address होता क्या है. तो रोहित सेठ कि क्या बोलना है, मैं बोला भैया क्या बोलना है कल, मैं बोला बोलना क्या है, कीनोट एड्रेस है. तो बोला अच्छा ठीक है. तो फिर मैंने कहा कि भाई मेरे को ये तो बताओ कीनोट एड्रेस होता क्या है. तो देन ही एक्सप्लेन्ड मी व्हाट इज कीनोट एड्रेस. तो आई सेड प्लीज डू दैट. जो कीनोट एड्रेस होता है वही करो. तो तुम रोहित्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और द मैंडेट इज टू डिलीवर हिज कीनोट एड्रेस. सो आई वुड रिक्वेस्ट रोहित टू डिलीवर हिज कीनोट एड्रेस, मे बी 10 to 12 minutes. Today we have with us a treasure trove of wisdom. आपको अरुण जी ने बताया, तरुण, शिवानी और अरुण जी हिमसेल्फ. कंबाइन एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे तो मेरे को लग रहा है जितने लोग पीछे बैठे हुए हैं उनको आगे आ जाना चाहिए, और जो आगे हैं उनको एकदम सीट के एज पे बैठना चाहिए. सेकंड सर, आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअल में धीरे धीरे आपको Friends, we will take 2 minutes time for the formalities. Thank you. We will first complete the introduction chapter honoring the okay. At introduction of C.A. Rohit Surana by Surabhi. Very warm afternoon to everyone. Well, thank you Nitesh ji for giving me this opportunity to introduce Rohit ji. So, okay, so Rohit ji is basically a BCom, FCA, CS, IMMA charter holder, FinTech and blockchain from SP Jain. He has an experience of 15 plus years in finance and taxation, and he is founder of CA firm in 2009, and he is into corporate structuring, management consultancy and external CFO. He is he works on taxation, direct, indirect and international taxation, and he is also a co-chair in ICC, member of CII, associate editor for Pan India GST journal called GST Professionals. He has delivered at various seminars like ICAI, ICSI, TPF, other study circles and BCCI.
He is in-house training at various corporate houses. I welcome Rohit ji to enlighten us for this session today. I request Prakash ji Bimrajka to offer a flower bouquet to CA Rohit Surana ji. I request Hriday ji to introduce CA Tarun Gupta sir. Good afternoon, everyone present here. CA Tarun Kumar Gupta is a FCA, FCS and MBA. He has about 23 years of professional experience in the field of finance and financial management and taxation. He started his career in PwC in the advisory practice, and he is presently practicing as a chartered accountant specializing in indirect taxes. He has been advising many state governments, corporates, and is working on projects funded by World Bank, ADB and FCDO on the indirect matters including GST. Tarun is also a Vice President of ACAE, and he is an author, and his books are Practical Guide to Assessment and Audit under GST, and that has been published by Bharat Law House, New Delhi in Feb 2023. He is also a regular speaker on various forums and has contributed to leading articles for professional magazines. We welcome him. I request Jyoti ji to offer flower bouquet to CA Tarun Gupta sir. ध्रुव ज्योति बंदोपाध्याय. Thank you sir. अभी एक इंट्रोडक्शन चीफ गेस्ट पे कर देंगे पहले. ये तो है नहीं ना, चीफ गेस्ट है कहाँ है? बस ठीक है, चालू करें. बस चालू करना है शिवानी जी. शिवानी करते हैं अभी. शिवानी को तुम बोलते हो. I request Manish ji to introduce Shivani sir. Thank you, Girdhar ji. Mrs. Shivani Shah Agrawala is an Indian sportsman and chartered accountant who is widely acknowledged as the first Indian woman to become a world champion in kettlebell sports. Shivani represented India at the International Kettlebell World Championship at Uzbekistan in 2018, winning the first gold medal for India in that category. She further outclassed her own achievements in 2019 when she won the second gold medal in Australia, followed by the third gold medal in France last year. Shivani garnered a lot of praise for her recent TEDx speech as well, something that she delivered back in December 21. Shivani was conferred the Pride of Bengal Award 2022 alongside the likes of Arnab Goswami, Leander Pace, Arup Raha. Besides the achievement, Shivani is also mother to her 7-year-old, thereby donning multiple roles and acing all of it. Thank you. Please welcome Shivani ji. I request Dhamar ji to offer a flower bouquet to Shivani. Now we request Rohit ji to continue. Sorry, huh? सो लाइक आई सेड, इंट्रोडक्शन के बाद और ज़्यादा ये स्ट्रांग हो गया कि ये ट्रेजर ट्रोव ऑफ विजडम है. और आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने कहा, पीछे से कुछ लोग आगे आ गए थे, जो बचे हैं वो भी आगे आ जाएंगे. पहला टॉपिक जैसे अरुण जी ने बताया, इश्यूज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अपने पास शिवानी है एंड वी कैन आस्क, एंड देन अरुण जी इज़ ऑन द टॉपिंग. आज काफ़ी सारे इश्यूज हैं. जैसे एक क्लाइंट आज अपने रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को टेलीविज़न गोल्ड कॉइन गिफ्ट करता है जब वो टारगेट अचीव करते हैं. क्या वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल करेगा? क्या वो सेक्शन 17(5)(h) में फॉल करेगा? अभी रिसेंटली एक सर्कुलर आया था जिसने गिफ्ट को डिफाइन किया एज वॉलंटरीली विदाउट कंसिडरेशन. बट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई ये तो कंसिडरेशन, आप टारगेट अचीव कर रहे हो तब मैं ये दे रहा हूँ, तो इसका क्या आईटीसी मिलेगा? CSR के ऊपर अभी रिसेंटली बजट में आया कि उसका क्रेडिट हम नहीं देंगे.
हालांकि उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट इसके पहले CSR का क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा इशू है आज के डेट में जहाँ पे सप्लायर्स का इन्वॉइसेस नहीं दिख रहा है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसने ई-कॉम गेल के केस में, जिसने क्लियरली बोला कि बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ ओनरशिप इज ऑन द SSE, merely showing invoice और बैंक पेमेंट इज नॉट इनफ। तो उस केस में क्या होगा जब हमने एक्चुअली गुड्स रिसीव किया है, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए अगर सामने वाला का RC कोई भी कारण से कैंसिल हो गया या उसने भरा नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे मेरे, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस शिवानी ऑटोमेटिकली आंसर करेगी। दूसरा जो सेशन है वो है हाउ टू हैंडल डिपार्टमेंटल नोटिसेस। आई एम श्योर तरुण एट सम लेवल आपको बताएगा कि डिपार्टमेंट इज आर्म टुडे विद अ लॉट ऑफ टूल्स जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाल दिया गया है। अब वो लोग कितना सारा पैरामीटर्स डाल सकते हैं जो कंप्यूटर खुद ऑडिट करके बता देता है। रिसेंटली मेरे साथ एक केस में हुआ, रियल एस्टेट के केस में, कि भाई 1% और 5% जिसने ऑप्ट किया है उसको टैक्स तो कैश में देना है। एक ही कंपनी में ओल्ड रेट भी चल रहा है, नया रेट भी चल रहा है, GST रिटर्न में भूल से कॉमन ITC यूज हो गया। बाद में जब पता चला तो CC रिवर्सल एक्सेट्रा करके कैश पेमेंट हुआ। बट डिपार्टमेंट इस चीज को कैसे पकड़ेगा? 3B में तो हम पेमेंट करते जा रहे हैं, बट आज दे आर आर्म्ड विद टूल्स टू इवन टेक आउट दीज इश्यूज। आपको पता होगा अभी मैंडेटरी किया है, कुछ दिन पहले स्टेट गवर्नमेंट जो भी नोटिस इशू कर रहा था उसमें डिन नंबर मैंडेटरी नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेटरी था, अभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कर दिया है। तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो स्पॉट नोटिस इशू हुए हैं SSE को, उसका क्या होगा? रिकंसिलिएशंस, एडवांसेस, जैसे फॉर एग्जांपल जो अकाउंटिंग में परसेंटेज कंप्लीशन मेथड में एडवांसेस खड़े हैं जो GST में सप्लाई हो गए हैं माइलस्टोन बेसिस में, उसका रिकंसिलिएशन कैसे होगा? तो बहुत सारी ऐसी इश्यूज है जिसको आज के पैनलिस्ट हाईलाइट करेंगे। मेरा आपसे खाली ये अनुरोध है कि आप बहुत ध्यान से सुने इनका डिलिब्रेशन। वी हैव विद अस अरुण जी, जो हर जगह अपने एक्सपीरियंस को इस पैनल में ऐड करके इट विल बी लाइक अ टॉपिंग ऑन द चेरी केक। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे मैंने कहा कि जो आगे बैठे हैं वो सीट के एज पे आ जाएंगे और जो पीछे बैठे हैं उनको मैं हिदायत दे रहा हूँ अभी आगे आ जाएं। सो बहुत ज़्यादा इनका टाइम नहीं लेते हुए लेट अस स्ट्रेट गेट इनटू एक्शन। थैंक यू। चेयरमैन बहुत खुश होता है, उसको बहुत टेंशन रहता है कि लोग सारे स्पीकर्स जो अपना अपना टाइम लिमिट अधेयर करें, और जब वो टाइम से होता है तो वो खुश होता है कि चलो सब टाइमली चल रहा है। और रोहित बिफोर टाइम लिमिट वो ख़त्म कर दिए, तो इट एड्स टू माई प्रॉब्लम्स कि अरे बाकी टाइम को कैसे एडजस्ट करना है। तो रोहित, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू, थोड़ा वी एक्सपेक्टेड समथिंग मोर फ्रॉम यू ऑल्सो एज ए कीनोट स्पीकर। क्या तुम वैल्यू एडिशन दे रहे हो, बट वेट फॉर दैट, वी विल वेट फॉर दैट। हाँ, वी विल वेट फॉर योर नेक्स्ट टर्न अगेन। सो यू नीड टू बी देयर। डोंट थिंक कि अब मेरा काम खत्म हो गया, तो खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। टिल द लास्ट यू हैव सम रोल टू। नाउ फ्रेंड्स, आई थिंक द फर्स्ट स्पीकर वुड बी तरुण। सर्टिफिकेट देने आपके हाथ से दिलवा देते हैं। Mr. Ankit Khandelwal, yes, he is the life member of our Views Exchange. We want to felicitate him. Sorry. आइए। So I think, friends, the first speaker is Tarun, and time allotted to each speaker is around 50 minutes, correct? 45 to 50 minutes. So you can well take your time. And the topic given to him is, friends, notices, how to handle notices in GST. सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है, whenever I get a notice, और कोई भी क्लाइंट बोलता है कि नोटिस आया है। इनफैक्ट क्लाइंट तो जब आते हैं तो क्लाइंट तो बोलते हैं ऑर्डर आया है, कभी बोलते हैं अपील ऑर्डर आया है, कभी बोलते हैं नोटिस आया है, तो कभी बोलते हैं लेटर आया है। तो क्लाइंट को तो पता ही नहीं होता है कि नोटिस क्या है, लेटर क्या है, ऑर्डर क्या है, अपील क्या है, कोई आइडिया ही नहीं है। बट जब भी देखते हैं तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि नोटिस एक्चुअली है क्या, एंड व्हाट इज दिस, ये डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में है ये क्या है।
तो वी नीड टू डिफाइन ना कि ये क्या है। हम लोग किसी को भी देंगे तो क्या देंगे, बोलेंगे तो कि ये पेपर है, ये नोटिस है, ये लेटर है, कुछ तो है, तो क्या है वो सबसे पहले देखने का जरूरत पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट वी शुड इंश्योर व्हाट इज इट एट ऑल ए नोटिस और नॉट फॉर दैट मैटर। तो नोटिस का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, व्हाट एग्जैक्टली नोटिस इज। लॉ में एक कोड प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि भाई नोटिस कौन इशू करेगा, कब इशू करेगा, व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस वो इशू करेगा। इट्स नॉट दैट किसी भी ऑफिसर को या किसी को भी मन हुआ एक नोटिस चलो इशू कर दो, टैक्स पेयर है तो उसको नोटिस इशू कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट ले आओ, ये रिटर्न ले आओ या ये ले आओ। देयर आर वेरियस ओकेजन्स। मान लीजिए कोई लेटर आया, क्लाइंट आता है, सर ये लेटर आया है, 7 दिन के अंदर जना देना है या 3 दिन के अंदर सबमिट करना है, तो प्लीज़ हेल्प। अच्छा 3 दिन के अंदर देना है, क्या देना है? तो बोला नहीं इसमें जो देखिए नोटिस में दिया है कि क्या क्या देना है। एंड यू सी उसमें बोला कि कैश बुक ले आओ, बैंक बुक ले आओ, लेजर ले आओ, जर्नल ले आओ, ये परचेज रजिस्टर ले आओ, सेल्स रजिस्टर ले आओ। तो ऑफिसर के पास जब जाते हैं बोले सर ये क्या मांगा है आपने, तो बोले ये सब जो लिखा हुआ ले आओ। बोले सर ये सब लाने में तो बहुत कुछ है, तो बोले सब चले आसबे, सब चले आसबे, मतलब सब यहाँ आ जाएगा, ले आओ। उसको कोई आइडिया ही नहीं है उस ऑफिसर को, उसको बिजनेस का एक्चुअली एबीसीडी आइडिया नहीं, उसको ये आइडिया नहीं कि ये जो लिखा है सब चले आसबे मतलब एक ट्रक लोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो वो कहाँ रखेगा, कैसे वो हैंडल करेगा, कौन उसको रिसीव करेगा, कोई आइडिया नहीं है, बट वो ले आओ। बोले सर सिटी ते सब नहीं आसून, कंप्यूटर किच्छु थाकबे ना, सब नहीं चले आसून। तो इस तरह का आइडिया है लोगों का, बट वो उस जमाने में जी रहे हैं। आप लोग सीनियर्स कई लोग बैठे हैं, आप लोगों को पहले एक टर्म यूज हुआ करता था लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज। तो वो जो लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज जो शायद अभी मैक्सिमम प्रोफेशनल्स जो प्रैक्टिशनर्स अभी हैं वो लोग उस जमाने में शायद पैदा भी नहीं हुए थे, मतलब अभी तो 20-22 साल 23 साल के प्रोफेशनल्स हैं। तो सामने सिद्धांत बैठा हुआ है, 23 साल का होगा हार्डली। तो वो उसके जन्म से पहले चलता था लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज। लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज में इस तरह की बातें होती थी। तो जो ऑफिसर उस जमाने का है वो आज भी उसी जमाने में जी रहा है कि भाई मैं तो ऑफिसर हूँ, आपको बोला ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, बट इट्स नॉट लाइक दैट। लॉ परमिट नहीं करता है, उनको पता भी नहीं है कि लॉ चेंज हो गया, कितने बार चेंज हो गया लॉ। सेंट्रल एक्साइज लॉ पहले 2000 साल में जब चेंज हुआ, सेंट्रल एक्साइज एक्ट जो उससे पहले का था 1944, उसके जो रूल्स थे 2000 के बाद वो ड्रास्टिकली चेंज हो गए, उसको आइडिया ही नहीं है। उसके बाद सिनवेट क्रेडिट का जमाना आ गया, उसको कोई आइडिया नहीं 2004 में क्या चेंजेस हो गया। फिर 2012 में सर्विस टैक्स में नेगेटिव लिस्ट आ गया, उसको कोई आइडिया नहीं। तो इन द मीन टाइम 2004 और 5 में 5 और 6 में वैट आ गया, उसको कोई आइडिया नहीं है वैट में क्या क्या चेंजेस हो गए। उसके बाद जीएसटी आ गया, और आज के दिन कैसे इवोल्यूशन हुआ है लॉ, किस तरह से उसके पावर्स को कटेल कर दिया गया। आज के दिन उसके पास कोई पावर ही नहीं है एक्चुअली, एक जॉलेस ऑफिसर है, बट स्टिल वो हमको नचा रहा है। तो इस चीज का इसका रियलाइजेशन उनको नहीं पता हो कोई बात नहीं, बट वी आर स्टेक होल्डर्स, हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लुक एट दैट नोटिस कि एग्जैक्टली वो क्या मांग रहा है, कहाँ मांग रहा है, लॉ में क्या ऐसा प्रोविजन है, ऐसा कोई प्रोविजन है क्या उसके पास एट ऑल कि वो कुछ भी मांग ले, न कि बस वो मांगा है और हम तो लेके दौड़ के चले जाएं कि सर आप बोले हैं तो तुरंत सब कुछ छोड़ के। कोई जरूरत नहीं है, हम तो उसकी नौकरी नहीं करते हैं। जमाना एकदम चेंज हो गया है। तो आप देखिए लॉ के अंदर में झांक के, उसके अंदर देयर आर सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोविजंस जहां पे बोला हुआ है कि कब किस सिचुएशन में कोई ऑफिसर आपको एक नोटिस इशू कर सकता है और वो किस हद तक नोटिस इशू कर सकता है, उसका लिमिटेशंस भी साथ में है दिया हुआ। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ही हैज टू फॉलो। कोर्ट्स आर सेइंग टाइम एंड अगेन कि अगर आपको जो लॉ में प्रोसीजर बताया गया वो अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो इट इज अ बैड नोटिस, इट इज नॉट वैलिड एट ऑल। आप अगर उसका जवाब भी नहीं देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बट द ओनली थिंग इज हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, साथ में हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए तरुण का मन हुआ जाके थाना में एक एफआईआर कर देगा मेरे अगेंस्ट में, तो कौन सा सेक्शन में वो एफआईआर करेगा वो भी वही डिसाइड करेगा। और अगर वो 302 में एफआईआर कर देगा तो मेरे को अरेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा लॉ है बोला जाता है। मेरे को मालूम, आई डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज ऑन दैट, बट मैंने सुना है कि बोले तरुण अगर डिसाइड कर लिया कि 302 में एफआईआर किया है तो थाना वाला आके बोलेगा आपको अरेस्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज समवन हैज फाइल्ड एन एफआईआर अंडर सेक्शन 302। कौन सा 302 कौन सा सेक्शन होता है या जो उसके अंदर में किया है, मतलब मर्डर का वो है, तो इसलिए आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। अरे मैं तरुण को शायद जानता भी नहीं होऊंगा, लेकिन पहले तो एक बार अरेस्ट कर लेगा, उसके बाद 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना है, फिर कोर्ट सुनवाई करेगा, मेरे को लॉयर लाना पड़ेगा, उसके बाद मान लीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद मेरा हो सकता है बेल हो जाए। तो सुनवाई तो है हमारे यहाँ, लेकिन देर है ना सुनवाई में। और हम लोग बोलते हैं, लिखा रहता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड का हमारे यहाँ कोई इसके बारे में चिंतन भी नहीं करता है कि जस्टिस डिलेड और मीन्स जस्टिस डिनाइड, इस बात को कोई ध्यान भी नहीं देता है। आप देखिएगा रेवेन्यू ऑफिसर में लिखा हुआ रहता है क्या कि टैक्स कैसे कलेक्ट करना चाहिए, जस्ट लाइक बी फ्रॉम ए बी हाइव, वो फ्रॉम ए, उसको पता भी नहीं चले, और उसको कभी कोई ऑफिसर नहीं पढ़ता है।
एसएससी लोग केवल जाते हैं, पढ़ पढ़ के दुखी होते हैं। ऑफिसर तो कभी देखता ही नहीं है कैसा कुछ लिखा हुआ, उसको मतलब ही नहीं है उस। तो ऐसा ही है हमारे यहाँ। तो इसलिए हमको वो एक लिमिटेशन है कि वो कुछ भी करेगा तो हमको उसका थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतना पड़ेगा, बट स्टिल वी शुड बी अवेयर। अगर आप अवेयर हैं कि व्हाट आर योर राइट्स एंड लिमिटेशंस, सामने वाला ऑफिसर कितना सही है गलत है, उसको एक बार आप एक लाइन बोल देंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा मेरा हिस्ट्री में जाता हूँ कि सेंट्रल एक्साइज में 2000 साल में सेंट्रल एक्साइज लॉ पूरा ड्रास्टिकली चेंज हो गया था, मैंने बताया। तो उससे पहले सेंट्रल एक्साइज में लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी मैन्युफैक्चरर को, उसके बाद चेंज कर दिया, बोला कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन बता दिया, ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ये डिटेल्स देना पड़ेगा, और अगर वो दे दिया तो ठीक है 7 दिन के अंदर, अगर नहीं दिया तो यू आर डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड। ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम जब सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमैंट गए तो बोले सर रजिस्ट्रेशन लेना है, बोला वो लाइसेंस नहीं बिन, बोला ना सर लाइसेंस क्या वो लाइसेंस तो चला गया। तो बोला ताहले क्या बोला सर रजिस्ट्रेशन लेना है। तो बोला वो तो एक ही पेपर। अब सोचिए वो तो एक ही पेपर, मैंने ऐसे कम से कम 100 ऑफिसर को अगर डील किया होगा तो 100 लोगों को मैंने बताया, जैसे ही बोला वो एक ही पेपर, और फिर मैंने 1 मिनट का एक लेक्चर दिया, और मुझे लगता है वो ऑफिसर दोबारा कभी नहीं सोचेगा कि ये लाइसेंस लेने आया है। बट प्यार से ही बोलना है आपको, दोस्ती से ही बोलना है। तो उसको ये समझाना है कि ये आप जिस जमाने की बात करें वो जमाना चला गया कब का। आप नया बुक निकालिए, नया पढ़िए, नया लॉ क्या है वो देखिए, उसके हिसाब से बात कीजिए। तो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। इस नोटिस जो है, ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट है, और हमारे प्रोफेशनल्स के लिए तो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पूरा प्रैक्टिस, अगर हम कोई प्रैक्टिस करते हैं इसमें, या नॉट ओनली एज ए प्रैक्टिशनर, मान लीजिए अगर आप इंडस्ट्री में भी अपनी कोई कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में है और अगर आप जीएसटी संभालते हैं, देखते हैं, हैंडल करते हैं, तो आपको ये एक सब्जेक्ट अगर इसको आप अच्छी तरह समझ लिए कि नोटिस क्या है, नोटिस कैसे हैंडल होगा, क्या क्या इश्यूज है, क्या एस्पेक्ट्स हैं, तो प्रोबेबली योर लाइफ वुड बी मच ईजियर। आपके डीलिंग्स बहुत स्मूथ हो जाएंगे इन एवरी एस्पेक्ट। तो on this subject, I now request Tarun to speak what he has to deliver in what he has in his bag for us. Chairman of the session, CA Arun Agarwal ji, my co-speakers, CA Rohit Surana ji, CA Shivani Shah, organizers, CA Nitesh Moore ji, CA Girdhari Lal Sharma ji, CA Surabhi, Views Exchange, Central Kolkata Study Circle. First of all, I would like to give my sincere thanks to Nitesh ji for giving me this opportunity to share my thoughts on this very important subject, how to reply to notices. We as professionals, like Arun ji has said, it is a part of our core practice area. When clients come to us, they come to us with what they think is a notice. But like Arunji said, it may not be a notice. Because we see that there are various communications that come from the department. The client thinks all of them are notices or orders, but they are actually something else. So we will see in the presentation some of the aspects on what actually is a notice as per law. We will also deal with the subject of why notices are coming. You see, we are just into the almost like 6 years into GST, but we are seeing that so many notices are coming for our clients, for the assessees. So why are these notices coming? In fact, when I started my practice in service tax, central excise, Khalid sir has come. Sir, our chief guest sir has come. Please welcome sir with a big round of applause. We welcome Khalid Anwar sir, IAS Commissioner, Commercial Tax, West Bengal, amongst us. He also holds charge of Director Treasuries and Accounts and Director of Revenue Intelligence and Enforcement. Prior to this, he also held the post of Commissioner of Excise, West Bengal. He is the member of GST Law Committee, IT Grievance Redressal Committee, and the GST Committee. He is the member of GST team, which has been awarded by the Prime Minister for the excellence in the public administration. A notable speaker in GST forum,
which contributes in easing the difficulties faced in day-to-day GST matters by the business and the professionals. We welcome sir with the clapping of hands. Sir का बहुत ही tight schedule रहता है. He has somehow managed the time to come here and address us. We are thankful you for your kind attendance, sir. Now I request Sri Ramesh Jawar to offer flower bouquet to Anwar sir. Our past president, Sri Ramesh Jawar. Now Arun sir, you can take the charge. So we are lucky that Khalid sir is here, and it is a very important topic because notice सर के डिपार्टमेंट से ही आता है जो हम लोग हैंडल करते हैं क्लाइंट की तरफ से. सर ऑन अ सीरियस नोट, मतलब वी आर डीलिंग, इसीलिए फीस भी मिलता है. So sir, we are discussing on a topic on how to reply to notices, and we have just started, and we would I have my presentation which will be almost like 30-35 minutes depending on how much time we have and sir has. Sir, if you want, you can also come in between and as per your schedule, sir. Okay, sir. Thank you, sir. With the kind permission of sir. So, these are the contents of the presentation. So, जैसे हमने बोला starting में, different types of communications from the department. Number 1. Number 2, the issues that we are facing. Characteristics of a notice. What actually is a notice? वो भी अपने discuss करेंगे. Then assessing the legal validity. Then many times we are in this dilemma that whether should we reply to a notice or should we go for a writ petition. So किस केस में क्या applicable है, हम लोग इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे. फिर reply जब हम बनाते हैं तो हमारे reply का content क्या होना चाहिए, that we will see. Some practical points in replying to the notice and answers to some important questions. Now see, these are the different types of communications that we see or that we receive from the department. Dais पे जो बैठे उनको नहीं दिख रहा है. I will just summarize the slide. So one is a letter, just a simple letter from the department. जैसे कि मान लीजिए एक mismatch है आपका 2A और 3B का mismatch. So it is a simple letter. उसमें आपसे वो खाली पूछ रहे कि इसका reason आप बता दीजिए. Number 1. Number 2, we also get system generated emails. जैसे आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, सेक्शन 46 में एक मेल आएगा आपके पास सिस्टम जनरेटेड कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, रिटर्न फाइल करिए. थर्ड है कि मान लीजिए जब ऑडिट हो रहा है, सो वी गेट ऑडिट क्वेरीज. The audit team has some queries, they will issue a letter to you which is an audit query. Then we also have reports. After the audit has got completed, they will issue a draft audit report and a final audit report. So these are reports. Then there is something called an intimation. DRC 01A is an example of an intimation, which is a pre-show cause consultation type of a thing. Then we come to a notice. Now this is the topic for the day. After all these, letter, system generated email, audit query, report, intimation, we come to a notice. So this is what we will discuss in detail, that what is a notice. And then we have an order. So notice के बाद आपका जब hearing हो गया, उसके बाद एक order आ गया. There may be some more types of communications which are coming from the department, but these are the important ones I thought I should highlight. Types of notices. Now from the first slide we come to the second slide कि अब हमारे पास एक notice आया है. अब वो notice कौन कौन से section में issue हो सकता है? Let us see. So section 25 says when we apply for a new registration, so there can be a show cause notice seeking further information. Section 25. Cancellation or suspension of registration. Why your registration should not be cancelled or suspended? Section 29 में उसका एक notice आ सकता है आपके पास. Section 46 I said notice to return defaulters. आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, सिस्टम जनरेटेड एक सेक्शन 46 का ईमेल आपके पास आ जाएगा. सेक्शन 54 में रिफंड रिलेटेड नोटिसेस आ सकते हैं. आपने RFD 01 फाइल किया, आपके पास एक शो कॉज नोटिस आ सकता है. स्क्रूटनी असेसमेंट ASMT 10 सेक्शन 61, यू कैन गेट अ नोटिस. सो देयर आर वेरियस पैरामीटर्स
17, 18, 18, 19 का एक अलग SOP था. अभी जस्ट येस्टरडे 19-20 का भी एक नया सर्कुलर आ गया कि कौन कौन से पैरामीटर्स में स्क्रूटनी असेसमेंट होगा. सो सेक्शन 61. सेक्शन 63, assessment of unregistered persons. One is an unregistered person, he can get a notice under section 63. Inspection of goods in movement, section 68, e-waybill related notices. 73, 74 is the most common section, we all know कि हमारे पास 73, 74 के notices आते हैं. 76 is tax collected but not paid to the government. Anyone who has collected the tax but not paid, section 76 का notice. So these are the various notices that we can get under the GST Act, which I thought I will just highlight in my initial slide. So what are the issues that we all are facing? Now let us see that a notice has come. So what are the issues that as a assessee or as a client or as a professional we are facing? So some of the important issues are that there are lots of data. I will, for each of these points I have got individual slides. Lots of data, we have unending reconciliations to be done, multiplicity of agencies, duplicity of proceedings, limited data that is available with the department, time-taking process and so on. So let us see what are the main issues. The first is lots of data. Now you see, we all are aware of this. We have got GSTR 3B, we have got GSTR 1, 2A, 2B, we have got the e-invoice portal data, we have got 99C, we have third-party data. थर्ड पार्टी डेटा मतलब कि आपके दूसरे, अगर मान लीजिए आपकी माइनिंग डिपार्टमेंट से काम हो रहा है, रॉयल्टी पेमेंट कर रहे हैं, तो माइनिंग डिपार्टमेंट भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ. सो दैट इज थर्ड पार्टी डेटा. अदर गवर्नमेंट डेटा, MCA, इनकम टैक्स, 26AS, हम सब देखते हैं, ये सब आ रहा है. ई-वे बिल, हमारे ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टैक्स कंपेरिजन टेबल. यू सी नाउ द इशू इज दैट ऑन द GST पोर्टल इटसेल्फ द डेटा फॉर अ सर्टेन फिगर डज नॉट मैच. जैसे आई गिव यू एन एग्जाम्पल. इन द केस ऑफ वन ऑफ माई क्लाइंट्स, हम लोग अभी जैसे एमनेस्टी स्कीम, अंशुमा ने जो बताया कि 996 का एमनेस्टी स्कीम चल रहा है, तो हम लोग उसको 996 भरने में हेल्प कर रहे थे. तो हमने जब डेटा डाउनलोड किया तो द टैक्स कंपैरिजन टेबल शोज दैट माई इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर 3B एंड द वन दैट इज अवेलेबल इन 2A ऑलमोस्ट मैचेज. सो दैट वॉज ओके, दोनों जन मैच कर रहे हैं. बट वेन वी डाउनलोडेड द GSTR 9, तो उसमें टेबल 8 में जो आपका फिगर आ रहा है, इसका GSTR 2A का टेबल 8A में जब उसको कंपेयर करते हैं 3B के संग, तो उसमें 3.5 करोड़ का डिफरेंस है. अब आप सोचिए, मतलब अभी तक हम लोग खाली टैक्स कंपैरिजन टेबल के संग काम कर रहे थे, जबकि 2A 3B मैच कर रहा है, लेकिन जब हम लोग 9 भरने गए तब उसमें टेबल 8 में डिफरेंस आ रहा है 3.5 करोड़ का. नाउ द सेम डेटा विच इज कमिंग इन द GST सिस्टम इज डिफरेंट. So what does it mean? It means that now I have to reconcile the entire 3B data with the 2A data. Table 8 डाउनलोड करेंगे हम GST सिस्टम से, पूरा reconcile करेंगे. Now we have no answer to the client कि GST पोर्टल में सेम इंफॉर्मेशन दो जगह पे डिफरेंट कैसे आ रही है. So that is an issue that we are facing. Now anti-evasion से we have received letters where they say कि नहीं, हम 2B नहीं देखते, हम 2A देखेंगे. If you have availed ITC as per 2B, we are not seeing 2A nowadays. कि हमने 2B में हमारा जो आया हमने ले लिया 3B में. But letters are coming from the department that नहीं, हम लोग के पास इंस्ट्रक्शन है 2A देखने का, तो 2A से आपका मिसमैच है. So what does it mean? We have to reconcile. So the issue is, अच्छा इसमें खाली गवर्नमेंट साइड से, डिपार्टमेंट साइड से इशू नहीं है. The issue is also with us. हम लोग 3B का डेटा जो भरते हैं वो 1 से मैच नहीं करता है. फाइनली 990 में जाके हम उसको मैच करवा देते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ. हमारा MCA का डेटा, इनकम टैक्स का डेटा मिसमैच होता है. देयर आर रीजंस फॉर दैट. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज बीइंग डन विद अ अल्टीरियर मोटिव, बट देयर आर रीजंस. बिकॉज GST में हमको एडवांस पे भी GST देना है, हमको कैश पे भी देना है, अक्रूवल पे भी देना है, जबकि इनकम टैक्स में हम खाली अक्रूवल में देते हैं. तो मिसमैच हो गया ना, 26A से मिसमैच हो गया. सो देयर आर रीजंस फॉर दैट. But what I'm trying to say is that the reason for these notices is also because there are multiple data that is floating in the GST system, in my books of accounts, in other third-party data. So ये इतना जो data
फ्लोट कर रहा है सब जगह पे, दैट इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स. एंड व्हाट वी हैव टू बेसिकली डू इज, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, रिकंसिलिएशन. फॉर एवरी point that you receive in the notice, you have to do a reconciliation, and invoice wise reconciliation is what is expected by the departmental officers. कि आपका 3B का डेटा जो है आउटवर्ड सप्लाई अगर हम देखेंगे तो GSTR 1 का डेटा जो है 3B के संग मैच करना चाहिए. अच्छा, एक रिसेंटली वी वर फेसिंग वन ऑडिट इन विच द ऑफिसर सेड कि 3B का आउटवर्ड सप्लाई 1 का आउटवर्ड सप्लाई मैच करिए, रिकंसाइल करिए, 3B को 9 के साथ करिए, 1 को 9 के साथ करिए, मतलब हर डॉक्यूमेंट को हर के संग रिकंसाइल करिए. तो हमने बोला मैडम उनको, ऑफिसर को, कि मैडम আমি एक्सेप्ट করছি আমার 3B ভুল, আমার 1 ভুল, কিন্তু 996 রাইট আছে, বিকজ নাও দ্যাট ইজ রিকনসাইলড উইথ মাই বুকস অফ অ্যাকাউন্টস which is audited. So why do you want me to reconcile 3B with 9 and 1 with 9? So the answer is that even if there is an increase, I want to see why there is an increase. Even if there is a decrease, I want to see why there is a decrease. So you will have to reconcile. So it is basically increasing the work of the taxpayer. Similarly, when we look at input tax credit, 2A 3B reconciliation is very common that we have to do every month. Purchase ledger reconciliation, table 8A reconciliation with my 2A. So lots of reconciliations, total turnover reconciliation 3B 9 9C. मतलब क्या हो रहा है कि हर बार एक नया फॉर्मेट मिल रहा है ऑफिसर से कि इस फॉर्मेट में रिकंसाइल करके दीजिए. सर ये प्रैक्टिकल इश्यूज है, हर बार एक नया फॉर्मेट आ रहा है. अच्छा, हर बार एक नया ऑब्जेक्टिव से रिकंसाइल करना पड़ता है. तो इसका मतलब है कि हर बार हमको नया पूरा डेटा डाउनलोड करें सिस्टम से, उस फॉर्मेट में डालें और रिकंसाइल करें. रिकंसिलेशन इटसेल्फ वी ऑल नो इज़ अ वेरी बिग एक्सरसाइज. और जहाँ पे अगर क्लाइंट के 10,000 डेटा है, 20,000 डेटा है लाइन आइटम, तो मतलब ये एक्सेल भी यहाँ वहाँ भागता है, किसी को कुछ कंट्रोल ही नहीं होता है. फाइनली क्या रिजल्ट आता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. Then we have multiple agencies. मतलब multiple agencies are active on this entire thing for issuing notices. So we have the judicial officers, we have the audit officers, we have intelligence, we have Bureau of Investigation, anti-evasion, SERA. मतलब scrutiny in one of the cases of my client, scrutiny assessment हो गया 61 में, audit हो गया 65 में, अब SERA audit आ रहा है. नाउ सेरा ऑडिट सेज कि अब हम 61 में आपको इशू करेंगे नोटिस. तो मतलब 61 जब हमारा हो गया पहले से, 65 डिपार्टमेंट का ऑडिट भी हो गया, अब सेरा वापस 61 में जाना चाह रहा है. सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम. तो समहाउ वी ट्राई टू रिकंसाइल, कुछ डेटा हमने दिया, कुछ नहीं दिया, मतलब जैसे तैसे करके हमने मैटर को संभाला. बट उनका तो वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये डेटा दीजिए, वो डेटा दीजिए, ये रिकंसिलिएशन, वो, मतलब इट इज़ अ ह्यूज एक्सरसाइज वी हैव टू डू ऑल ओवर अगेन. डुप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स लाइक आई सेड जस्ट नाउ, 61 हो गया, 65 हो गया ऑडिट, उसके बाद वापस 61 करना चाह रहे हैं. सेरा ऑडिट, फिर अच्छा फिर क्या हुआ, सेरा ऑडिट ने जो पॉइंट्स निकाले डिपार्टमेंट बोला हम आबार देखो, तो वो वापस फिर सारा री ऑडिट कर रहा है. मतलब क्योंकि डिपार्टमेंट के ऊपर भी तो वो जा रहे हैं ना कि सेरा ने पॉइंट निकाले, डिपार्टमेंट वाले ने नहीं निकाला, तो अब आप उसको फिर से देखेंगे. तो डिपार्टमेंट भी अब वापस री ऑडिट मोड में चला गया. सो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, मतलब सो डुप्लिसिटी काफ़ी हो रहा है. Now when you receive a ASMT 10 notice from the department under 61, now it will say one line, turnover as per GSTR 1, turnover as per 3B, turnover as per 99C, difference. In some cases, those figures do not match with actually what you have filed. So in a particular case, what we did, that we went to the officer and we asked कि सर इसका ब्रेकअप दे दीजिए हमको, तो हम रिकंसाइल कर दें कि आपके पास क्या डेटा है, हमारे पास क्या डेटा है, हम रिकंसाइल कर देंगे. सो द आंसर इज दैट वी हैव नो डेटा. दिस हैज कम फ्रॉम जीएसटी सिस्टम. आई हैव जस्ट कंपाइल्ड द डेटा इन द फॉर्मेट एंड इश्यूड. सो आपके पास जो डेटा है आप उसी को रिकंसाइल कर दीजिए, ठीक है. सो दैट इज द इशू दैट वी आर फेसिंग, दैट द डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, इनवॉइस वाइज डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट. फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वर्सेस सॉफ्ट कॉपीज, मतलब हर डॉक्यूमेंट का फिजिकल भी दीजिए, सॉफ्ट भी दीजिए. इनफैक्ट जस्ट 3 days बैक आई हैव रिसीव्ड वन नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट कि हमको 3B दीजिए
सर ये CGST का है, हाँ, SGST का नहीं है। इसमें बहुत सारे इश्यूज है, CGST के ज़्यादा है, मतलब SGST के कम है। मतलब 3B भी दीजिए, 1 भी दीजिए, सबका सॉफ्ट कॉपी निकाल के दीजिए। तो हम गए उनके पास, आई सेड कि सर ये सारा डेटा आपके पास सिस्टम में है, मतलब हम अपना लॉगिन ID पासवर्ड आपको देते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए, तो मतलब इट विल बी मच ईजियर ना। तो बोलते ना ना আমাদের তো সিস্টেমে কিছু প্রবলেম আছে, আমরা এটা দেখতে পারছি না, তো আপনারা দিয়ে দিন না। তো ঠিক আছে স্যার দিয়ে দেবো, তাহলে কোন কী দিতে হবে না, সব 3B199 से सब दिए दिन। तो बोला अब सोचिए क्लाइंट के सामने क्या फेस दिखाएंगे, क्लाइंट बोलते हैं कि सारा सिस्टम तो आपके पास खुद के पास है, अब ऑफिसर अगर सिस्टम ही एक्सेस नहीं कर सक रहा है तो वो ऑडिट क्या करेगा मेरा, मतलब सो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वर्सेस सॉफ्ट कॉपीज। Documents available in the system versus requested from the SSC is the same thing. Manual intimation versus intimation in the system. Now you see, show cause notice, DRC 01, उसका order DRC 0, reply DRC 06, DRC 07 order. Still, it is being sent physically. सर ये भी CGST है, हाँ, SGST नहीं है। मतलब अभी ये this is an example of CGST कि on the system it is not uploaded. Hard copy, अच्छा hard copy में भी it does not say it is DRC 01, but it says it's a show cause notice. So the issue is that the modules are available. The GST system has made these modules available, but it is the choice of the officer कि वो यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा जब एक केस में क्या हुआ, हमने जो पॉइंट आउट किया कि अरे ये तो सिस्टम में नहीं, तो वो अपलोड कर दिए कि ठीक है अभी अपलोड कर दीजिए, सो अपलोड हो गया सिस्टम में। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम, मतलब मैनुअल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो ईमेल्स मिस हो जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सारा चीज़ मेरे पास सॉफ्ट में आएगा तो ईमेल्स आएंगे, वो मिस हो जाते हैं। अगर आप सोचते हैं सब हार्ड कॉपी में आएगा तो वो चिट्ठी कभी मिस हो जाता है, क्योंकि एड्रेस कहीं का है, आदमी कहीं बैठा हुआ है। सो ये डुअल सिस्टम इज़ अ प्रॉब्लमेटिक इश्यू। Voluntary payment versus coercive action, we all have faced sometimes for our clients that departmental officers say कि नहीं अभी पेमेंट कर दीजिए। So voluntary payment DRC 03 में दिखा के we are made to pay as a payment that is said by the department. Intimidation versus threat of arrest, this always is there. Some officers are very मतलब थोड़े ज़्यादा vocal होते हैं तो वो ये सब भी करते हैं। No inter-adjustment between CGST, SGST, IGST एंड अमेंडमेंट इन DRC 03। एक बार अब क्या हुआ, ये एक लाइव केस है मेरे पास, एंटी इवेजन का केस था, जोर जबरदस्ती करके 30 करोड़ रुपया जमा करवा दिया SSC का। अब CGST SGST में बोला जमा करिए इसको, ठीक है जमा कर दिया CGST SGST हेड में। अब जब कैलकुलेशन हो रहा है तब उसमें देख रहे हैं कि एक्चुअली कुछ IGST की लायबिलिटी है, तो अब क्या करें, तो ऑफिसर बोलते हैं कि आपने रिफंड दिए नहीं, और मान लीजिए 5 करोड़ रुपये IGST का है, अब 5 करोड़ के पीछे लगे हुए कि 5 करोड़ रुपये जमा करिए। तो मतलब उस टाइम पे जोर जबरदस्ती करके 30 करोड़ जमा करवा दिया, रिकन्सिलेशन भी नहीं करने दिए, और अब जाके हम वो इंटर एडजस्टमेंट भी नहीं कर सक रहे हैं। सो देयर इज़ अ प्रोविजन इन DRC 03 दैट इट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द ऑफिसर। तो हम उनको बोल रहे हैं कि आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए DRC 03 को, और हम आपको एक अंडरटेकिंग देते हैं कि इमीडिएटली हम उसको आपको फिर से रीफाइल कर देंगे, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम एरिया। अब उसके ऊपर एक नोटिस आएगा, 5 करोड़ का जो IGST की लायबिलिटी है उस पर आएगा। DRC 01, DRC 01A के टाइम पे आप जो सबमिशन दे रहे हैं इट इज़ नॉट बीइंग टेकन ऑन रिकॉर्ड। मतलब जब आपका DRC 01A आया, आपने जो भी सबमिशन दिया, कुछ हार्ड कॉपी दिया, कुछ मीटिंग्स में दिया, कुछ ड्यूरिंग देयर विजिट दिया, ये सब जो आपने दिया, नाउ दे आर नॉट बीइंग टेकन ऑन रिकॉर्ड। सो दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी DRC 01A या DRC 01, एंड देन व्हेन यू गो फॉर एजुकेशन और मे बी ऑर्डर के बाद जब आप अपील में जाएंगे, सो देन द क्वेश्चन इज कि आपने उस टाइम पे क्यों नहीं दिखाया। एंड व्हेन यू से कि नहीं सर हमने उस टाइम पे दिखाया था, ये चीज़ हमने सबमिट किया था उस टाइम पे, बट ये इसको रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया, सो यू हैव नो डॉक्यूमेंट्स टू एक्सप्लेन दैट और टू सब्सटेंशिएट कि ये सब चीज़ आपने किया था। स्क्रूटनी असेसमेंट में पर्सनल हियरिंग का ऑप्शन नहीं है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज ASMT 10 आया, हियरिंग होती नहीं है, 11 आपने दिया रिप्लाई, 12 आ जाता है, ये सीधा 73-74 का नोटिस आता है।
And then there are also cases where show cause notices are being issued for cases which have got settled, like ocean freight. Now we know that there is no GST on ocean freight for CIF value, but actually उसके ऊपर भी notices आ रहे हैं, because they say that ये हमारे पास कोई instruction नहीं department से, board से, कि इस पे आप issue मत करिए. So in one of the cases of my client, we have a show cause notice live which is on ocean freight, and that was issued after the Mohit Mineral case had come. Notices are being issued by multiple jurisdictional officers. Anti-evasion DGGI के केस में झारखंड से नोटिस आ रहा है, तेलंगाना से नोटिस आ रहा है, जबकि कोई हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है. वी आर नॉट श्योर वो कहाँ से पिकअप कर रहे हैं केस को, लेकिन वो आ रहा है. इसमें और एक इशू आ रहा है जहाँ SGST ऑफिसर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो वी आर गेटिंग नोटिसेज और लेटर्स इन रीजनल लैंग्वेजेस. मतलब आज अगर हमको भी हिंदी का कोई अगर नोटिस दे पढ़ने के लिए, मेरे लिए भी डिफिकल्ट है समझना, फ्रेंकली, बिकॉज वी हैव ऑलवेज वर्कड इन इंग्लिश. बट वी आर गेटिंग लेटर्स इन गुजराती, वी आर गेटिंग लेटर्स इन हिंदी, इवन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लेटर्स भी हमारे पास आए हैं क्लाइंट्स के पास से. सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम एरिया. Senior officers are being called for statements during investigations, audits. Although in case of companies there is a circular that CFOs, CXOs should not be, CEOs should not be called, but still in case of partnership, proprietorship, वो partners को जाके वो बोलते हैं उनको लेके आइए. And the department is relying more on third party data than the assessee data. मतलब अगर आप अपना data कुछ दे रहे हैं, but अगर third party data available है, so आपका data का कोई value नहीं है. When even if it is a self assessment. So now let us see that कि हमारे पास अब नोटिस आ गया. So then how should we handle? मान लीजिए आपके पास एक नोटिस लेके क्लाइंट आया. So now how should we handle that matter? So सबसे पहला तो है कि देखिए do independent assessment of the client submission. क्लाइंट जो है वो अपना ही खाली बोलते जाएगा, वो पूरा पिक्चर हो सकता है आपको नहीं बताए. So what you should ideally do is you listen to him, you also take his ID password and you do your own assessment. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको भी पोर्टल पे जब आप देखते हैं तो कई कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है कि दिस इज़ हाउ ही इज़ डूइंग हिज बिजनेस, और इसको पहले भी नोटिस आ चुके हैं, नहीं आए हैं, यू नो, ही इज़ गिविंग यू द हाफ इन्फॉर्मेशन. सो यू शुड डू योर इंडिपेंडेंट असेसमेंट, बिकॉज फाइनली यू विल हैव टू फेस द ऑफिसर. तो अगर ऑफिसर आपको कुछ बताता है SSC के बारे में जो आपको नहीं पता है, तो फिर देन इट इज़ अ लॉस ऑफ फेस फॉर यू. सो यू डू योर इंडिपेंडेंट असेसमेंट. जतिन क्रिस्टोफर साहब हमेशा एक वर्ड बोलते हैं, क्वेश्चन द क्वेश्चन इन द नोटिस. क्वेश्चन द क्वेश्चन मतलब कि अगर नोटिस में कुछ लिखा हुआ है तो यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन दैट कि वेदर द ऑफिसर इज सेइंग राइट, रॉन्ग, वेदर ही हैज़ द पावर टू क्वेश्चन दैट. सो हम लोग के जनरली एक मोड होता है कि क्वेश्चन आया आंसर लिखना स्टार्ट. एग्जाम में जैसे होता है ना, मतलब क्वेश्चन पेपर मिला, एग्जाम लिखने हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं, यू शुड ऑलवेज सी दैट वेदर द क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग. थर्ड पॉइंट इज रिप्लाई वर्सेस रिट. इस पर एक अलग स्लाइड है मेरा, तो इसको हम लोग एक बार स्किप करते हैं. पेमेंट वर्सेस लिटिगेशन. आई ऑलवेज टेल द क्लाइंट दैट यू डू योर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ पेमेंट वर्सेस लिटिगेशन. अगर पॉइंट आपका गलत है, अगर आपने रियली कॉन्ट्रवेंशन किया है एक्ट का और लाइबिलिटी बनती है, तो यू शुड पे. इस पॉइंट पर लड़ के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज फाइनली ट्रूथ विल प्रिवेल. आप इसको प्रूव नहीं कर सकेंगे कि आपको ये लाइबिलिटी नहीं थी, तो यू पे. जितना जल्दी पेमेंट करेंगे उतना कम इंटरेस्ट आपका लगेगा, और ऑब्वियसली पेनल्टी का जो रिलीफ है वो आपको स्टेज में मिल सकता है. जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जहाँ लॉ पॉइंट है एंड देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज या जजमेंट्स, सो देन यू कैन टेक अ कॉल दैट वेदर यू वांट टू गो फॉर लिटिगेशन. स्टडी केस लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट. आज के दिन में हमारे पास बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे. सो यू एज ए प्रोफेशनल यू शुड डू योर केस स्टडी कि इस पॉइंट पे कुछ केस लॉज है, नहीं है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, डिपार्टमेंट का क्या व्यू है, SSC का क्या व्यू है. यू शुड डू योर ओन स्टडी. इन्फ्लुएंस ऑफ एलाइड लॉज. आज के दिन में देखिए GST इज अ बिजनेस लॉ, इट इज़ नॉट ओनली अ टैक्स लॉ. सो यू हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस एक्ट्स इन GST. सो वो दूसरे एक्ट्स का भी आप इन्फ्लुएंस जो है उसको आप ज़रूर चेक करिए. देन देयर आर आर्टिकल्स, राइटअप्स. आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. एक अभी LUT का केस आया था मेरे पास. तो LUT के केस में देयर इज़ अ सर्कुलर, पिछला सर्कुलर है कि अगर इफ देयर इज़ अ डिले
in the filing of the LUT, then the officer is empowered to take a sympathetic view and give benefit of doubt to the assessee. So that is a beneficial circular. वो मेरे को कहाँ से पता चला? If because I read some articles and all on the internet. तो अगर आप थोड़ा सा research करेंगे, you may get a notification or a circular which is beneficial to the client and which you can quote in your notice, in the reply to the notice. Check the portal, which I have said, and discuss with fellow professionals. You see, there is no harm in taking a second opinion, especially if you are going for a law point. You can always take the second opinion of an advocate or of a senior professional. मतलब ऐसा मत सोचिए कि क्लाइंट क्या सोचेगा कि हम नहीं बता सक रहे, आप किसी और के पास लेके गए, वो ऐसा नहीं है. मतलब यू कैन ऑलवेज टेक अ सेकेंड ओपिनियन बिकॉज इट इज ऑल इन द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट. सो नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नोटिस. जो हम लोग बोलते हैं कि एक नोटिस होना चाहिए, सो नोटिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट शुड बी इश्यूड अंडर अ स्पेसिफिक सेक्शन विच वी हैव डिस्कस्ड. इट शुड बी इश्यूड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट. ASMT 10 होगा, DRC 01 होगा, फॉर्मेट में आना चाहिए. इट शुड हैव अ डिन. अब तो सर ने स्टेट GST में भी डिन कंपलसरी कर दिया है, तो सेंट्रल GST में ऑलरेडी डिन था, तो डिन होना चाहिए आपका. बोथ सेंट्रल GST और स्टेट GST में डिन नंबर होना चाहिए नोटिस पे. इट शुड बी आइडियली बी अपलोडेड ऑन द GST पोर्टल. It should have all the RUDs. This is a problem that we face many a times. वो RUDs हमको नहीं देते. RUD is a relied upon document. मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट पे रिलाई करके डिपार्टमेंट ने शोकॉज इशू किया है, all those are given as a part of the notice. So those are many a times not supplied or properly uploaded on the website. खाली first page, second page upload हो जाता है, बाकी नहीं होता है. So we really don't know that what is the document on which the department has relied. So उसका अगर कॉपी आप को नहीं मिल रहा है, तो यू कैन टेक अ कॉपी फ्रॉम द ऑफिसर. नोटिस हैज टू बी प्रॉपर्ली सर्व्ड टू द टैक्स पेयर. सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर सो मेनी केस लॉज विच हैज सेड दैट सर्विस अगर प्रॉपर नहीं है, तो देन द नोटिस के बाद जो ऑर्डर होगा, सो देन दैट इज नॉट लीगली वैलिड. Now service can be done either if it is uploaded on the portal, because that has been taken as a legal valid service. If the notice is not uploaded on the portal, then it should be served to the registered address of the taxpayer. It should have a specific timeline for reply, which is generally 30 days in the case of 73-74 notices. लेकिन timeline होना चाहिए. There should be an opportunity of hearing. This is one of the fundamental powers of an assessee. Section 75 में भी बोला गया है that personal hearing is a must in case of any notice. It will be adjudicated by an officer and then it will be followed by an order. So how do we assess whether the notice is a legal notice or not? You should check the specific section. कौन से section में आया? I will give you one example. एक बार एक email आया. प्लीज़, जैसे अरुण भैया ने बोला ना, प्लीज़ गिव अस कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्लीज़ गिव अस कॉपीज ऑफ परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, सारा डॉक्यूमेंट मतलब उसमें लिखा हुआ है. आई टोल्ड टू द क्लाइंट कि ऐसा करते हैं, एक बार रिप्लाई करते हैं ऑफिसर को कि सर कौन से सेक्शन में आप ये पूछ रहे हैं हमसे. आप 61 करना चाह रहे हैं स्क्रूटनी असेसमेंट, 65 करना चाह रहे हैं ऑडिट, या कौन से सेक्शन में आपने ये ईमेल इशू किया है, सो दैट आई ऑल्सो नो माई राइट्स, कि मेरे क्या राइट्स है एज ए इंडिविजुअल. हमने रिप्लाई कर दिया ऑफिसर को. उल्टा एक धमकी भरा और रिप्लाई वहाँ से ऑफिसर के वहाँ से आया, सर ये SGST का है, सर ये केस SGST का केस है. वहाँ से धमकी भरा रिप्लाई आया कि जब हम आपसे मांग रहे हैं कोई चीज़ तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं, और आप हमसे क्यों पावर पूछ रहे हैं. ऐसे करके धमकी वाला चिट्ठी आया, रिप्लाई, और क्लाइंट तो देख के डर गया, वो उल्टा मेरे पर चढ़ गया, कह रहे हम तो बोले थे ये सब क्या लिखने का दरकार है, अब आप देखिए लिखवा दिए, अब उल्टा आ गया, अब जो देना दे दीजिए आप. तो ठीक है भाई, क्लाइंट का केस है, तो हम लोग फिर दे दिए सारा चीज़. तो मतलब बट मेनी टाइम्स क्या है कि वो सेक्शन ही नहीं लिखते हैं कि कौन से सेक्शन में वो इशू हो रहा है. प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इट शुड नॉट बी टाइम बार्ड. टाइम बार्ड इज इंपॉर्टेंट. अंशुमा ने दिखाया आप लोग को कि अभी टाइम एक्सटेंड हुआ है, बट टाइम बारिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन सर्विस टैक्स एक्साइज केसेस वी हैव सीन दैट वो करंट ईयर का ऐड करते करते पिछले साल का भी ऐड कर देते हैं और करके एक बड़ा सा नोटिस कर देते हैं. तो यू हैव टू टेक द प्ली दैट ये वाला पोर्शन टाइम बार्ड है, ये वाला पोर्शन टाइम बार्ड नहीं है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए.
द प्रोसीजर इज प्रिस्क्राइब शुड बी फॉलोड। अरुण भाई ने बताया कि प्रोसीजर जो है लॉ में दैट शुड बी फॉलोड फॉर इशूइंग ऑफ अ नोटिस। इफ इट इज नॉट फॉलोड देन इट इज नॉट अ लीगल नोटिस। इट शुड बी साइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। वी नो द कैन इन इंडिया केस जहाँ पे द प्रॉपर ऑफिसर डिफाइन किया गया है कि द ऑफिसर हु इज एम्पावर्ड अंडर द एक्ट इज द प्रॉपर ऑफिसर। कोई भी ऑफिसर इशू नहीं कर सकता है। द प्रॉपर ऑफिसर जो है he should be the person issuing the notice. All RUDs should be attached. The time for making the reply is mentioned and किसको हमको reply देना है, मतलब I should be making the reply to whom should be mentioned in the notice. Now writ versus reply is a very big question, big dilemma that we all face when we have to advise to our clients. So देखिए generally क्या है that we should go for a reply. Because the honorable courts have seldom entertained writ petitions where there is alternate remedy available. मतलब आप हर चीज़ के लिए हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं. So you should go as per the procedure laid down in the GST Act. But if you are meeting any of these 4 conditions, so then you can go for a writ petition, which is basically if any fundamental right has been violated. मतलब मान लीजिए ऐसा भी केसेस हुआ है कि रात को अपलोड हुआ है नोटिस और सुबह ऑर्डर अपलोड हो गया। मतलब अभी रिसेंटली केस आया था कि खाली 13 घंटा मिला एसएससी को रिप्लाई करने के लिए, पर्सनल हियरिंग नहीं दिया गया आपको। सो इन सच केसेस योर फंडामेंटल राइट इज गेटिंग वायलेटेड, यू कैन गो अंडर अ रिट पिटिशन। देन नेचुरल जस्टिस का वायलेशन, देयर आर वेरियस पॉइंट्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो आप अगर आपके वायलेट हुए तो आप जा सकते हैं। एनी ऑर्डर और प्रोसीडिंग इज होल्डली विदाउट जुरिसडिक्शन, मतलब कि आपका मान लीजिए वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन है और आपको राजस्थान से ऑर्डर इशू हो रहा है, आपको कोई लेना देना ही नहीं है वहाँ से, सो देन यू हैव टू गो टू द हाई कोर्ट। और द वायलेंस ऑफ द एक्ट हैज़ टू बी चैलेंज। अगर आपको कोई सेक्शन या रूल को चैलेंज करना है तो देन यू शुड गो टू द हाई कोर्ट। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग वेदर यू शुड गो फॉर अ रिप्लाई टू द नोटिस और वेदर यू कैन गो फॉर अ रिट पिटिशन। दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डेल्ट बाई अंशुमा कि जो टाइम अभी ऑर्डर के लिए और नोटिस के लिए एक्सटेंड किया गया है। सो आई हैव ट्राइड टू कैप्चर ऑल द डेट्स इन दिस स्लाइड। नाउ व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ रिप्लाई? सो रिप्लाई का कंटेंट्स क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप देखिए कि कितना डिमांड आप एडमिट कर रहे हैं। जो डिमांड आपने एडमिट कर लिया उसका पेमेंट कर दीजिए, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, और उसको DRC 03 रिप्लाई में लगाइएगा। सो दैट शोज योर बोना फाइडी कि यू आर नॉट अननेसेसरी लिटिगेट असेसी, यू आर एडमिटिंग द डिमांड विच इज एक्चुअली करेक्ट। सो जो एडमिट आप कर रहे हैं उसको आप मान लीजिए, जो आप एडमिट नहीं कर रहे हैं उस पर आप लिटिगेट कर सकते हैं। देन मेक अ फैक्ट वाइज रिप्लाई, पॉइंट वाइज रिप्लाई। हाँ, बिकॉज अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे इस स्टेज में तो नेक्स्ट स्टेज में हो सकता है यू विल मिस द बस। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, copies that you want to rely on, you should attach in your contents in the reply. I have just 5 minutes more, so I'm just trying to then make use of the 5 minutes. Submission of a reply, देखिए submission of a reply में क्या सबसे important क्या है? जो reply आप दे रहे हैं ना उसका ठीक से पैरा नंबरिंग करिए, रेफरेंसिंग करिए, एनेक्शन नंबरिंग, पेज नंबरिंग अच्छा से सिलाई करके, मतलब इट शुड बी ए प्रेजेंटेबल डॉक्यूमेंट, एंड देन यू अपलोड ऑन द वेबसाइट, एंड मे बी यू विल हैव टू सबमिट अ हार्ड कॉपी ऑल्सो, एंड यू विल यूज दैट ऑल्सो इन योर पर्सनल हियरिंग। सो उसका डॉक्यूमेंट रेफरेंसिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू से। एंड GST सिस्टम में क्या है, यू कैन ओनली अपलोड PDF फाइल्स, आई थिंक PDF एंड JPG, बट एक्चुअली रिकन्सिलिएशन तो आप एक्सेल में करेंगे। सो नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम एरिया दैट यू कांट अपलोड एक्सेल फाइल्स। इफ द ऑफिसर वांट्स टू चेक, he or she will have great difficulty in seeing the reconciliation. So you can offer in the hearing that I can also send you the Excel file, which is the base file. So I think that will be okay. कुछ छूट गया 5 मिनट में। What if something is left out? मान लीजिए कि आपने रिप्लाई जमा कर दिया, फिर लगा अरे ये तो छूट ही गया,
तो वो क्या कर सकते हैं, तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, यू हैव टाइम, यू हैव चांस, आप उसको ऐड रिप्लाई में जाके कर सकते हैं, यू कैन ऐड अ रिप्लाई, यू कैन हियरिंग के टाइम पे आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। हियरिंग में आप ऑफिसर से मांग सकते हैं टाइम, मान लीजिए 1 हफ्ता 10 दिन कि हम कुछ और सबमिट करना चाहते हैं तो हमको सबमिट करने का टाइम दिया जाए। उसके बाद आपको अगर वो नया डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करने के लिए हियरिंग चाहिए, उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो ऑर्डर के पहले आप खाली जमा कर दीजिए। बिफोर द ऑर्डर इज इश्यूड द सिस्टम विल इनेबल यू टू ऐड अ रिप्लाई and you can always submit a physical copy of the reply with the officer. So at least your reply should be taken on record. So you have a chance to submit what is left out. Hearing के time पे, now let us some tips for hearing. सबसे important hearing, सब tip. अभी recently I had to appear in the case of my client. 200 करोड़ का मैटर था और मेरी इतनी तैयारी थी कि मेरे को लगा 2 घंटा भी कम है मेरे लिए, अगर मेरे को 2 घंटा भी मिल जाए तो वो भी कम है। लेकिन हुआ कुछ, क्या हुआ, जैसे ही हम गए 15 मिनट भी नहीं मिला मेरे को। भाई बिकॉज ऑफिसर हैड रेड, वो पढ़ के रखे थे, ही वॉज, उन्होंने बोला मैंने पढ़ लिया आपका फाइल और ये सब पॉइंट्स ठीक है। तो जहाँ मेरी तैयारी 2 घंटे की थी उन्होंने 15 मिनट में सल्टा दिया। अब वो 2 घंटे को मेरे को स्क्वीज़ करना पड़ा 15 मिनट में। So as a professional, I will suggest that you prepare yourself for 15 minutes, 30 minutes, 1 hour. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने 15 मिनट में सल्टा दिया, ऑफिसर के पास टाइम है, वो बोलता है अच्छा और बोलिए, तो बोलता है अच्छा, तो फिर आप वापस शुरू करते हैं। नहीं सर एक्चुअली ऐसा था वैसा था, तो मतलब रिपीटेशन हो रहा है ना, बिकॉज इट मीन्स द ऑफिसर इज नॉट कन्विंस्ड, बट ही विल नॉट टेल यू कि कौन से पॉइंट पे आपको बोलना है, तो आप वापस ही शुरू करते हैं, रिपीटेशन हो रहा है। तो यू प्रिपेयर योर सेल्फ और पूछ लीजिए सर से कि सर आपके पास कितना टाइम है, मतलब हाउ मच टाइम डू आई हैव, तो ही विल से 30 मिनट्स। तो ठीक है सर 30 मिनट का आपके पास चालू है, उसको चालू कर दीजिए 30 मिनट का। सो द प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग व्हेन आई वाज इन PwC हम लोग को ये सिखाया गया था कि मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन बना के लेके गए CEO के लिए, और आप जैसे ही रूम में घुसे CEO के पास फ़ोन आ गया और वो आपको बोले हो आप आ गए, बोले सर अभी तो बुलाए थे, बोला अच्छा मेरा तो मीटिंग आ गया, तो क्या करें, तो हमको तो मीटिंग में जाना है। अच्छा तो सर 2 मिनट, 2 मिनट चलिए, तो 2 मिनट मतलब वो चलते चलते लिफ्ट में संग में उतर रहे हैं आप और गाड़ी में जब तक बैठ रहे हैं वो 2 मिनट है आपके पास। तो 2 मिनट का प्रेजेंटेशन लोग बनाते थे PwC में। 2 मिनट प्रेजेंटेशन हम लोग को बोला जाता था कि वो 2 मिनट में आपको सब चीज़ कंप्लीट करके CEO को बता देना है, तो ही विल गेट इंटरेस्टेड। तो वो बोलेगा गाड़ी में बैठ अच्छा ठीक है तो कम टुमारो, ठीक है, तो हो गया ना आपका काम, अब कल का अपॉइंटमेंट मिल गया, कल आप बोलिए 2 घंटा। तो वो जो है दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मतलब यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर हियरिंग बेसिकली। एंड फ्लैगिंग करके जाइए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है, वो पर्ची लगा के जाइए, इधर उधर जो है आपको दिखाना है, तो मतलब उनके सामने इट शुड नॉट बी अनटाइडी बेसिकली। केस लॉज, सो व्हाट यू शुड डू इज ऑलवेज कि एक नोट फॉर हियरिंग बना के लेके जाइए। आई हैव ऑलवेज डन दैट, क्योंकि रिप्लाई में हम लोग इतना कुछ लिखते हैं लेकिन बोलना तो हम लोग को वो 2 पॉइंट पे ही है ना खाली, जिस पे आपको रियली दुख हो रहा है। तो वो जो दुख के जो 2 पॉइंट है ना वो आप अच्छा से बना के लेके जाइए, नोट फॉर हियरिंग बनाइए, उसके केस लॉज लगाइए, रेफरेंसिंग करिए। और केस लॉ में भी 50 पेज के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, आप बोलते हैं कि जजमेंट में ये लिखा हुआ है, अब थी ना ऑफिस से बैठ के पढ़ेंगे उसको 50 पेज को, आप पैरा नंबर बताइए कि इस जजमेंट का इस पैरा नंबर में ये लिखा है और वो हाईलाइट कर दीजिए और ये इस पेज पे, तो जैसे ही ऑफिसर वो देखेंगे बोलेंगे हाँ ये चीज़ है। तो मतलब यू हैव टू बेसिकली फोकस करना पड़ेगा आपको रिप्लाई में भी और केस लॉज में, आपके नोट्स में। पोस्ट हियरिंग भी काफ़ी कुछ होता है, वे यू हैव टू गिव सॉफ्ट कॉपीज एंड ऑल, वो सब भी आप लोग करिए। Some answers to important questions. Now I will leave this presentation with the organizers. You will, मैंने यहाँ पे कुछ questions के answers दिए with case reference. हाँ, मतलब so it will help you that. Let me take maybe one. There are 3 slides, maybe one from each slide. Can arrest be made even when adjudication is not complete? Notice आया है, arrest हो गया client मान लीजिए या, तो is it possible? The answer is yes. It can be done. There is a case for that. Can adjudication be done without considering the reply to show cause notice? आपने reply दिया, consider नहीं हुआ, can adjudication be done? Answer is no. Can a notice be declared void
by the court when alternate remedy is available, held yes. मतलब जो अपने writ versus जो अपने देख रहे थे, writ versus reply. Is it mandatory for the issuance of a notice in a particular format? Answer is yes. Format is very important, process is very important, otherwise it is void. I think you can read all of them. और भी है. Last में लेते हैं एक in case two interpretations are available, can the one which is more favorable to the taxpayer be resorted to? The answer is yes. जो आपके beneficial में आप उसको ले सकते हैं. इसका भी एक case law है. So this was my presentation. I had to rush through the last slides. Sorry for that. But sir is here. I think we will like to hear more from sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Tarun, for your lucid deliberation on the topic, widely covering various aspects in a very brief time. You ready? Friends, what we can do is we will get our publication released by sir, but before that is made ready, we can take 2-3 questions in the meantime for Tarun. So any issues on notice related, whatever the topic he has deliberated upon, if you have any issue, any question, you can please raise your hand and introduce yourself and raise your question. Sir, आप please थोड़ा सा अपना introduction देख, मतलब अपना नाम at least बोल के उसके बाद. Myself संतोष अग्रवाल CA चंडीगढ़. My client का क्या है कि वो रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन से मंगाते हैं, जैसे दिल्ली से कलकत्ता उनका बाय रेल से ट्रांसपोर्टेशन से आता है. अब डिपार्टमेंट वाले क्या बोलते हैं कि आपको इनपुट 5% मिलेगा, लेकिन आप जो पार्टी से चार्ज करेंगे वो 18% करना पड़ेगा, क्योंकि आप जीटीए नहीं है. ठीक, हमारा तो रेलवे से आता है, रेलवे 5% चार्ज कर रहा है, हम भी 5% चार्ज करें. सर प्लीज जो टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा था उसी टॉपिक पे क्वेश्चन करिए. अदर कोई क्वेश्चन अगर होगा तो लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे लेने का, बट अभी जैसे नोटिस से रिलेटेड जो डिस्कशन हुआ उसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएंगे. प्लीज हाँ, प्लीज रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द टॉपिक. उसमें हम लोग लोकेट नहीं कर पा रहे कि वो जो डिफरेंस है वो कौन से मंथ का है. तो हम लोग को इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करना होगा? अगर पेमेंट आता है उसमें तो इंटरेस्ट कौन से मंथ से कैलकुलेट होगा या कौन से दिन से कैलकुलेट होगा? इफ़ यू आर अनेबल टू लोकेट फ्रॉम फॉर विच मंथ द डिफरेंस इज. देखिए इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले आपको रिकन्सिलिएशन करना पड़ेगा पूरा 2A 3B का. आपका परचेज लेजर और 2B या 2A के संग आप पूरा रिकन्सिलिएशन करिए, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे डिफरेंस है उस महीने का. एंड लेट अस अज्यूम इट इज एन एडमिटेड लायबिलिटी, आपको पता है कि गलत हुआ है मान लीजिए, तो इट विल बी इजी फॉर यू. ये पहला ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा महीना का एक्चुअली ये डिफरेंस है, सो यू कैन आइदर गो टू द ऑफिसर एंड आस्क हिम कि सर आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन आप बता दीजिए कौन से महीने का, आई विल पे द इंटरेस्ट. दैट इज द सेकेंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन है यू टेक द एसएससी साइड. आप मार्च को सोच के चलिए और मार्च के हिसाब से कैलकुलेट कर दीजिए. अगर इफ द ऑफिसर वांट्स यू टू पे मोर ही विल टेल यू, अदरवाइज आप निकल गए. ओके, थैंक यू. Financial year 18-19. Okay, now I'll just have a different viewpoint. You said that the difference is persisting on account of the difference between 2A ITC availed in 3B versus 2A. Yeah. Now, if you look at this so-called celebrated circular which was issued 183/15, therein the authorities have gone on to say that 2A was never existing before a point in time, and 36(4) for the first time ever was implemented only on the 9th of October 2019. So if I was you, I would take this viewpoint that any difference which is existing between 2A and 3B, no demand can be made on that ground, not at least for the financial year 17-18 and also for 18-19. And I would not go into any invoice level reconciliation. I mean, that's just a very litigative point of view, but we've been doing that, and
been fairly successful in getting our cases cleared. साहब सर तरुण ने तो इतना कुछ बोला कि मैं सोच रहा था कि क्या कर रहा है कि कहीं पे मुझे नहीं समझ में आ रही थी बात कि इतना तरुण ने अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन काफ़ी डिटेल में बताया आप लोगों को। पता नहीं कितने के दिमाग में कितनी बातें रहेंगी, और इतना अगर मेहनत करना है बिजनेस करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए तो बड़ी बहुत डिफिकल्ट बात है, जितना उसने बोला। अभी आपने जो सवाल किया और जो शिवानी ने जवाब दिया, आप तैयार रहो फिर लिटिगेशन में जाने के लिए, बिकॉज द डिपार्टमेंट छोड़ेगा नहीं आपको और शिवानी आपको बचा नहीं पाएगी। तो आप ऐसा प्रैक्टिकल बनो यार। देखो, उससे पहले किसी ने पूछा इंटरेस्ट के बारे में, तरुण ने 3-4 कंडीशंस लगा दिए। अब आप अपने बिजनेस करते हो, तुम्ही को नहीं पता यार कब हमने खरीदा था, कब हमने किस महीने में, नहीं कर पाए, नहीं बता पा रहे हो, आप खुद नहीं बता पा रहे हो। तरुण ने सलाह दिया कि आप चले जाओ ऑफिसर के पास। अब बताओ यार क्या मजाक है, आप खुद बिजनेस करते हो, आपको खुद नहीं पता कहाँ है। शिवानी कह रही है कि कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अरे था नहीं, ठीक है, नहीं था, खाता तो आपका है ना, बुक्स तो आपका था ना, आईटीसी तो आपने लिया ना, परचेज बिल्स तो आपके पास है ना, तो मिलाओ ना, क्यों डिफरेंस है, क्यों है डिफरेंस? यू टेल मी। बी इफ यू आर अ honest taxpayer, then do it. What is the problem? अगर सुन लो, again we have also said that in case 17, 18, even for 18, 19 we have said कि भाई ठीक है, you get a certificate from a chartered accountant, ये भी तो बोल दिया। We have said this for any differences that may arise. So we have taken a very practical view. अब ये तो हो नहीं सकता आपने खरीदा है किसी महाराष्ट्र के टैक्स पेयर से, अब वो महाराष्ट्र वाले ने अगर GSTR 1 में नहीं डाला, आपके 2A में नहीं आया, आपने आईटीसी ले, बिल्कुल ठीक है, लेना ही था, उस वक्त तो नहीं था। इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने क्या बोला लॉ कमेटी में, बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है, आपको नोटिस आ जाती है या कुछ भी आ जाता है, ऑडिट में आप आ जाते हो, यू डू वन थिंग, आस्क योर सप्लायर की। मैंने तो और भी अच्छा कर दिया, आई वॉज अगेंस्ट दिस ऑल्सो। मैंने तो बोला कि आप अपने सप्लायर से एक सर्टिफिकेट ले आके दे, और इससे ज्यादा क्या कर सकते थे, और इससे ज्यादा क्या कर सकते थे? लॉ कमेटी ने बोला कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्टिफिकेट ले आओ, सप्लायर को बोलो कि सप्लायर एंड से अपना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सर्टिफिकेट दे देगा, एंड यू कम विद दैट। हमने तो अपने यहाँ वो भी खत्म कर दिया। अब बताओ इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? एक चीज है, एज अ प्रैक्टिशनर प्लीज बी प्रैक्टिकल। खाली ये अप्रोच नहीं कि डिपार्टमेंट के साथ खाली हमको ये करना है कि झगड़ा करना है और डिपार्टमेंट हमेशा गलत सोचता है, गलत करता है, ये सोच करके अगर प्रैक्टिस करनी है तो बहुत डिफिकल्ट बात है भाई। बी वेरी प्रैक्टिकल, आई एम टेलिंग यू। गलत उधर भी हैं बैठे हुए गलत लोग इधर भी बैठे हुए। आपको देश को आगे बढ़ाना है तो हमें देखना है एज एन ऑफिसर, एज अ प्रैक्टिशनर, यू ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले इन नेशन बिल्डिंग। इट इज नॉट लाइक दैट that you take an approach that you did not do anything. This is very wrong approach. Tell him that what is correct and what is wrong. And wherever you find that the client has done something wrong, what Tarun said, I agree. Please tell him, go and pay. Why litigate? मेरे पास तो लोग आते हैं, कल किसी ने मुझे बोला कि सर मेरा ITC ब्लॉक्ड है, 1 साल हो गया, अभी तक ऑफिसर ने नहीं खोला। हमने बोला अच्छा, हम बोला मेल करो। मेल किया, 5 मिनट बाद उसका फोन आता है, सर खोल दिया। हम बोला कैसे हो गया? कैसे हो गया? समझ में आती है बात, क्यों हो गया? Why I am there? Why the commissioner is there? If I don't have any authority over my officers, then why I am sitting on this chair? मेरे पास लोग आते रहते हैं, मैं जानता भी नहीं, हर वक्त अरुण जी नहीं आते, तरुण नहीं आता, कोई भी बंदा चला आता है, मैं देखता हूं प्रॉब्लम जेन्युइन है, मैं फोन उठाता हूं, आई गेट द वर्क डन विद इन सेकेंड्स, आई डोंट वेस्ट टाइम। कल करना वो सब मत बोलो, मगर जेन्युइन केस, गलत केस लेकर मेरे पास मत आना। गलत केस लेकर आओगे तो फिर तो आई विल सी टू इट दैट तुम्हारे अगेंस्ट में और अच्छे से एक्शन। जेन्युइन केस होगा
please come to me. I'm ready to help you. But don't come with any wrong case. I don't support all this. And again, I'm reiterating what I said, that you, me, all of us have a very, very great role to play for the country, for the state. So we should stick to that and follow that principle. Otherwise, हम फिर कहाँ जाएंगे? पीछे जाना है हमको तो आगे बढ़ना है. तो सब मिलकर चलेंगे तभी ना बढ़ेंगे. ऐसा थोड़ी होता है. सब होते हैं, क्यों नहीं होंगे? देखिए, आपको बात वो नहीं है कि क्या है. अगर मेरी नीयत साफ है, मैं चाहता हूं कि भाई हम सब आगे बढ़ें, तो करना है. क्यों नहीं करना है? आई डोंट एग्री. उसने बोला ना कि किसी ऑफिसर ने विदाउट एनी सेक्शन के रेफरेंस के ही मेड अ ईमेल टू यू, गिव मी द नेम ऑफ दैट ऑफिसर एंड शो मी दैट मेल. उसको देखो मैं क्या करता हूं. ही विल गेट अ लेसन ऑफ हिज लाइफ. नेवर ही विल डू इट. हाउ कैन ही? मैं yesterday, na day before yesterday, I was having a meeting with my officers. I told them frankly that you don't do all these things. अभी चल रहा है ना वो कैंसिलेशन ड्राइव, तो वहां पर था कि भाई हम लोगों ने एक तो जीएसटीएन ने निकाल कर दिया है किसका है, फिर एक है कि भाई आप अपने ओन जनरेशन से कितना किया है. तो सम ऑफ माय स्मार्ट ऑफिसर्स आर आल्सो देयर. तो वो मुझे दिखाने के लिए, टू इम्प्रेस मी, ओन जनरेशन का फिगर डाल दिया दादा. हमने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, इतना काम किया है. कुछ ऑफिसर ने, हमने बोला चलो अब सारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो तुमने किया मुझे भेज दो. नाउ ही लैंडेड इन अ सूप बिकॉज इंस्पेक्शन किया था मई से पहले का और डाल दिया था मुझे इंप्रेस करने के लिए. हमने बोला अब इंस्पेक्शन अब क्या? बोला सर आई एम वेरी सॉरी. हम बोला व्हाई आर यू डूइंग? यू थिंक आई एम अ फूल सिटिंग ओवर हियर? I know what you people can do. इतना चालाक मत बनो. तो देखिए आपको क्या है, आप कैसे हो अगर आप जानते हो तो ऑफिसर्स विल आल्सो बिहेव इन दैट मैनर. इफ यू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, आई डोंट थिंक यू विल फेस ट्रबल. हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम विथ माय एसजीएसटी ऑफिसर्स? 1-2 रेयर केसेस, दैट इज ठीक है. कुछ नहीं जानते हैं ऐसे लोग होंगे, हर तरफ है. सभी लोग सब कुछ जानते हैं ऐसा मैं बोल दूं तो गलत है. मैं सब जानता हूं अगर बोलूं तो भी गलत. हर समय आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और अगर आप ये समझ के बैठ जाओ कि मैं सब जानता हूं, तब फिर आप कुछ नहीं सीख पाओगे. तो दैट इज द थिंग. तो आई हैव अ वेरी, आई एम ऑलवेज बिलीव इन हैविंग अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि शायद मैं प्रैक्टिस करता तो ज्यादा अच्छा था. क्योंकि आप लोगों का सुनने के बाद, तरुण की बात सुनने के बाद तो मुझे डर लगा. फिर मुझे हंसी भी आई कि नहीं यार इतना डिफिकल्ट कैसे हो सकता है. नोटिस देना है तो इतना कुछ क्यों करना है? नोटिस की रिप्लाई देनी है तो इतना क्या सोचना है? रिप्लाई देनी है, ठीक है. क्या है, गलत कर रहा है तो आप उसके हायर अप्स पे जाओ, जाकर बोलो कि गलत कर रहा है. ऑफिसर गलत करेगा तो उसका सुधार भी तो होना चाहिए ना. उसको हम छोड़ देंगे जो मर्जी में आए करता रहे. हाउ कैन इट बी? दैट कैन नॉट बी द केस. सो वी हैव टू बी, अगेन आई एम टेलिंग यू, बी फोकस्ड wherever you are facing problems. Don't hesitate, go to the higher ups, let the people know what wrong is being done to you. अब मुझे आप लोग आते हैं, सर गाड़ी पकड़ लिया, गाड़ी में पेनाल्टी लगा दिया. मेरा तो कोई केस ही नहीं था सर इवेजन का. मैंने तो इवेट करने की कोई मैं सोचा भी नहीं था. वे बिल एक्सपायर कर गया सर, मैं क्या करूं? अब क्या करोगे भैया? वे बिल एक्सपायर कर गया, वैलिडिटी की भी तो बात है. कल ही मैं बता रहा था एक साहब को, बोले सर 6 बजे सुबह निकाला था वे बिल, सुबह 6 बजे खत्म हो गया, 12 बजे दिन में पकड़ लिया. हम बोला ऐसा कर दिया? हम बोला अच्छा. हम बोला किसने बोला आपको? बोले मेरे प्रैक्टिशनर ने बोला. 24 घंटा ई वे बिल तो वैलिड था, 6 घंटा में क्या बात हो गई, क्या क्यों पकड़ लिया? हमने बोला सुनिए, आज आप वे बिल अगर निकालते हो सुबह 6 बजे, तो अगले दिन सुबह 6 बजे तक वैलिड नहीं है, अगले दिन रात के 12 बजे तक वैलिड है. और आप वे बिल को वैलिडेट कब तक कर सकते हो? उसके बाद से भी 8 घंटा है. 8 घंटा पहले, 8 घंटा बाद. इतना समय आपको मिलता है, आप फिर भी कष्ट नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूं? आपकी ठीक है, यू आर सेइंग दैट यू डोंट हैव एनी इंटेंशन टू इवेट टैक्स. वेयर इन सेक्शन 129 देयर इज द क्वेश्चन ऑफ मेंस रिया. वेयर डू आई हैव द ऑप्शन
to go into mens rea whether you had any intention to evade tax or not. अगर आप इसमें जाओगे तब ऑफिसर को डिस्क्रिशन दोगे आप. What discretion? That if see whether he had any intention to evade. If he had no intention, then reduce his penalty. तो फिर क्या होगा? क्या होगा? The moment you give discretion, तब आप दौड़े दौड़े आओगे कि सर आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया, ये तो करप्शन की जगह बना दी आपने. आज आप ये सोचो, the GST law says penalty is fixed. या तो पेनाल्टी 0 होगा या तो 100% होगा, जो भी पेनाल्टी है. There is no discretion given to the officers. Is it good or bad? I would say it's good. हजारों टैक्स पेयर के लिए अच्छा है. 2 टैक्स पेयर फंस जाते हैं उसमें, वो अलग बात है. They want to litigate, let them litigate. But आप हजारों का सोचो ना, 2 का क्यों सोचना मुझे? Why are you wanting to give the discretion to the tax officer? See, in that manner, you have to see things. आज हमारे यहाँ जो इतनी भी स्क्रूटनी की नोटिस जाती है, what Tarun was saying, if you have received notice from my end, you must have seen we are giving 5 or 6 parameters, whatever are there. Based on that, we give scrutiny notice and we clearly state that these are the reasons, these are the gaps which you need to explain. स्क्रूटनी में मुझे आकर के बहुत लोगों ने कहा, प्रैक्टिशनर्स ने कि सर वी शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी बिफोर द ऑफिसर्स. आई सेड नो, नहीं मिलेगा, दिस इज रॉन्ग. आप जवाब दो, क्यों आपको जाना है? आप जाओगे, डेट मांगोगे, क्लाइंट का बेचारे का 4 बार पैसा लोगे. मैं वो सब नहीं करना. आप जाओगे, डेट ला मांगोगे. पहला काम तो है, पहला दिन जाते हैं सब डेट मांगते हैं. क्लाइंट बेचारा पहला दिन का भी पैसा दे दिया, दूसरे दिन जाएंगे ऑफिसर नहीं मिलता है, फिर गया. मैं बोला वो सब नहीं, जो देना रिप्लाई दीजिए. सिस्टम डजंट अलाउ, एंड दैट वाज द इंटेंशन इन द लॉ कमिटी, दैट स्क्रूटनी इज व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन relating to your business only. Whatever I have in the system, I am giving you a notice for that. I have issued you a notice for that. I am seeking an explanation, nothing more than that. Does scrutiny relates, comes up with demand? Does the scrutiny gets converted into demand? It's a reply. Then you get a chance for what? The adjudication begins. Then you get an opportunity of being heard. स्क्रूटनी में क्यों? मेरे पास रजिस्ट्रेशन में, मेरे रजिस्ट्रेशन में अभी चेंज किया, मैं देखता था कि रजिस्ट्रेशन में लोग भीड़ लगा बैठे हैं. मैंने रजिस्ट्रेशन सब चार्ज में हमारे थे, सब लोग दौड़ते रहते थे इसके पास उसके पास. मैंने बोला अच्छा रुको मैं ठीक करता हूं. अभी मेरे सब चार्ज पे जहां जहां भी रजिस्ट्रेशन होता मैंने उठाकर सब ले आया बेलियाघाटा. बेलियाघाटा के 8th फ्लोर पे मैंने दिया. वहां पर मैंने सिक्योरिटी बैठा दी. कोई भी बंदा वहां नहीं जाएगा किसी ऑफिसर के पास. क्यों? आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है, क्यों जाना है? कल आप जाओगे, अब वो कौन घूम रहा है मुझे तो नहीं पता. अब वो कौन प्रैक्टिशनर है या कोई और है, बाहर जाकर के तो यही कहेगा कि रजिस्ट्रेशन में जाकर के देखो बंगाल में कहां करप्शन. मैंने सिक्योरिटी बैठा दिया. मैंने बोला कोई नहीं जाएगा, कोई ऑफिसर से नहीं मिलना. द क्वेरी विल गो ओवर मेल, यू रिप्लाई ओवर मेल. व्हाई यू हैव टू कम फॉर अ फिजिकल विजिट? And yes, if you have a very good case, meet my special commissioner, tell her. She's a lady, so go and tell her that these are the reasons for which you seek an appointment with the officer. If she feels yes, if she is satisfied, she is satisfied. But I have stopped it. Now why I have done this? What was my objective? अच्छा किया या बुरा किया बताओ? तो आप सवाल है कि मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा कि ये चीजें सही नहीं है. आप क्यों दौड़ोगे उसके पीछे? क्यों वो आपको दौड़ाएगा? कल आप, यही आज तरुण है, 4 बार रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो दौड़ता रहा, एंड द मोमेंट एनी ऑफ माई क्लर्क, पियोन, एनीबडी, कोई ना कोई ऑफिस में उसको तंग करता रहेगा. व्हाई दिस थिंग विल हैपन एंड व्हाई ही विल गो टू द ऑफिस? अब तरुण का अगर अपना वहां पर साठगांठ बना लिया तो आपकी धंधे तो सब, आपके सारे धंधे तो गए, खाली तरुण का बाजार चलेगा वहां पे. यही ना होगा? Am I wrong? तो मैंने ऐसे चीज भी बंद कर दिए कि बोले जाओ, कुछ नहीं होगा, जिसको कोई नहीं आएगा. देखिए मैं कह रहा हूं कि these are all practical things I do. तो मुझे नोटिस से डरना नहीं है, घबराना नहीं है. Yes, you owe an explanation. I would say this.
I will not name the taxpayer, a very big corporate house. One of my officers, he was doing the audit, उसके कुछ bills थे जो SAP पे generate हुए थे, and the bill got cancelled. And the fellow was not understanding, and he was ready to raise a huge demand running into hundreds of crores. The corporate client, जो भी the taxpayer, he came to me, he said, sir, मेरा अगर इतने करोड़ों रुपए की liability बन जाएगी, then you sir think about what will happen to me. I am the indirect tax head, and I am unable to convince this officer. Sir, I don't know what to do, sir. I will see what's your case. मैंने देखा, मैंने बोला यार ये तो अच्छा ठीक है, हमला बैठो तुम. I called the officer. हमला, what's the problem with you? Go and check it in the system. If the bill has been cancelled and you are thinking that the goods have yet been supplied, then the onus lies on you. You prove it that the goods were sold. He is saying that I didn't sell the goods. The bills have been cancelled. And subsequently, with those batch numbers only, another bill was raised. Now, why are you creating a problem for him? Why you are doing all this nonsense? Audit report में ही उसने draft में जो किया था, final audit report में it vanished. Now आपको क्या है? I was not saying anything against the law. I am telling you, you act as per law. मैंने तुमको कोई भी ये नहीं बोला है, no statute says that तुम अपने हाथ में लॉ ले लो और जो मर्जी में आए करते रहो. ऐसा थोड़ी ना है. You have to do something lawful to do it like this. So these are the things. I don't think इतने डरने की जरूरत है जितना आप लोग सोचते हैं. कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, at least from the SGST side, I can tell you, you can come to me. You let me know. You just sent me a mail. Check the website, send me a mail. I personally see all the mails. I personally see all the mails. You just sent me an email that I want to understand what my officers are doing. Even my additional commissioners in the circle, I have told them that you should meet trade, associations, every taxpayer, whoever comes to you with any grievance. Listen to him. Try to understand what the problem is. If the problem is genuine, try to resolve. So this is the clear-cut guideline from me. चलिए मैंने तो बोल दिया, अब आप लोग बोलिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. वैट का क्या हो गया? प्लास्टिक के ऊपर में, और उन्होंने जो है वो एक्सपार्टी असेसमेंट में 14% करके चार्ज कर लिया. अब हम उसमें एमनेस्टी में भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि उसका 15% हम दे नहीं पाए थे, तो अपील हमारा वो रिजेक्ट हो गया और टैक्सेशन ट्रिब्यूनल में वो केस. आप एसओडी में जाना चाहते हो? एसओडी में सर जाएंगे तो आप जाना चाहते हो? सर अगर वो पूरा वापस से कागज देखेंगे तभी ना, नहीं तो हम 15 लाख रुपया कहाँ से देंगे? 1 करोड़ का सर डिमांड है और हमारा लाइबिलिटी 0 है क्योंकि हमने तो 5% तो टैक्स. क्या चाहते हो सर? वो कैसे मतलब उसका आप चाहते हो क्या हो? आपने उसकी अपील भी नहीं की है? नहीं, अपील की थी अभी टैक्सेशन ट्रिब्यूनल में उसका. टैक्सेशन ट्रिब्यूनल में आप उसको लड़ लो. आप देखो, 2 ही ऑप्शन है. आइदर यू फाइट इट आउट इन द टैक्सेशन ट्रिब्यूनल क्योंकि द मैटर इज ऑलरेडी वहाँ पे है, और दूसरा है अगर आप एसओडी में आना चाहते हो तो इंटरेस्ट वगैरह सब. अब मुझे पता नहीं 5 किया 14.5 क्या है, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दैट. सीधा केस है, या तो आप ट्रिब्यूनल में लड़ लो, एक ही ऑप्शन है वो, और दूसरा ऑप्शन है कि आप इंटरेस्ट पेनाल्टी सब भूल जाओ, 15% जो टैक्स है, जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका आप दे दो. ये ऑप्शन आपके पास है, आपको कॉल लेना पड़ेगा. थैंक यू. Excuse me, sir. So I have a query related to ITC. Should I take it up right now or after the session of Shivani ji? Sir से ही है actually. Sir, there is a section 77 जो बोलता है कि अगर मैंने गलती से CGST SGST के बदले IGST पेमेंट कर दिया तो मेरे पास ऑप्शन है गोइंग फॉरवर्ड करेक्ट टैक्स को पे कर दूं, जो मेरा इनकरेक्ट टैक्स है मैं उसका रिफंड ले लूं, एंड देयर इज़ नो इंटरेस्ट एलिमेंट एनीवेयर. But sir, there is no corresponding provision in the law as far as ITC is concerned. There are cases in 17, 18, 18, 19
where we are also facing the same issue जहाँ पर clients ने गलत head में input ले लिया. And now the problem is that if I reverse the ITC, I have to reverse it along with interest, one. And second, I cannot take the correct ITC in my 3B anymore because it is hit by 16.4. That is not there in the law. That has not been kept. Yes, sir. क्योंकि अगर आपको देना था IGST, आपने CGST, SGST दिया, आपने क्रेडिट उसका लिया, गलत क्रेडिट लिया. क्रेडिट लेने का एक सीमा है, एक टाइम पीरियड बंधा हुआ है. अब आपको क्रेडिट तो आपका जाएगा, लेकिन टैक्स की बात थी कि आपने टैक्स गलत दे दी, तो इसलिए वहां पर लॉ कमिटी में यही बात थी कि भाई आपको वो रिफंड दे दिया. क्रेडिट यू कैन नॉट गिव, सो यू हैव टू बी श्योर. देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दिस इज द रीजन विथ प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस. इफ यू डोंट करेक्टली अप्लाई द POS, then you may land in trouble what has happened in your case. But there is no way out by which you can get the credit. So, but I have a counter query on this. Let us say if my supplier, he had in his GSTR1 put place of supply as West Bengal and he charged IGST to me. I incorrectly took CGST, SGST in my GSTR3B. So would there be any loss to the exchequer in that case? Because... Okay. Please try to understand. It's a very complex subject. The moment you enter into IGST, POS appears to be very easy, but the settlement is a very, very tedious process. Once the settlement has taken place between the states, say my revenue has gone to Maharashtra, I cannot get it back. So correct reporting of POS is very important. For example, you go to say Delhi from Bengal, you are purchasing something as an unregistered taxpayer, as an unregistered person. If the bill is above 50,000, you can ask him to please put your address. He has to do it. Up below 50,000, you can ask for it. You can do it. Now, most of the fellows, what they do, when you are purchasing the good, they say, भाई मुझे को नहीं पता यार तुम कहाँ से हो, यहाँ का CGST, SGST भर दो. They never ask your address also. 50,000 से ऊपर का है तो आप तो लिखना पड़ेगा क्योंकि that is what the law is. 50,000 के नीचे who tells the shopkeeper or the supplier, why you have to write my address? Nobody writes. When you are purchasing ticket, I'll just give you some examples, just try to understand the complexities of POS. When you are booking your ticket from Goa Ibibo या Make My Trip, आप जब टिकट बुक करते हो तो एक आप तो एयरलाइन की टिकट का भाड़ा देते हो, देन गोवा बीवो या मेक माई ट्रिप दे चार्ज यू सम सर्विस चार्जेस. ठीक है, आप एयरलाइन का टिकट का तो आपको पता है जहां से भाई एम्बार्केशन होगा वहां पे टैक्स जाएगा. अब सर्विस चार्ज कहां जाएगा? आप कहां पे हो? बंगाल में लोकेटेड हो, आप जाओ गोवा बीवो में रजिस्टर करो, वो खाली आपका मोबाइल नंबर मांगता है. कभी आपसे पूछा कि आप कहां किस राज्य के हो, कभी आपसे पूछा कि आपका एड्रेस क्या है? वो सारा का सारा रेवेन्यू कहां चला जाता है? हरियाणा. IGST कहां? वो सारा का सारा रेवेन्यू दे नेवर आस्क फॉर योर प्लेस ऑफ वेयर यू आर लोकेटेड, दे नेवर आस्क फॉर इट. नाउ आप समझो अब इसकी कॉम्प्लिकेशन. तो दैट मींस एवरीबॉडी whoever is booking tickets from Make My Trip or Go Ibibo, the on GST on the service charge goes to Haryana. Is it correct? इसलिए अब आप देखो the rule was changed कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक through the electronic mode if a ticket is generated, then basically you will have to ask for the address. अभी भी Go Ibibo Make My Trip नहीं करता. The entire revenue is going to Haryana. But now you say, if I say that now Haryana you give me my revenue, why Haryana will give? देगा हरियाणा? क्यों देगा? क्यों देगा? वो तो बोलेगा मेरे को क्या पता, POS डिक्लेयर किया गोवा बीबो ने वहां पे, तो रेवेन्यू वहीं जाएगी, मैं आपको क्यों दे दूं? सारे राज्य चिल्ला रहे हैं, मिल जाएगा? इट कैन नॉट. इट इज सो इजी. बट फॉर द टैक्स पेयर, आपके लिए क्या है? आप तो बोलोगे कि यार मैंने तो टैक्स दे दिया, अब ये हरियाणा जाए या बंगाल जाए मेरे को क्या मतलब? मगर मतलब आपको नहीं है, मगर उन राज्य को तो बहुत बड़ा मतलब है. वो हरियाणा कैसे उसको दे देगा बंगाल को? मैं जाके भी बोलूं कि भाई देखो ये टिकट तो यहां से होगा, थोड़ी हो ही नहीं सकता. इसलिए आप ये रखो, IGST में एक बार गड़बड़ अगर कर दिया POS में, क्रेडिट की बात तो छोड़ दो. देखो क्रेडिट के जो रूल्स हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, यू हैव टू कंप्लाई विद इट. यस, द
When the law was drafted, it was decided that yes, if somebody has paid the tax wrongly, instead of paying IGST, paid CGST, we will refund one, not claim the interest. Take the other. But he has to pay the other. Credit portion is strictly, you have to go by section 16. There is no other way out. Section 16 में आपके जितने conditions हैं, you have to fulfill. So, but ये double jeopardy होगी. I understand there is no double jeopardy concept in tax law, but it is still a double jeopardy. Nothing like that. As I told you, see, it's a very complex thing. For you, it appears to be very easy. But think from the state's side. Haryana has already spent that money. Why Haryana? So, but I am actually thinking from a perspective of an innocent actually taxpayer, because उसको sir इतनी complexity. Taxpayer को मत समझो. Taxpayer के एंगल से क्या समझ में आएगा? यहाँ पर आप राज्य को चला गया है पैसा. अब वो पैसा कैसे इधर से उधर होगा? सेटलमेंट तो हो चुका. True. Money has gone. अब जैसा अभी तरुण कह रहा था ना कि DRC 03 में पेमेंट कर दिया है. रिफंड के लिए ऑफिसर में रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड. अरे एक्सेप्ट या रिजेक्ट तो छोड़ दो. द मोमेंट ही पेज द मनी हैज गॉन टू द ट्रेजरी. द गवर्नमेंट अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड. अब वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो रिजेक्ट करने से क्या पैसा आपके पास चला जाएगा? अरे क्या होगा ना आपका वो. दैट्स अनदर थिंग. That when if I have paid under the IGST head, when I can transfer the cash from this head to that, that's another thing. That is possible. You do that. But the moment you say कि officer accept कर दे या reject कर दे, अरे फर्क क्या पड़ना है मुझे बताओ? फर्क क्या पड़ना? वो तो चला गया, उसको तो चला गया जहाँ जाना. अब आप वहाँ से, अब आप गवर्नमेंट हेड में जब जा चुका ट्रेजरी में, अब वो पैसा कहाँ से निकल जाएगा? How can it? If you have to follow that refund procedure only, there is no other way. Thank you, sir. So in the same thing, if we are purchasing the goods from X, the place of supply is shown there Delhi, then the IGST has been charged by the supplier. I am sitting in Kolkata, and this is a three-party agreement. The goods has been sent to Delhi. Correct. And the IGST has been charged. Can I get the input tax credit? Yes, that is the wrong. that provision is there in the law. You will get it. There are two supplies in this, bill to ship to. You please check it. The specific provision is there. But place of supply has been given by the Haryana supplier is Delhi. Is the wrongly shown in the return in the 17. No, Haryana supplier. See, you placed the order. You have placed the order with the Haryana supplier. Right. He should have billed to you. Yes, sir. The bill from the Haryana supply should Haryana party should be on you. Exactly. And you will raise a bill on the Delhi party. That the Haryana supplier has wrongly filed now the return in fight place now of you supply. Talk to that fellow that what he has done. अब उसने रिटर्न में पैसा आप पेमेंट करोगे and he has shown it to Delhi. Case of the 2017-18, the supplier. Now these are the problem cases. How can he say the POS is Delhi? Maybe the way bill was generated, but 17-18 में तो way bill भी नहीं था. No. But अभी आज के दिन में भी the way bill का भी जो question है, that's another thing. But in this particular case, what I see is that fellow has done something very wrong. The POS should be Bengal and you will be getting the credit. Exactly. Now the moment he has shown POS Delhi, आपका क्रेडिट तो अब जाएगा. आप तो क्रेडिट लेके बैठ गए. Exactly. बैठ गए आप. Exactly on the basis of the. You have, I understand because the invoice has been raised, but in the invoice the POS is Delhi. It is good that the officer has not yet detected your case. Otherwise he will raise a demand immediately. But the moment he sees such a case, because you see, he will straight away say, "Na, you have taken the credit in Bengal when the revenue has not reached Bengal." You just think about my problem. Revenue has not come to Bengal. Revenue has gone to Delhi, and you have claimed credit in Bengal. Please understand the seriousness. And it is something that we have not been able to detect. That's another side of the story. But the day it gets detected. But that has been detected and that is shown in the GST 28, the place of supply is in the Delhi. But have you claimed the credit or not? Yes. That is what I am saying, ना. वो तो दिल्ली को भूल जाओ आप. आपने क्रेडिट कैसे ले लिया? Thank you, sir. Hi. Sir, my question is that since 2A is volatile, okay, and we have filed the GSTR 9 for 18-19 considering the 2A that was appearing in the portal at that time, and we had said whatever difference was there, we had paid the tax or reversed the input. Now we have received the notice
with another difference figure. Like the two-way figure is different from what we had seen that time. So now what should we take? We should take this, or we should take the one we had downloaded at the... Two-way is something dynamic. Yeah. It changes every day. Yeah. So what two-way, so what you are trying to point? Now the difference is greater than what we had seen that time. Like we, जब हमने return, Different what basis? reversal, अच्छा reversal. reversal, yeah. So अभी reversal का figure ज़्यादा आ रहा है, उस टाइम पे कम था, जितना था हमने कर दिया, तो अभी क्या हम लोग को difference का tax देना पड़ेगा, जो भी difference आ रहा है? करना तो पड़ेगा, अगर गैप है आप तो खुद ही बता रहे हो कि गड़बड़ है। नोटिस तो वैसे ही आया है ना सर, क्योंकि करंट 2A का फिगर लेके नोटिस आया है। अगर आपको देखो नोटिस आया है और गड़बड़ है, आप देख रहे हो, you have examined it and you are seeing that your whatever the officer is saying is correct, then you have to pay tax to the extent what is correct. I am not saying that you have to pay for the entire difference. What you think is correct, after examination of your client's books, you do it. Thank you. So we have seen amnesty scheme for GSTR 4, GSTR 9, GSTR 10. Can we expect the same for GSTR 3B for the past years for in 17, 18, 18, 19 and onwards? 3B अगर उसको कर दिया तो फिर क्या होगा? Nobody will file 3B. सारे राज्य सारे देश फिर बैठ जाएंगे हम लोग, रेवेन्यू हम लोगों को नहीं चाहिए क्या? How can you ask for 3B? Sir, good evening. This is Atal. Sir, I have a problem. There is an exporter who exports goods with payment of duty. Now, DG ARM had flagged their account and had advised Haldia Doc not to process the refunds. We approached central as well as state jurisdictional officers as well as administrative officers. At first they decided they are not going to take any view on this, and then later on they people from center had come to the office and done all the audits and inspection that they had to do. Still, it has 6 or 7 months has passed. This issue is not resolved. The client is not getting the refund. You are exporting upon payment of IGST. Upon payment of IGST, yes. Now maybe because of certain reasons, because basically if you have purchases from ab initio dealer or something like this, the system, the CBIC system, then what it does, it doesn't allow refund of IGST. Then that refund you will have to take from your jurisdictional office. Where is your jurisdictional office? Who is your jurisdictional? So it's the state, but state has State. and state has given in writing that they are not going to look into this case. I had spoken with the officer. Where you are registered? Park Street, sir. Park Street has given it. Park Street charge, You yes. send me a mail. Okay. Sir, but is there any other authority who's going to look into it? Because people from center, they are telling us that this is going to be unflagged from... No, sir, I'm not asking in that aspect. You send a mail to me. Okay. Let me see. How Okay, can sir. it be? Okay, The thank you, state sir. authority has to refund. Okay, thank you, sir. Last time, सर माई सेल्फ सुधा अग्रवाल, ये जैसे आपने अभी कहा कि ASMT 10 में जो नोटिस इशू हो रही है वो एज़ पर GST पोर्टल भी जो आप लोगों का एक स्टैंडर्ड प्रोसीडियर है, वहाँ से जो डेटा आ रहा है उसमें जो गैप मिल रहा है उसके हिसाब से हो रहा है. तो मेरा एक मतलब जो केस चल रहा है उसमें ऑफिसर का मैं मैसेज आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ. उन्होंने कहा था कि आप खालिद अजीज़ अहमद अनवर जी के पास आप ये हम लोगों का लेके जाइए कि एक जो उसमें एक पैरामीटर है बिकॉज ऑफ इनपुट रिवर्सल इन केस ऑफ क्रेडिट नोट्स जो है, मतलब अगर क्लाइंट ने सपोज़ हमारे क्लाइंट ने अगर 3B में नेट करके अगर वो दिखाया हुआ है और अभी जो है वो गैप आ रहा है, तो हम लोगों ने जैसे एक्सप्लेनेशन दिया कि हाँ हम लोगों ने नेट करके दिखाया है, जब 3B दिया अलग से वो रिवर्स नहीं किया. तो वो बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास ऊपर से है, सपोज जैसे डिमांड है उनका 2-3 लाख का,
तो वो बोल रहे कि अगर मैं ऐसे ही, आप उनको सब समझ में आ रहा है इशू कि हाँ हम लोगों ने वो इनपुट रिवर्स कर दिया है नेट करके, लेकिन बोल रहे कि हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग के ऊपर इंक्वायरी हो जाएगा, हम लोग ऐसे कैसे छोड़ दें। तो आप ये मैटर, आप कभी खाली आपका नाम लेके बोलिए, आप उनके पास ये मैटर जरूर लेके जाना, पर्टिकुलरली ये जो इनपुट रिवर्सल रिगार्डिंग क्रेडिट नोट्स जो आ रहा है डिस्क्रिपेंसी में, ये क्यों आ रहा है, मतलब ये नहीं आना चाहिए। आपको क्या लगता है नहीं आना चाहिए? अगर नेट, मतलब हम लोग अगर पॉइंट हम लोग अगर एक्सप्लेन कर दे रहे, केस से हट के बात है, नहीं, forget your case. Now Okay. you tell me, in a situation where credit note has been issued, who can issue the credit note, GST credit note? Who can issue? seller where Supplier he's- can, no, yeah. only the supplier can issue. The supplier has issued a credit note. Now for that, the recipient has to reverse the ITC. That is the case, na? Yes. The recipient को reversal करना होगा. So what the system is doing, wherever the credit note has been issued. Now credit note has been issued. If the recipient has to reverse the ITC, then that need to be looked into. That for that you have to give a reply. यही तो है. हाँ, तो तो वो- इसमें इसको हटा देने की बात तो मत करिए ना. इसको आप ये देखिए कि रिप्लाई देखें, the officer should check it that whether the recipient has reversed the credit or not. For the GST credit note, I'm not talking about the commercial credit note. Okay. GST credit note क्या कब इशू हो सकता है? आपने अगर टैक्स, हमने टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया तो क्रेडिट नोट देंगे. हमने वैल्यू ज्यादा दिखा दिया तो क्रेडिट नोट देंगे. गुड्स रिटर्न हो गया तो क्रेडिट नोट देंगे. इफ देयर इज अ डेफिशिएंट इन सप्लाई ऑफ गुड्स और इफ एनी डेफिशिएंसी इज देयर, आई विल इशू अ क्रेडिट नोट. ये तो 4 कंडीशंस है. तो इसमें चारों में क्रेडिट हैज टू बी रिवर्स्ड और नॉट. सर रिवर्स करना है, जैसे जब 17-18 का ये मामला है तो 3B में हम लोगों ने अदर्स में नहीं दिखा के उसको नेट करके दिखा दिया. अभी आप अगर उतना ही दिखा दो ना कि अगर आपने नेट कर दिया है, इफ यू हैव ऑलरेडी रिवर्स्ड इट, देन यू गो देन शो द ऑफिसर थ्रू योर बुक्स दैट आई हैव ऑलरेडी डन दिस, देन द चैप्टर क्लोजेस. नहीं, हम शो कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, फिर वो बोलते कि आपने इसको अदर्स में नहीं दिखाया तो हम लोग नहीं मानेंगे इसको. आप मेल करो मुझे, हु इज द ऑफिसर? सर ये बरतल्ला डिवीजन में, वो इसीलिए वो बोली कि आपसे बात करने के लिए. आपसे क्या बात है? ये ऑफिसर कोई बोलेगा जाके कमिश्नर से बात करो, नहीं, आप वो चले आओगे तो वो मेरे को एक प्रोटोकॉल फॉलो करने बोल रही थी कि आप ये एप्लीकेशन दीजिए. सबसे पहला काम करो, उसको रिप्लाई दो. और आप स्क्रूटनी में उसके पास गई क्यों? नहीं, मैंने रिप्लाई कर दिया था पूरा तो फिर आप ASMT. गई क्यों? आपको बुलाया उसने? नहीं, वो 01A में उन्होंने ऑर्डर पास, 1A में वो जो इंटीमेशन आता है वो दे दिया. ठीक, चलो ठीक है, आप उसको रिप्लाई दे दो. इसमें ऐसा नहीं है कि अब वो वैसा थोड़ी है. बहुत से लोगों ने नेट दिखाया है. अगर नेट दिखाया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. नहीं नहीं, यू नीड टू एक्सप्लेन टू दैट ऑफिसर, दैट्स ऑल. Okay, sir. Also because most of these reports are AI driven, what we feel is that when we give a reply, always everything is accepted. We haven't come across a single instance in handling more than 500 ASMTs where they've not heard us. But how we find it difficult is that many a time, say for example, in the exempted turnover, there is a big amount of interest, say for example, which does not call for any reversal of ITC under Rule 42 or 43. But because your system is capturing the data as an exempt supply, the reversal that we get as per the ASMT 10 issued by the department may be like a completely absurd figure. It's okay. You give a reply. You give a reply. Because see, from the system I cannot make out whether the exempt supply includes your interest income. I don't know. I'm not aware. इसमें जो percentage calculation हो रहा है exempt supply to total turnover का, that is being applied on the entire ITC and not only on the common ITC. That's another. आप मुझे बता दो कॉमन ITC कितना है? हाउ कैन आई मेक आउट फ्रॉम योर 3B? हाउ कैन आई मेक आउट? आपका वहां से कैसे पता चलाएगा? नहीं तो सर अब डिपार्टमेंट एक फिगर अज्यूम कर लेना है कि मेरा टोटल. डिपार्टमेंट कोई अज्यूम नहीं कर रहा है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. डिपार्टमेंट इज टेकिंग द फिगर ऑफ योर इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली. अब वहां से देखिए सिंपल लॉजिक है कि आपका टोटल टर्नओवर 100 रुपीज है एंड आउट ऑफ दैट योर एग्जेम्प्ट सप्लाई इज 40 रुपीज. से तो व्हाट इज द रेशियो? 3:2 टैक्सेबल इज टू एग्जेम्प्ट. तो अब इट इज प्रिज्यूम दैट ITC जो आपने लिया है दैट शुड ऑल्सो बी रिवर्स्ड इन दैट प्रोपोर्शन.
अगर आपको लगता है कि मेरा रिवर्सल इतना नहीं है या वो जो भी है वो तो, क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर थिंग टू अंडरस्टैंड, तो उसके बेसिस में देन यू ओ एन एक्सप्लेनेशन, आप एक्सप्लेन कर दो कि भाई देखो मेरा एग्जाम टर्नओवर में इतना इंटरेस्ट इनकम है, आप निकाल दो, वो बता दो, कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना है, आप बता दो। सर इसमें हुआ क्या है कि 10 करोड़ का ASMT 10 में रिवर्सल दिखा रहा है, जबकि एक्चुअली रिवर्सल 7,000 रुपया का है। अब वो जो MD है वो चिट्ठी देख के उसको हार्ट अटैक आ गया कि 10 करोड़ का रिवर्सल, मतलब उसको पूरा समझाने में। आप मुझे एक काम, I'll give you a job on behalf of आप भी पकड़ो और मुझे बता दो कि what is the other way out of doing it। मैंने instead of looking, अगर मैं नहीं देखूं, आप देखो what you are highlighting is one such case। I'm telling you, इस reversal में across the country people have got good revenue, because आप जैसा बोल रहे हो, you are highlighting only that case where the interest income was there and maybe the reversal that was shown by the system was on the higher side, but there are hundreds of cases, thousands of cases जहां पे common credit है and what the system has detected is correct। Out of 10 I would say 50% cases are correct and reversal was not done। तो अब आप देखो, why you are trying to highlight only one case। मैंने तो बोला कि that is the reason why scrutiny is being done so that you give us an explanation। उसके अगेंस्ट पे कोई डिमांड आ जाए तब आप बोलो, आपका क्लाइंट का हार्ट अटैक हो गया यार, तो आप क्यों बैठे हो, आप समझाओ ना उसको कि यहाँ पर तो ये खाली एक्सप्लेनेशन मांगा है, आपको हार्ट अटैक देने का थोड़ी कोशिश, डिमांड जब कर दे तब हार्ट अटैक आना चाहिए। सर 500 करोड़ का ITC है, अब उसमें कॉमन क्रेडिट निकाल के दे दिया ऑफिसर को। नाउ शी इज सेइंग हमें मार्केट पास में अपना कॉमन क्रेडिट कम आते now you tell me, Tarun, now you have to convince that officer what I'm trying to say through your books of accounts, that these are it। Now if the officer doesn't agree, first of all, whatever input tax credit I have claimed, the onus is on me to prove, I have proved। Now if the officer has to say something different, now let him prove or let her prove। Now the point is, if I'm not going to agree to something, now there is no explanation to it। अब तो वो कुछ भी कर सकता है, आप कुछ भी एक्सप्लेनेशन दो, if the officer says I'm not going to agree to it, now that is the reason why I'm saying, जैसा मैंने अभी एक big corporate house का बताया, the demand was coming up in running into draft order was saying more than 100 crore, but the matter came to me। तो बेचारे को तो उसको तो वो तो भागा मेरे पास आ गया, वो अगर नहीं आया होता then it would have become next year demand। तो सवाल उस चीज का नहीं है, हाउ यू हैंडल द थिंग्स। ये तो होगा, आपको 10 ऑफिसर्स मिलेंगे, एक ऑफिसर तो ऐसा आएगा कि जहां पर वो नहीं मानेगा, देन हाउ टू कन्विंस दैट ऑफिसर इज अ चैलेंज टू यू तरुण। नाउ यू हैव टू फाइंड अ वे आउट, दैट यू हैव टू, नाउ यू टेल हिम दैट भाई आप ऐसा नहीं करते, गो टू हिज हायर ऑफिसर कि आई हैव ऑलरेडी गिवन him or her the paper, now she is saying that I am not agreeing to this common credit। why she will not agree, कैसे? See, then if I don't agree to something, I have to give my reasons। तो सर ऑर्डर में पता चलेगा क्या? तो वही मैं बोल रहा हूँ, कैसा थोड़ी, अब आप देखो, हर ऑफिसर का ऑर्डर बैठ के कमिश्नर थोड़ी ना पास करेगा, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। आई कैन ओनली टेल माय ऑफिसर, इफ सर्टेन ऑफिसर्स आर नॉट डूइंग थिंग्स इन दैट मैनर, then that is the reason why you have all these forums of appeal, tribunal and all। otherwise what is the point in keeping them? if the problem gets resolved there only, तब तो फिर ये फोरम को रखने की मतलब ही नहीं है। B2C क्रेडिट में दिखा दिया, तो उसके लिए उसको नोटिस आ गया सर, वो डिमांड ITC डिसअलाउ करके, तो उसके लिए अब क्या रेमेडी है सर? सप्लाई ओके था, बट उसका अगस्त 17 में GST नंबर नहीं था, इसलिए उन्होंने B2C में जिसको बंगाल का ही, बंगाल ले लिया, उसका रिसिपिएंट को तो ITC नहीं मिला ना सर, B2C में दिखा दिया। के बाद आपको कोई नोटिस आया है? वही आया हुआ है सर, आपने ऑफिसर को क्या हमने दिया, हमने कहा CA सर्टिफिकेट आपको दिखा देते हैं, हमारा जेन्युइन सब कुछ है, CA सर्टिफिकेट दिखा दें। थैंक यू सर। I think we have had enough of interactions.
नहीं, क्वेश्चंस तो छोटे बड़े का इशू नहीं है, लेकिन एक टाइम लिमिट थोड़ा सर को भी निकलना था। सर ने मेरे को बोला था 6:15 6:20 तक निकल जाएंगे, ऑलरेडी 6:30 हो गया। ही इज़ वेरी जनरस एज ऑलवेज to respond and very positively. You have already seen, you have already experienced that. I would only like to make one or two observations. That is, sir, GST is today a national subject. GST में 30 parties हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, 29 स्टेट गवर्नमेंट, 30 parties हैं. So all these 30 parties यूनियन टेरिटरीज को मैं चूंकि सेंट्रल के साथ, हाँ, इसलिए मैं 30 पार्टीज बोलता हूँ हैबिचुअली. बट मैं जब जीएसटी आ रहा था और जब आ गया, हमेशा सर से मेरा इंटरेक्शन काफ़ी रहा, तो मैं उस समय से सर को बोलते आ रहा हूँ कि सर जीएसटी लॉ जो आप बना रहे हैं, जो फिलोसॉफी आपका है, अभी उसके नए तरीके से नए सिरे से इसको देखना पड़ेगा. एवरी ऑफिसर ऑल्सो हैज़ टू लर्न दैट, बट यू डू नॉट गेट एन ऑफिसर लाइक मिस्टर खालिद अनवर एवरीवेयर. तो उनके जैसे मैं सर को बोलता था, बोले सर आप लॉ कमेटी में हैं, आपके जैसे 15 ऑफिसर हैं, या आपके साथ और भी दो करके मान लीजिए 45 ऑफिसर्स, 50 ऑफिसर या 100 ऑफिसर्स ऑल ओवर द कंट्री, सेंट्रल स्टेट मिला के, जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. बाकी जो 10,000 में से 9,900 लोग ऑफिसर्स हैं, उनको कैसे हम समझाएंगे? हाउ वुड दे अंडरस्टैंड कि व्हाट द लॉ वांट्स, व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ इट? मैक्सिमम ऑफिसर्स आज भी नहीं समझते इस स्पिरिट को. अभी जिस स्पिरिट से सर बात कर रहे थे, ये एज अभी इट इज़ हिज हैबिट, हर जगह हर फोरम में इसी तरीके से वो बात करते हैं. समवन रोट टू मी कि सब्जेक्ट का डिस्कशन पे फोकस नहीं करके हम लोग थोड़ा सा डाइवर्टेड हो रहे हैं. बट प्रोबेबली ही डज नॉट अंडरस्टैंड, विच आई अंडरस्टैंड, कि सर से जो इनपुट आपको मिल रहा है, ये हर जगह से आपको नहीं मिलेगा. वेरी फ्यू ऑफिसर्स इन द कंट्री, आई एम टेलिंग यू, स्टेट सेंटर मिला के हैंडफुल ऑफ ऑफिसर्स आर देयर, जिनसे आपको ये इंसाइट मिल सकता है. प्लेस ऑफ सप्लाई का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या पर्सपेक्टिव है, जिसको ध्यान में रख के ये केसेस होते हैं और डिपार्टमेंट कैसे इसको व्यू करते हैं, ये आपको कोई इवन प्रोफेशनल्स भी नहीं बता पाएगा. प्रोफेशनल्स लाइक शिवानी और अरुण अग्रवाल और तरुण गुप्ता कैन टेल यू कि लॉ में ये प्रोविजन है, हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, इसको आप इस तरह से लड़ो. दैट इज डिफरेंट. सर व्हाट सर इज सेइंग, लिटिगेशन, ही इज नॉट सेइंग कि आप लिटिगेशन में मत जाओ. अभी शिवानी was talking about that section 73 का applicability. An officer may have his limitation, as he said, कि भी उसके ऊपर में भी AGP है, उनको वो भी ध्यान में रखना पड़ता है. But still I am telling you, a commissioner sitting here in a forum and saying कि किसी भी जगह पे कोई भी ऑफिसर से कोई इशू है तो आप प्लीज ब्रिंग इट टू मी. If I cannot do anything, then it's useless of me being there. I am telling you, central tax officer तरुण was talking about कि ये इशू सेंट्रल टैक्स का है, ये इशू स्टेट टैक्स का है. मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल टैक्स का एक ऑफिसर, एक कमिश्नर मेरे को बता दो. मैं अथॉरिटेटिवली बोल रहा हूँ यहाँ से बैठ के, 25 साल से और करीब 30 साल हो गया मेरे को भी प्रैक्टिस में, लिटिगेशन प्रैक्टिस करते हुए. एक ऑफिसर आप बता दीजिए, एक कमिश्नर बता दीजिए जो ये वर्ड बोल सके कि आई वुड रिजॉल्व योर इशू. Every commissioner on every issue, sir, this is for your feedback also, he would straightway say, I cannot do anything, my hands are tied. जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो जो डिसीजन लेंगे, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. एवरी डे एंड स्टिल हम केसेस लेके, इश्यूज लेके जाते हैं उनके पास. जब कोई जेन्युइन इश्यूज होता है और लगता है कि बहुत ग्रॉसली इंजस्टिस हो रहा है, तो हम जाते हैं. बट वी नो, नोइंग फुल्ली वेल, मेरे जैसा आदमी तो एटलीस्ट नोइंग फुल्ली वेल कि वहाँ से रेड्रेशल नहीं होगा, बट स्टिल एक फोरम मेरे को वहाँ पे एड्रेस करना है, उसको उसका कोरम भी मेरे को पूरा करना है, सो दैट आई कैन एस्केलेट इट एंड से कि कमिश्नर लेवल पे या चीफ कमिश्नरेट लेवल पे नहीं हुआ. सर जब बोल रहे हैं कि भी नोटिसेस का हम जो कोई ऑडिट हो रहा है, मान लीजिए ऑडिट में आपका फाइंडिंग कुछ और है और फिर एडजुडिकेशन लेवल पे वो ड्रॉप हो जा रहा है, मैंने शोकस नोटिस में भी नहीं आ रहा है. आई एम अ विटनेस टू दैट. रेगुलर ऐसे केसेस होते हैं स्टेट लेवल पे, पर्टिकुलरली हमारे स्टेट पे. एंड दैट टू आई एम टेलिंग यू टू बी मोर स्पेसिफिक कि लास्ट 2 साल से ये चेंजेस हमने देखे हैं, उसके पहले भी नहीं था. तो ये चेंजेस है. बट सेंट्रल में सर यू आर टॉकिंग अबाउट, तरुण वाज टॉकिंग अबाउट कि विदाउट रेफरिंग टू एनी सेक्शन नोटिस इशू होते हैं. यू आर सेइंग कि कैसे ये हो सकता है. एंड मैं बोलता हूँ सर, एक नोटिस आप सेंट्रल टैक्स से दिखा दीजिए जहाँ पे ये सेक्शन रेफरेंस देके नोटिस इशू होता है. नोटिस कोई, इट इज हैबिचुअली दे वुड से, अरे जैसे आप रिप्लाई लिखोगे, अरे आपने कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं लिखा है, बोला अरे आप मेरे को ज्ञान, लॉ का ज्ञान दे रहे हैं, आप मेरे को लॉ समझा रहे हैं. बट एक्चुअली यू आर सपोज टू, लॉ मैंडेट्स सेक्शन 160/2 में बोला हुआ है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको लगता है नोटिस सही नहीं है, तो शिवानी आपके लिए जो आप इशू रेज कर रहे थे, तो इट इज अ मैंडेट बाय द लॉ कि अगर आपको लगता है कि कोई नोटिस गलत इशू हो रहा है, यू रेज इट एट द बिगिनिंग. अगर आप नीचे नहीं रेज करेंगे तो हायर फोरम में जाएंगे, अपील में जाएंगे, अपीलेट अथॉरिटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विल से, अरे नीचे क्यों नहीं बोला, अभी हम नहीं सुनेंगे.
दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ, दैट इज द जुरिस्प्रूडेंस. तो इसलिए आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोलना पड़ेगा, एंड यू हैव टू. तो हम कंसल्टेंट है, हम अगर लीगल प्रैक्टिशनर है तो हमको वो लेना ही पड़ेगा. बट इंडिविजुअल लेवल पे आपको ऐसे कमिश्नर, आपको ऐसे ऑफिसर हर जगह पे हर समय नहीं मिलते. तो इसलिए वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी हैव गॉट अ कमिश्नर लाइक दैट, कि बहुत से इश्यूज, इवन अगेन आई एम ए विटनेस टू दैट, कि भी बहुत से इश्यूज आपके एडजुडिकेशन में, लिटिगेशन में जाने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, एज ही ऑल्सो रेफर टू 1 or 2 or 3 केसेस लाइक दैट. There was a discussion going on a particular topic, and a few states were hell-bent that this matter is being is under litigation, so we will not allow any clarification. I said that what is this? If we all have a clarity on the subject that what is being done is wrong, let us clarify. And see, I don't know how many clarification you must have seen, which has seen cases which were in litigation coming out of it because of that clarification, because it has no meaning now. कितने सारे clarification issue हुए. तो the point is, देखिए, if any dispute is arising and you people are facing problem, again I am saying it need to be taken up to the higher ups, it need to be discussed. अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, मेरे पास लोग आते रहते हैं. तो अब क्या होता है ना कि अब आप लोगों को जितना आप दावत देते रहोगे, बुलाते रहोगे, लोग का समस्या आप समाधान करते रहोगे, लेकिन फिर भी आदमी कहाँ है, वो तो ये दिल मांगे मोर. अब उसकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ती रहती है. और एक जगह है जहाँ कुछ नहीं होता, तो वहाँ आप जाओगे तो पता है पहले से भैया कुछ नहीं होना है, तो जहाँ होता है वहीं चलो. अब वहाँ पर मांगते रहो, जितना मिल जाए कम है. So, sir, we had really a very good session again, as always. It is always a very enriching and insightful session with you. So, thank you very much for being with us and for addressing the issues in your own way. हाँ, अब हम लोग हमारा जो नीतीश जो ऑर्गेनाइजेशन का एक जीएसटी बुकलेट है सर, दे वांट टू रिलीज दैट, सो बाय यू, दैट रिलीज विल बी बाय द कमिश्नर सर. तो ई-जर्नल ऑफ जीएसटी. सर शिवानी जी इज द चेयरमैन ऑफ एंड रोहित जी एंड शुभम दे आर द co-chairman of GST committee. This one? Yeah. So we'll email to everybody, to the delegates. Thank you. Good. Very good. So it's basically a compilation of articles. So I've known Sir ever since I was a young, naive practitioner, which is way back when I was practicing 15 years back with Shri Bhanu Prakash Agarwal. One thing that, sir, you need to tell us all is that ever since the last 15 years, we've not seen you age one bit. With so much of pressure and everything that you're handling for us, that's something we need to definitely know. One experience that I wanted to share, which is in similar lines with what Arun sir was mentioning, this is when the GST law came in, and we all know the very popular, celebrated section of 17 subsection 5, wherein lot of your ITC is blocked, and one amongst which is a vehicle. Now, back in the day, there wasn't any breaking bifurcation of it being a passenger vehicle, number of seats, etc. It was a blanket no, that if it's a vehicle, you cannot take the ITC. Now, I had a client who was in the business of transporting money for banks, and they used to use a lot of these vehicles, which was used only purely for the purposes of business. Now, the law was such that the ITC was not allowed. All it took me was one meeting with sir and the client, and in a couple of weeks, we saw that the entire act was amended. So, sir, this is what he is actually, when they talk about a true leader, and this is my personal experience of being a chartered accountant who was just setting her foot into GST with absolutely no godfather in the industry, but there I went to him, and he actually saw merit in the entire issue, and the law stands amended thanks to him. So as they say, sir, the key
character of a leader is not authority, it's influence. We are very, very thankful that you spent some time with us today. On behalf of Views Exchange, the president of Views Exchange, and in capacity as the chairperson of the IDT committee here, with a very warm heart, I thank you so much for throwing light on many queries, and I'm sure each one of them still have many queries in their heads. But until then, thank you so much, sir, and thank you so much for being a mentor as far as GST is concerned. Thank you so much. So may I request Arunji to be joined by our president to kindly offer a memento to Khalid, sir. And may I please request all of you to join with a thundering round of applause. ITC session is yet to continue. Friends, please be at your seats. The session on input tax credit is yet to to be taken by Shivani. I would straightway request Shivani to please make her deliberation. Maybe a little, because you are already running over. Well, at the outset, I'm very honored. Views Exchange, it's the first platform I ever deliberated on any subject. Well, I only know indirect taxation, so back in the day it was service tax. To now, thank you so much for having me over. To the few ones who are here, I'll make it quick and I'll make it crisp. As Tarun was mentioning the elevator pitch, well, I can't make it into 2 minutes, but we'll try and concise it into 20 minutes. And our mentor, Arunji, is here. I started my practice in 2008. Since then to now, the one name that refuses to go away is his when we talk about indirect taxation. So thank you so much for being a mentor to us in many ways, sir. And my very good friend, Rohit, and my colleague, Tarun, who I have a great amount of regard for. Thank you so much. So, well, we'll start with your query, wherein you asked about the difference between GSTR 2A and 3B. Now, I'm very glad that Khalid sir is not there, because you see, as a practitioner and also as a speaker, we often like to play the devil's advocate. And as Arunji also rightly mentioned, that this is what we get paid for, right? That you need to understand the law, not really to take a disadvantage of the loopholes of law, but try and see that how those loopholes can work to the advantage of your client. Starting with the point that you mentioned, let's very quickly go through that. A lot of notices which have been received by assessees because of the mismatch of ITC which is availed as per GSTR 3B versus 2A, शायद आपके 2B भी आ जाएगा कभी, so on and so forth. So I just took some time to make a brief कि अगर हम इस particular notice या reply की बात करें, and also taking cue from where Tarun left, I'm sorry, even he had to hurry up his presentation. So as I made a point at the dais right now, before Khalid sir, is that always that only one thing I tell my team, that before you start preparing a reply to any notice, आप उसके मेरिट में मत जाइए कि भाई किन इन्वॉइसेस में आपका आईटीसी नहीं मिला है, या से फॉर एग्जांपल आपके आईटीसी एक्चुअली वो 100 करोड़ 200 करोड़ उतना डेफिसिट है कि नहीं है. आप पहले ये देखिए, बेसिक से अपने शुरू करिए, डिन है कि नहीं है. एंड देन I personally feel that it's very important for you to understand under which provision of law is that particular document issued. Now say for example, जब अपन ITC की बात करते हैं, the law is, GST law is very dynamic. It's like the two-way, you know, generally I always tell that normal procedure क्या होता है, आपके act issue होता है, फिर rules, फिर notification, फिर circular, फिर advisory, फिर press release.
हम शायद उल्टे डायरेक्शन में जीएसटी में चल रहे हैं, पहले प्रेस रिलीज, फिर एडवाइजरी, फिर सर्कुलर, फिर नोटिफिकेशन, फिर रूल्स और फिर आपके एक्ट में कुछ चेंजेस आता है. एंड आई ऑलवेज ऑल्सो टेल एवरीवन, व्हेन आई से एवरीवन, द टीम एंड द क्लाइंट्स दैट वी हैंडल, दैट अगर हम कोई भी लॉ की स्तंभ की बात करें, देयर इज़ द लेजिस्लेचर विच लेजिस्लेट्स द लॉ, देयर इज़ अ जुडिशरी विच जजेस, एंड देन देयर इज़ द एग्जीक्यूटिव विच बेसिकली एडमिनिस्टर द लॉ. तो अभी जो सर ने बात बताई कि भाई उनके भी हाथ टाइड है, वेल दे आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड व्हाट द एक्ट इज़ प्रोवाइडिंग देम. यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई मेरा मन है ये आपसे डिमांड करने का, अब आप एक्ट में एक सेक्शन लाओ. अगर आपके एक्ट में वो सेक्शन नहीं है तो फिर आपका काम ही नहीं है कि आप उस सेक्शन के दायरे के बाहर जाकर आप कोई डिमांड करें. सो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट ऑल्दो दिस मे साउंड कि भाई पोडियम पे आप बोल रहे हो तो बड़ा अच्छा लगता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है. वी एक्चुअली डू दिस, एंड द वन पर्सन और द स्टॉलवर्ट आई फॉलो एज फार एज माई प्रैक्टिस इज कंसर्न्ड इज C.A. Jatin Christopher. If you see his videos, it can basically change the way you practice. And इतनी चीज़ों को आप समझ सकेंगे. And one amongst them is not that आप unnecessary litigation में जाइए, but जहाँ पे आपको लगता है कि भाई आपकी नोटिस में या अभी आईटीसी वाला जो हम लोग मैटर डिस्कस करेंगे उसमें आपके टेक्निकल कोई एरर है तो यू पॉइंट इट आउट. ये जो बात है कि भाई ये हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, नहीं, हाई कोर्ट में भी आपको देखेंगे कि आपने नीचे अपनी क्या प्लिया दी है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट बिफोर वी talk about approaching the reply of a notice on merit, let's see what is the technical error in the notice. जैसे मैंने अभी ट्रान का एग्जाम्पल दिया, everyone knows that ITC is the vested right of the assessee. लेकिन जब आपने कोई ट्रान 1 फॉर्म में गलत कर दिया या ट्रान 2 फॉर्म में गलत कर दिया, कहीं पे भी उन्होंने ये पहले नहीं बताया नहीं इनका वेस्टेड राइट है इनको दे दो. पहले आपको उन्होंने क्या बताया, भाई आपने गलत किया है, टेक्निकल एरर किया है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं. तो आप भी अपने नोटिस को वैसे ही शुरू करिए, पहले आप टेक्निकली देखिए वेदर द नोटिस इज साउंड और नॉट. नाउ कमिंग बैक टू द इशू ऑफ ITC, when we talk about a mismatch of ITC between your 3B versus whatever the document is, say for example 2A, तो 1/7/2017 से GST का कानून लागू हुआ टिल अपन लेते हैं एक पीरियड 8th of October 2019. वाई? बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट द मोस्ट सेलिब्रेटेड सर्क्यूलर, जो लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स आर ऑल्सो फीलिंग ये बहुत ही मैंने अच्छा सर्क्यूलर डिपार्टमेंट में निकाला है एंड यू नो इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है. आई एम ऑफ अ डिफरेंट व्यू. 17-18 और 18-19 के लिए उनके पास एनीवे लॉ में ऐसा कोई कानून नहीं है बेसिस विच दे कैन एक्चुअली मेक अ डिमांड ऑफ मिसमैच ऑफ ITC or demand on account of a mismatch of ITC in your 3B vis-a-vis your 2A. Now why? Because अगर आप 183 देखेंगे सर्क्यूलर, वहाँ पर उन्होंने खुद से बताया है कि देखिए ठीक है हमें भी पता है कि पहले GSTR 2A नहीं था, so it's okay. And 36(4) भी हम लोग 9th of October 2019 से आपके लिए लागू किए हैं. That means what? कि अगर आपके पास कोई भी एक चिट्ठी, नोटिस, ब्ला ब्ला ब्ला, whatever it comes, subject to what I've already discussed in the first half, if you at all want to approach it, आप ये बताइए कि सर आप किस बेसिस पे बता रहे हैं, क्योंकि आपके सर्कुलर में ही आपने बताया है कि आपका 36(4), assuming without admitting the sanctity of 36(4), I am saying कि आप किस बेसिस पे मुझसे डिमांड करेंगे. So to my mind there is actually no provision in law basis which the particular demand can be made by the authority. Now obviously there is a very pragmatic way also जहाँ पे assessees बोलते हैं भाई हमें झमेले में जाना ही नहीं है, छोटा अमाउंट है आप दे के रखो. I am not getting into that school of thought. That is one school of thought well respected, but in case the amount is big and you know that you have a genuine case. Now also I am not propagating the fact कि अगर आपके assessee ने कोई गलत काम किया है with a malified intention, then you take an advantage of the loophole of law. That is not what I am propagating. But there are many cases जहाँ पर GSTR 2A में नहीं आया है because of very valid reasons. Say for example आपका जैसे उन्होंने खुद ही वो 83 वाले सर्कुलर में दिया है कि भाई मैंने अरुण सर को सप्लाई किया, उनका GSTIN की जगह मेरे स्टाफ ने रोहित के GSTIN में टैग कर दिया. या से फॉर एग्जांपल मैंने मनीष जी को किया लेकिन इनका GSTIN मैंने दिया ही नहीं, मैंने उसको B2C में दिखा दिया. तो टैक्स सरकार को गया है, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज विच
were done without any malified intention. It did not come in two-way, and that is why आपका वो difference आ रहा है. So then legally आप इस particular point का ज़रूर benefit उठा सकते हैं कि भाई आपके पास law में ऐसा कोई provision नहीं है. एक रहा सहा आपका वो जो mismatch और reclaim वाला है section 42, वो भी आपका delete हो चुका है, but that also will not suffice as a valid ground for making any demand of GST on account of ITC mismatch between your GSTR 3B and your GSTR 2A. Now let's come to the second half. But before I do that, let me speak very briefly on 183, two quick points. अगर आपने 183 circular पढ़ा है, have all of you read it? So yeah, so 183 सर्कुलर में बताया गया है कि भाई अगर 2 साल 17, 18 और 18, 19 में आपके ऐसे ऐसे मिसमैच आ रहा है तो आप ये काम करिए तो हम लोग आपको अलाउ कर देंगे. अगर 5 लाख से कम का मिसमैच है तो आप अपने सप्लायर का सर्टिफिकेट ला दीजिए, 5 लाख से ज़्यादा का है तब आप सीए का ला दीजिए. लेकिन इट्स बेसिकली दे ड्रॉन आउट एन एंटायर प्रोसेस इन द सर्कुलर. ऑफिसर तभी भी देखेगा कि भाई आपके पास टैक्स इनवॉइस है कि नहीं. He will also want to see कि भाई आपने वो particular supply receive किया है कि नहीं. He will also want to see कि भाई आपका वो payment हुआ है कि नहीं. So on and so forth. In other words, once the officer has crossed this entire journey of making sure that आपका जो ITC है उसने 1, 2, 3, 4 टिक मार्क कर दिया, अब हम लोग आ रहे हैं केवल 2A वाले डिफरेंस पे. आप अपने ऑफिसर को बोलिए कि सर आप मेरे को चिट्ठी दीजिए कि इन रिस्पेक्ट ऑफ 1, 2, 3, 4 n नंबर ऑफ इन्वॉइसेस जो 2 साल के हैं आपको मुझसे सर्टिफिकेट चाहिए. क्यों? क्योंकि law is very clear that once the genuinity of a transaction is proved, after that the ITC cannot be denied. And in fact अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था that I think रोहित और someone quoted, and it's Ecom Gill Coffee Private Limited, which was actually given by the Supreme Court, wherein they had said that कि भाई अगर आपको ITC चाहिए, now this particular judgment was in relation to the Karnataka VAT Act 2003 section 70. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर आपको ITC चाहिए तो आप जेन्युइनिटी प्रूफ करो. अब जेन्युइनिटी प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या क्या बोला, भाई आपको पता होना चाहिए कि आपके सप्लायर का नाम और पता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि किस गाड़ी में, इन केस इट्स गुड्स, ये वाले केस में गुड्स की बात है, गाड़ी का आप हमें डिटेल दो, आपके गाड़ी के जो ओनर को फ्रेट का पेमेंट अगर आपने किया है उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए, एंड बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन हुआ है आपको सब्सटैंशिएट करना है. So basically all in all they say कि if the transaction is genuine then only the ITC will apply to you. Now this was a Supreme Court case very recent in the case of VAT, but this has a lot of persuasive value also in GST, because when we talk about GST में भी अगर आप देखेंगे जो आपका section 155 है, the burden of proof is on who? Burden of proof is on the person who is taking the ITC. So on similar grounds अगर अब मैं इस सर्कुलर को इस सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के साथ कंबाइन करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज के दिन मेरा मिसमैच है एंड मनीष जी इज़ माई ऑफिसर, ही इज सेइंग कि मैडम आपने ये 17, 18, 18, 19 में गलत किया था तो आप मुझे इसका सर्टिफिकेट दे दीजिए. मैं बोलूँगी सर आप मेरे को चिट्ठी दे दीजिए. क्यों मैं चिट्ठी मांग रही हूँ? क्योंकि इन अदर वर्ड्स आपके पास ये चिट्ठी में आप सर्कुलर बोलता है कि आप एक सर्टिफिकेट लेकर आओ, लेकिन सर्टिफिकेट तक ऑफिसर कब पहुंचते हैं? जब ऑफिसर ने ऑलरेडी प्राइस सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के मदर कंडीशंस को सेटिस्फाई खुद कर लिया है. दैट मीन्स ऑफिसर मुझे बोल रहे हैं कि हाँ भाई आपका ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है. सो इन केसेस यू आर एक्चुअली टेकिंग रिकोर्स टू दिस सर्कुलर, आई वुड रिकमेंड दैट इंसिस्ट ऑन योर ऑफिसर कि सर आप मुझे राइटिंग में दे दीजिए कि इन इन्वॉइसेस के लिए आपको ये चाहिए. So that is one takeaway from this circular. And the second is that obviously we all know that this particular circular was issued in respect of 1718 and 1819. There has been a case of the Karnataka High Court in case of Wipro India Limited wherein they've said कि भाई अगर transaction genuine है तब आपके ये 18-19 तो दिया हुआ ही है, 19-20 में भी अप्लाई करेगा. And अगर आप मुझे पूछो, because the very basis of this circular is to clean up the mismatch, it should also apply to the following financial years also. So that is as far as the circular was concerned. Now
कमिंग टू द नेक्स्ट फेज ऑफ मिसमैच, हम लोग ने बात की 1/7/17 से लेके 8/9/2019। अब हम लोग आते हैं 9/10/2019 से लेके 31/12/2021। अब 9/10/2019 में ऐसा क्या हुआ? रूल 36(4) का इंसेप्शन हुआ। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 36(4) का इंसेप्शन क्यों हुआ? इट वाज बेसिकली अ रेप्लिका ऑफ सेक्शन 43A। अब 43A तो कभी नोटिफाई नहीं हुआ, नोटिफाई होने के पहले ही वो डिलीट हो गया। बट द इंटायर आइडिया वॉज कि भाई 36(4) में हम जब आपको बोल रहे हैं तो आप इस बेसिस पे क्रेडिट ले पाएंगे। अब ये सबको पता है दैट, एंड दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट ऑल ऑफ अस लर्न फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इज दैट द रूल्स आर मेड वाई टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इट्स नॉट द अदर वे राउंड। अब अगर हम लोग 36(4) देखते हैं कि ये आया कहाँ से, तो 36(4) में अगर मैं बहुत भी सोचूं कि कौन से सेक्शन का ये एक रेपिकशन है, तब शायद मैं सबसे पहले 16(1) में जाऊंगी। As even Khalid sir said, section 16 is basically the mother section of ITC. तो 16(1) में क्या बोलता है? 16(1) में आपको ये बताया गया है कि कोई भी अगर ITC है, आप उसको अपने ई क्रेडिट लेजर में ले सकते हो, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। क्लियर? अब 16(2) जो हमारा जिसमें हमारे पहले 4 कंडीशंस थे, अब 6 आ गए हैं। Now 16(2) overrides the provisions of section 16(1), तो 16(1) तो वहीं ढेर हो गया। अब हम section 16(2) में चलते हैं। अब जब आप section 16(2)(c) में जाते हैं, जहाँ पर क्या बात हुई है section 16(2)(c) में, कि अगर आपको क्रेडिट लेना है, then your supplier should have made what? The payment of tax to the government exchequer either through e-cash or e-credit ledger। अब 16(2)(c) में उन्होंने पहले, जब आपका बिफोर अमेंडमेंट was subject to the provisions of section 41 and section 43A. 43A never saw light of day, so again आप छोड़ दीजिए। अब आप section 41 में जब आप जाएंगे, that is probably the only section in the GST Act जहाँ पर you were allowed to take the credit on a provisional basis. This I'm talking about before amendment of 41, because later on even section 41 got amended. So that means what? अगर मैं 36(4) का बहुत भी ट्राई करूं तो लिंक मेरा 16(2)(c) से निकलेगा। एंड दैट मीन्स व्हाट? 16(2)(c) आपको ये बोल रहा है कि भाई सब्जेक्ट टू 36(4) हम आपको ये क्रेडिट अलाउ करेंगे, विच कैन नेवर एवर बी द केस, बिकॉज अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि रूल्स आर मेड टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर आप सेक्शन 164 ऑफ द GST एक्ट देखेंगे, वहाँ पे उन्होंने यही बात करी है। बट यू कांट हैव इट द अदर वे राउंड, कि भाई अगर आपके 36(4) में हमको उसको एक लीगल सैंक्टिटी देनी है, तो कोई आप पर्टिकुलर सेक्शन में बताइए कहाँ पे वो फॉल करेगा। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट? 36(4) का भी आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। एंड I was also before, since we were preparing for a case for a client, then we also were going through a few provisions of the Constitution of India. There I came across Article 300A, जहाँ पर उन्होंने ये बात बताई है कि भाई अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपकी है, that cannot be taken unless under the provisions of law. So एक बार मैंने 16 की conditions को satisfy कर लिया, that means what? ITC is yours as a department authority, or is it mine? Is it? It's mine. So once it is mine, and if you want to take it away from me, in that case you will have to show me under which provision of law are you demanding that particular ITC reversal. And I'm very sorry to say that even for the next period that we are discussing, that is precisely the 9th of October 2019 till the 31st of December 21, Rule 36(4) does not have a regal sanctity because of the issues that I just placed before you. सो इस चीज़ में भी, एंड अगेन नोटिस की जब हम बात करते हैं, वी रिसीव्ड अ नोटिस, आपका ITC इनएलिजिबल है अंडर 73। अरे आप 73 में डिमांड कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए आप इनएलिजिबल आप कहाँ पे बता रहे हैं मेरे को? आप 16 में इनएलिजिबल बता रहे हैं, आप 17 में इनएलिजिबल बता रहे हैं, आप 73 में तो डिमांड कर रहे हैं ऑफ एन ITC विच यू फील इज इनकरेक्ट, बट यू हैव टू टेल मी अंडर विच प्रोविजन डू यू फील दैट ITC इज इनकरेक्ट। सो
my humble submission would be, even till the period 31st of December 2021 does not really have a legal sanctity, and obviously there is a pragmatic side to practice wherein people are paying up, but that is a professional call that we take as individuals. And then comes the other one, that is with effect from 2000, जो आपका 16(2) आ गया. अब 16(2) भी इनको पता था, क्योंकि by then the legal sanctity of 36(4) was already challenged. गुजरात हाई कोर्ट में भी उसकी रिट एडमिट हो गई थी. सो देन दे थॉट कि चलिए भाई अब हम लोग इसको 16(2) से लेकर आते हैं. तो 16(2) आपका आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 2022, and in fact I think we just had this discussion at the dais that if a particular provision has been brought, I think CSR का रोहित ने opening remarks में बताया था that अगर कोई provision आज से लागू हुआ है prospectively, it is implied that such provision did not exist prior to the date of that particular implementation. तो अगर आपका 16(2) 1/1/2022 से आया है, that means this provision never existed prior to such date. So that is as far as the demand is concerned till the 31st. अब जब हम लोग 16(2) में भी आते हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या बताया है that the details have to be communicated, right? अगर आपके सप्लायर ने वन फाइल किया है and it has to be communicated to you. Now mind you friends, वहाँ पे भी कहीं पर GSTR 2B की बात उन्होंने नहीं करी है. अगर आप बहुत ध्यान से 16(2) को पढ़ेंगे, वहाँ पर also they've made a note of section 37 and not of 2B. And 2B, जैसे अब obviously we all know that sometimes the network and the law does not go hand in hand. So I was doing some research wherein I found that आपका 2B भी पोर्टल पे काफ़ी पहले आ गया था. It is only much later that 2B was actually made a part through Rule 60 of the GST rules. So कोई बड़ी बात नहीं है कि अब आपके पास 2B से मिसमैच के भी चिट्ठी आएंगे. So don't think कि भाई एक से अब आपको सारा टैक्स का पेमेंट करना है, क्योंकि 2B की भी legal sanctity was not at the time when it appeared on the portal, somewhere in the month of July 2020. It was much later, it was notified through the Rule 60. So to my mind, there is a lot that you can work on as far as these mismatch issues are concerned. But having said that, if you find that it has been a dishonest taxpayer जिन्होंने tax का payment नहीं किया है, then I don't think so that any of this should be taken recourse to. But barring this, I would say that when we talk about ITC, obviously all the mother conditions should be satisfied. We were talking about the Supreme Court judgment in the case of Ecom. It's called Ecom Gill Coffee Private Limited. So if you see really कि इस particular judgment को, how do I see this in light of the GST statute? तो section 16 subsection 2, which is actually notwithstanding what is contained anywhere else in this particular section 16, सबसे पहले उन्होंने आपको बताया कि भाई आपके पास tax invoice होने चाहिए या आपके पास ऐसा कोई भी duty paying document होना चाहिए, number 1. Secondly, you should prove that you have actually received the goods or services. Now, in case of goods, say for example, अभी सर ने e-waybill की बात कर रहे थे, तो जहाँ पे आपकी e-waybill की requirement है, e-waybill should be there. Obviously, if the truck has moved, say from one state to the other, it must have crossed the toll tax booth. If possible, you should also retain the stubs of the toll tax payment. Once the truck arrives, then it is properly weighed. If possible, take a picture of the weighment slip. These will all go to prove the genuinity of the transaction, because the Supreme Court is very clear, and you will have a lot of judgments, especially in the VAT regime, and Arun sir would be proof to it because he has an authority on that subject, कि वहाँ पर वो पहले बोल देते थे कि भाई अगर आपका transaction genuine है तो हम आपको इसका credit दे देंगे. You cannot actually penalize the receiver. And in these lines, you've also had judgments of Bright Star. You've had the Calcutta High Court judgment of LGW India. वहाँ पर उन्होंने बताया है कि भाई ठीक है, अगर आपको लग रहा है ये genuine नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ही ने तो दोनों बंदों को registration दिया है ना, तो before you come to my recipient, you rather well go to the seller to first see. अभी सर बता रहे थे कि भाई हम क्या करें, अरे
नो ऑफेंस मैन, बट अगर आपके बहुत सारे जजमेंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि जेन्युइनिटी आप प्रूव करिए, एंड ऑल्सो इफ़ यू फील दैट इट इज़ नॉट जेन्युइन एंड सम करप्शन हैज़ हैपेंड in the course of the transaction, then you please first attempt to take it from the seller and then you come to the receiver, and you will find a lot of judgments in this particular regard. So it should always be your earnest endeavor to make sure you can prove the genuinity of the transaction, and that is the reason why I told you all that you should also seek a letter in writing from the revenue officer in relation to circular number 183 जहाँ पर वो आपसे ही certificate मांग रहे हैं. So once you have proved that कि भाई आपका receive हो गया, then comes the need of payment. Now see, this is a catch-22 situation. It's now that जैसे पुलक दा was saying कि आप अपने GST पोर्टल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपके वेंडर ने किसने 3B फाइलिंग करी है और किसने GSTR 1 की फाइलिंग करी है. And again, a lot of mechanisms which have been incorporated in the statute by virtue of amendment in the section as well as the rules, that sequential filing of return, कि अगर आपने एक महीने का 1 नहीं फाइल किया है तो आप अगले महीने का 3B नहीं फाइल कर सकते हैं, vice versa, and so on and so forth. So it's now that the law is being streamlined, but I feel that for the past periods it is basically जो हम लोग लॉ की भाषा में बोलते हैं that the doctrine of impossibility, that today if Tarun is my supplier and I am a little hesitant कि भाई तरुण ने वो GST का पेमेंट किया है कि नहीं. First of all, we always follow this blanket rule that know your supplier. जैसे KYC forms बैंक लेते हैं, you know your supplier. But then there is only so much you can do. So tomorrow if I इसकी 3B filing में मैंने देखा कि इन्होंने फाइल तो कर दिया, I'm not sure whether that 3B contains the particular invoice he's raised on me. Maybe he's forgotten to put that invoice in the 3B. Maybe that is a malified intention. So anyway, जो doctrine of impossibility है, that I am in no position to find out that whether my supplier has actually made the payment of tax to the government exchequer or not. But obviously there is a lot of due diligence that you can do in this regard, and that you can fairly well do. After that, आपका and you should be a taxpayer who's been filing his or her return genuinely. So these transactions are well taken care of. And then आपका एक particular section आया था which was with effect from 1/10/2022, section 16(2)(BA, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि भाई आपकी जो ITC आ रही है that should not be restricted under section 38. एंड सेक्शन 38 में कुल मिलाकर इन्होंने 6 कंडीशंस दी हैं, जिसमें से आई जस्ट डिस्कस 1 or 2. से फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ऐसे बंदे से काम किया है हु इज़ अ न्यू GST रजिस्टर्ड पर्सन, तो भाई कुछ समय तक ही कैन नॉट पास ऑन द GST क्रेडिट टू यू. अगर ऐसा बंदा है देन दैट क्रेडिट मे बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 38. Yes. Secondly, say for example the supplier is a defaulter in payment of GST and such default continues. एक कंडीशन दिया हुआ है जहाँ पे आपके सप्लायर के 3B and 1 में डिफरेंस है and the difference is persisting beyond the prescribed time frame. So I personally feel कि अगर आपने इन conditions को satisfy कर दिया है, then more or less you are in a safe zone from your perspective and the client's perspective, but you never know as to what the department would like to say. And also ये एक जो आपका क्लॉज दिया हुआ है कि योर सप्लायर शुड हैव मेड द पेमेंट. अब मुझे ये सर, आई वुड लाइक योर व्यूज़ ऑल्सो एंड मे बी एवरी वन ऑन द डायस, दैट सपोज द सप्लायर हैज़ नॉट मेड द पेमेंट ऑफ GST एंड द डिपार्टमेंट इज डिमांडिंग दैट टैक्स फ्रॉम मी, अंडर विच सेक्शन इज द डिपार्टमेंट empowered to do so. डिमांड तो 73 या 74 में ही होगा, बट द वेरी फैक्ट दैट मेरे सप्लायर ने GST का पेमेंट नहीं किया है तो वो ITC का वो मुझसे डिमांड करेंगे. वेयर डज द डिपार्टमेंट हैव द पावर टू डू सो? क्योंकि मुझे इसमें कहीं पे भी ऐसा लॉ मिला नहीं जहाँ पर आई कुड एक्चुअली सी दैट दिस पर्टिकुलर ITC कुड बी डिमांडेड. बट नॉनदलेस दिस इज व्हाट द एंटायर C 16(2)(C में तो आपने उसका पेमेंट नहीं किया है आपके पर्टिकुलर वेंडर ने, बट द पॉइंट रिमेन्स दैट व्हाट इज़ अवेलेबल टू मी
एज एन असेसी टू फाइंड आउट कि भाई सामने वाले ने उसका पेमेंट किया है कि नहीं. And secondly, is the department right in demanding the said amount from me? So that means all in all कि अगर मेरे vendor का 3B filed है and there is no difference in between the GSTR 3B and one of my vendor, then the demand will not be made. Be not filed. Sir, आपका कोई views? Your observation is absolutely correct to my mind because section 16(2)(c जो है वहाँ पे बोला हुआ है कि tax should be paid to the government, but tax should be paid to the government. मैं तो as a recipient of that supply, I am not going to make that payment to the government. So that is to be made by the supplier only. So the law has to provide the mechanism. How do I ensure that it is paid to the government? Whether it is paid to the government or not. तो वैसा कोई mechanism law में provide नहीं किया हुआ है except that matching of उसका 3B के साथ मेरा 2B में मेरा reflect करेगा and all that. तो as Tarun said, but problem क्या है कि उसके बावजूद भी से there are cases जहाँ पे मेरे supplier का registration with retrospective effect cancel हो गया. तो मेरे supplier का अगर registration cancel हो गया with retrospective effect, तो उस situation में भी मेरे ऊपर में demand किया जा रहा है, which is not going to sustain. So the point that remains is as what Shivani said कि 16(2)(c हो चाहे कोई भी provision हो, अगर if the supplier has not paid the payment, it cannot be recovered from me from under any circumstances. Provided as Tarun said कि मेरा अगर वो matching वगैरह वो सब अगर हो गया तो matching और matching भी अगर नहीं होता है तो as you मैं जब अपना preparation कर रही थी मैं sir की book use कर रही थी because I think the GST portal does not provide you with an updated act, but if you're very lucky to know him, then he keeps sending you the updated GST Act and the particular rules, which is, I think, such a tedious task because I use R.K. Jain's Excus, but when it comes to finding out what change has been made when, the portal or the CBIC website is not providing you an updated act beyond, I think, 1/1/2022, but I think ARS does. अच्छा, वो पेड है ना, ये अनपेड सर्विस है. बनिया तो बनिया ही रहेगा ना. सो एनीवे सर, मैं आपका इसमें एक व्यू चाहूँगी बिकॉज आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 and 41(2) which was amended later on, which goes on to say that the credit of ITC availed by a registered person under 41(1) in respect of supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier shall be reversed along with applicable interest by the said person in such manner as may be prescribed. And they go on to say that where the said supplier makes the payment in respect of these supplies, the recipient can re-avail the credit and जो उसने रिवर्स किया था, एंड इंटरेस्ट आई थिंक रिमेन्स द कॉस्ट. अब सर ये जो आपका सेक्शन है 41(2) जो मैंने आपकी किताब में पढ़ा था, दिस केम इन मच लेटर. सो आई थिंक दिस केम इन इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2022. तो माई क्वेश्चन इज अगेन ब्रिंगिंग अस बैक टू द वेरी फंडामेंटल्स ऑफ लॉ, that when a new section has been brought into force or a section has been amended to a certain effect with a certain date, it means that the section was not meant to be read like that prior to such date. तो क्योंकि 41(2) पावर डिपार्टमेंट को अब दे रहा है, does it in other words means कि इसके पहले डिपार्टमेंट के पास कोई पावर ही नहीं था मुझसे टैक्स लेने का, चाहे वो सप्लायर से लेते रहे? इसमें जजमेंट्स भी इस पीरियड के पहले का यही आया था कि बिकॉज एसएससी के पास एनेबलिंग प्रोविजन नहीं है चेक करने के लिए कि पेमेंट किया है कि नहीं, आप उसके लिए उसको होल्ड नहीं कर सकते, आप सप्लायर को पकड़िए. इसके आने के बाद दे हैव नाउ द पावर, अभी जो नोटिसेज इशू हो रहे हैं जहाँ पे 3B उसने कम टैक्स का फाइल किया है 1 में डिस्क्लोज करके,
उसने सप्लायर को तो पकड़ा है, रेसिपिएंट को भी पकड़ा है कि आपका 1 में नाम है बट टैक्स नहीं दिया, आपको हम क्रेडिट नहीं देंगे। जो सेक्शन 38 में रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में डाल के उसको रेसिपिएंट को ब्लॉक कर रहा है, दैट इज डन। उसके पहले का जजमेंट्स है कि भाई सप्लायर के एंड पे इशू है, आप रेसिपिएंट को नहीं पकड़ सकते। प्लस क्या है ना, एक्चुअली ऑल दीज अमेंडमेंट्स आर कैरिड आउट जस्ट टू एनेबल टू, माने दीज आर ऑल एनेबलिंग प्रोविजंस व्हिच आर ब्रॉट इन। और उसके बाद में जो एज यू आर रेफरिंग टू सेक्शन 38, सेक्शन 38 भी इसीलिए लाया है कि थ्रू दैट सेक्शन 38 द सिस्टम विल इटसेल्फ गिव यू अ स्टेटमेंट जहाँ पे ऑल दिस वायलेशंस आर देयर, उसका अमाउंट वहाँ पे स्पेसिफाई कर देगा। टू दैट एक्सटेंट यू नीड टू रिवर्स, ऑल्दो टू व्हाट एक्सटेंट दैट वुड सर्वाइव द टेस्ट ऑफ द लॉ वो भी एक क्वेश्चनेबल वो है प्रोपोजिशन, बट स्टिल सेक्शन 38 उसलिए लाया है। वो अभी तक इनेबल शायद नहीं किया फंक्शनैलिटी पोर्टल में, बट वो करेगा तो सेक्शन 38 में जहाँ जहाँ जो लिमिटेशंस है वो सारा वहाँ से देगा। अब यू सी सेक्शन 38 का एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट में मेरा खुद का अपना ऑब्जर्वेशन ये है उस पर कि सपोज वो बोलता है कि अगर इफ द सप्लायर हैज़ नॉट मेड और पेड लेस देन व्हाट वाज पेबल, तो से फॉर एग्जांपल आई एम बाइंग फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स, वन ऑफ माई सप्लायर्स और वेंडर्स इज एक्स, तो एक्स का टोटल लायबिलिटी था 5 करोड़ रुपया और उसने 4 करोड़ 95 लाख रुपया पेमेंट किया है। डिपार्टमेंट फाउंड दैट, तो वो क्या करेगा, वो 5 लाख रुपया जो टोटल शॉर्ट पेमेंट है तो वो किसके अकाउंट में है, इट इज नॉट आइडेंटिफाइड। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, उसके जितने भी कस्टमर्स हैं इंक्लूडिंग मी, वो सबको बोल देगा कि तुम मत इसका ये करो। इसका मतलब क्या हुआ, 5 लाख रुपए का शॉर्ट पेमेंट के लिए 4 करोड़ 95 लाख का आईटीसी गायब हो गया, और 4 करोड़ 95 का आईटीसी अगर गायब हो गया पूरे सिस्टम से तो उतना फिर कैश पेमेंट। तो मैं तो कई बार बोलता हूँ कि सरकार ये डेटा तो निकाले कि आज के दिन में एज ऑन डेट या एवरी ईयर एंड में कितना टोटल आईटीसी ब्लॉक कर रखा है उन्होंने अनजस्टिफाइडली, वी ऑल नो किस तरह से ब्लॉक करता है, कितना आईटीसी कितने लोगों का रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल कर दिया है, कितने लोगों का ये 38 और इस मैकेनिज्म के थ्रू कर दिया, ऐसे करके मैंने इसी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश वो सिस्टम से बाहर कर दिए और इसलिए वो कैश पेमेंट करना पड़ रहा है। एंड देन दे आर कमिंग आउट विद दोज फिगर्स कि 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 70 लाख रुपए कलेक्शन। तो ये है, these limitations are there, but nevertheless. So sir, all in all, coming back to 41(2) and the fact that my vendor has not paid, can we take this clear that क्योंकि 41(2) आपका आया है 1/10/22 से and it is prospective in nature, accordingly अगर मेरे वेंडर ने पेमेंट नहीं किया है, इस टैक्स का भुगतान करने का आपके पास मेरे से माने एज अ रेसिपिएंट कोई प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं है। So that clear we can simply take. And also I think I was reading an article, शायद आप ही का था या one of you senior thing, जहाँ पे I think सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है KK इंडस्ट्रीज़ के केस में, वैट के केस में, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई आप किसी सेलर के फॉल्ट के कारण बायर को नहीं कर सकते। एंड देन यू ऑल्सो हैव डिसीजंस लाइक DY बियाथल बाय द मद्रास हाई कोर्ट, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई आप सेलर को जाके पहले देखिए तब इनसे लीजिए। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इफ यू हैव अ गुड रीडिंग ऑफ दिस वेरी डायनामिक लॉ, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज यू कैन सेव योर सेल्फ एंड द assessee, provided that you have that heart of a lion to go in for litigation. With these words, thank you so much for giving me a patient listening. Thank you sir, Arun sir, Rohit, Tarun, Manish ji, Nitesh sir, and I look forward to seeing you on the other side soon. Thank you so much and good night. Yes. अगर किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो यू मे प्लीज रेज, चूंकि टाइम बहुत हो गया तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन ही ले पाएंगे प्लीज, एंड अदर्स यू मे प्लीज बी देयर फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, वी विल कंक्लूड। ठीक है, हाँ प्लीज। सर जो वो GST पेमेंट कर रहे हैं ड्यूटी पे, तो वो काफ़ी बार हो रहा है आइस गेट पे तो आ रहा है, 2B में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग रिक्वेस्ट डेलीगेट्स टू प्लीज बी देयर फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। अभी डिपार्टमेंट ने बोला कि वहाँ पे फेच BOE का ऑप्शन आ गया, आप वो क्लिक कीजिए तो आपका 2B में आ जाएगा। बट अगर वो करने के बाद भी अगर कोई हमारा नहीं आया है GST 2B में, तो क्या उसका इनपुट हम लोग उस मंथ में क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? I'll just answer this because I'm facing this issue. आप इम्पोर्टेड बिल ऑफ एंट्री और आपने जो टैक्स पेमेंट किया है वो दिखाइए, आपको डिपार्टमेंट दे रहा है क्रेडिट, दे देगा, एकदम दे रहा है क्रेडिट। मतलब जिस मंथ में हमने किया उसी मंथ में आप क्लेम क्रेडिट वेट नहीं करें 2B में? बिल्कुल नहीं वेट करना है, ये आप सेल्फ क्रेडिट ले सकते हैं और डिपार्टमेंट दे भी रहा है। यू जस्ट सबमिट द बिल ऑफ एंट्री एंड द टैक्स पेमेंट। थैंक यू। There is a particular site जहाँ पे you can see
the EGM has been actually filed. हाँ वो हाँ, तो अगर आपका EGM भी file status है, we take that screenshot, वहाँ पे हाँ जो दिखता है तब I don't see any reason why they'll not. हाँ but I don't think so it's an issue because कई बार आपके 2B में आया भी नहीं है, कुछ पीरियड के लिए आया है, कुछ पीरियड के लिए नहीं आया है, just because it's not available. बड़े-बड़े अमाउंट्स का हो रहा है ऐसे, मतलब बड़े-बड़े अमाउंट्स का, हाँ हाँ थैंक यू। सर अरुण जी, एक बंदे ने पूछा था वो आपका जो एक्सपोर्ट का रिस्की केस है ना, उसके बारे में बताया। आपने तो एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी किया था ना, तो ये कस्टम का केस है, ये स्टेट जुरिस्डिक्शन का केस नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ, दिल्ली में DGARM डिपार्टमेंट है, DGARM डिपार्टमेंट, उसको आप लिखिए कि आपका इतना दिन से मैटर चल रहा है, इंस्पेक्शन तो होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, बट दे विल हेल्प यू स्पीड अप द एंटायर थिंग। नो, इंस्पेक्शन हैज बीन डन, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। और अगर उसका ऑर्डर उन्होंने सबमिट किया है, वो भी आप DGARM दिल्ली से बात कीजिए, दे विल हेल्प यू इन एवरी मैनर पॉसिबल। मेरा एक केस हुआ था क्लाइंट का, जुरिस्डिक्शन स्टेट का था, स्टेट कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज हमने एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी किया तो कस्टम्स के पास चला गया। करेक्ट। यहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन का यहाँ पे हमको बोला गया कि हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी। करेक्ट। मैं वेट करता रहा, कोई एक्शन नहीं हुआ, मेरे को रिफंड नहीं मिला। आई वेंट टू दिल्ली DGARM, आई गेव देम माई सबमिशन, विद इन 7 days मेरा रिस्की क्लाइंट वाला से हट गया था एंड आई स्टार्टेड गेटिंग। सो आपका एक सिंगल सोर्स ऑफ रिलीफ है DGARM दिल्ली। Delhi only, no? Delhi. All right. Thank you. And if you want, I will connect you with the relevant officer. Sure, sure. Thank you. So thank you so much, Rohit, So, Vani, Tarun, and after all, Views Exchange and Central Kolkata Chartered Accountants Study Circle. We had a very great session. Thank you all. Please carry this with her thunderous applause. Please be seated for 2 minutes. I request Mr. Khator ji to please present a memento to Mr. Arun ji. I think एक बार जोरदार ताली चेयरमैन के लिए, चेयरमैन सर, for conducting the session so well. Now I request Mr. Bhagat Singh Verma to present a memento to Tarun ji. Now I request Sitaram ji to present memento to Shivani ji. Now I request Santosh ji to please present memento to Rohit ji. Friends, thank you everyone for being present since the start of the session. Big round of applause for all of you. Thank you. Thank you.